कुडचडेचे लाडके आमदार भोवमानेस्त निलेश बाब काब्राल हांगा पावल्यात आणि तसोच आमचो मानाचो सोयरो गेस्ट ऑफ ऑनर गोंय राज्याचो गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो सेक्रेटरी वनेस्त रोहन गांवस देसाय होय हांगा ओदोळच्यान हजर आसात. रावला केन्ना काय लोकूय रावल्यात आतुरतेन आणि आमी आतां सुरवात करतात काही क्षणात. जशें तुमकां पळयलां एंट्रन्स व्हडलो आमी लकी बॉयसान हांगा माटू साजोवन दवरला एंट्रन्साक. थंय एंट्रन्साच्यान आमचे जे मानेस्त आसा तांची एंट्री जातली. एकच सांगपाक सोदतां जसो उक्तावण सोहळो माचयेचेर सगळे मानेस्त येतले तांकां आमी वेलकम करतले. ताच्या नंतर खूब गोश्टी घडपा आसा ग्रावंडार. सो आतुरतेन वाट पळयात कोण वचनाकात. हें मारला तो फक्त एक ट्रेलर हें सद्या चालू आसा तो एक फक्त ट्रेलर. खूब कितें जावपाचें आसा. आमी सज्ज आसात कुडचडेम प्रीमियर लीग सीझन 2.0 बाय लकी बॉयज क्रिकेट क्लब. तशेंच ग्रावंडार जितले जाण आसात एक्सेप्ट लकी बॉयसाचे मेंबर जितले जाण ग्रावंडार आसात ताणें मातशें भायर सरचें तुमकां रिक्वेस्ट करता. जितले जाण जे कोण आमकां दर्शक आसात सपोर्टर्स आसात तांकां मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता की मातशे भायर सरात. कारण जो उक्तावण सोहळो ठरयल्लो आसा थंय कितें तरी डिस्टर्बन्स जावपाक शकता इतल्याच खातीर. सो आमचे लकी बॉयसाचे मेंबर आसात तांकां रिक्वेस्ट करता आमदार हांगा पावता आनी पाविल्लो आसा. आमचे लकी बॉयसाचे मेंबर आदित्य आनी साईश हे येवकार करतात निलेश बाब कावराला. तशेंच तुमकां सांगपाक सोदता की चेअरपर्सन ऑफ कुडचडेम काकोरा म्युनिसिपल कावन्सील तसोच चेअरमॅन ऑफ कुडचडेम प्रिमियर लीग सीझन 2.0 प्रदीप बाब नायक आमच्या बरोबर आसा आनी सराक तसोच रोहन बाबाक मानान तांणी हांगा सन्मानान वेदिकेचेर हाडून बसका दिवची. आमचे मानेस्त आयिल्ले आसात येतात हळू आणि लोकय आतुरतेन वाट पळयतात की केन्ना काय उक्तावण सोहळो सुरवात जातलो. लोकांक वाट आसा इनॉग्रल सेरेमनी जातली. आणि जशें तुमकां पळयलें आसा की जे आमचे फोटोग्राफर्स आसा प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ते तांच्या बरोबर येता. कारण जो क्षण आसा जो मोमेंट आसा तो टिपपाक जाय. सगळे मोमेंट्स आमकां इम्पॉर्टंट. ह्या टुर्नामेंटाक खुबशे मोमेंट्स घडटले खुबशे मोमेंट्स जातले. तातूंत तुमचोय आमकां हातभार आसतलो सगळ्या कुडचडकारांचो जितलो आमकां हातभार आसा निलेश काब्राल सराचो तसोच रोहन बाब गांवस देसायाचो आनी आमकां जितले जाण पार्टनर्स लाभिल्ले आसा. तुमकां एकच सांगपाक सोदता की आमी स्पॉन्सर्स अशे न्ही आमी मनांतल्यान चिंतलां की जितले जाणांनी आमकां बारीक जावं कितें व्हडलें जावं स्पॉन्सरशीप दिल्ली आसा ते सगळे कुडचडेम प्रिमियर लीगाचे पार्टनर्स. हो टुर्नामेंट आमचोय तितलोय तांचोच. येवकार करता सराक जोरान ताळ्यांनी येवकार करया. रोहन बाब गांवस देसाय हांकांय बी. सर चेअरमॅन आसा 2.0 प्रदीप सर जो सदांच आमचे बरोबर आसा. सर तुमी बसका घेयात. तशेंच आमचे जे ओनर्स हांणी आमकां सदांच पाठबळ दिल्लें आसा फोर्स दिल्लो आसा तांकां सगळ्यांक हांव आपयतां. यश डेव्हलपर्साचो यश प्रभुदेसाय माचयेर येवन बसका घेवची. अल ब्रागांजा ऑफ EB ओलंपियन्स सरकार 37चो निखिल शिरोडकर. मातोश्री वॉरियर्साचो हर्षद बाब गांवस देसाय. काकोडा बॉयसाचो बबलू सावंत. अग्नी एव्हेंजर्साचो विठ्ठलदास भट. MCC मादेगाळ क्रिकेट क्लबाचो प्रज्योत नायक आनी ओव्हरलॉक्टाचो किरण सावंत देसाय हांणी येवन माचयेर आपली बसका घेवची. सगळे मानेस बशिल्ले आसा रेडी आसा आतुरतेन वाट पळयतात पूण कांय गजाली करपाच्यो आसता त्यो करपाक जाय. लायट येतली खुबशें कितें जावपाचें आसा. ताच्या पयलीं सांगपाक सोदता की जशें आमी सांगलें की हो आमचो जवळपास 8वो एडिशन ऑफिशियली 8वो एडिशन पूण हाज्या पयलीं आमी टुर्नामेंट घडयल्ले आसा ते रिकॉर्डान ना. सो सेकंड एडिशन ऑफ फ्लडलायट टुर्नामेंट हाज्या पयलीं 2 वर्सां फाटीं घडयल्लो. निलेश काब्राल सरान आमकां फूल तेंको दिल्लो तेन्ना आमी मोठ्या दबाज्यान घडयलो आनी ह्याय खेपे तांचो हात आसा. तसोच रोहनानी आमकां तितलोच पाठबळ दिल्लें आसा आनी ओनर्स. पण प्रदीप सर आमचे बरोबर म्हाका दिसता शेगीत ऑलमोस्ट 20 वर्सां संलग्न आसात आमचे बरोबर आसात आनी सीझन 2.0 कुडचडेम प्रिमियर लीग हाचो चेअरमॅन
प्रदीप नायक जो चेअरपर्सन आसा कुर्चोरेम काकोडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो हांणी सगळ्यांक येवकार करचो. Namaskar and good evening. A warm welcome for all of you all who have gathered here for this 3 nights tennis ball cricket tournament organized by Lucky Boys Pantemal. या टुर्नामेंटात आमचे भितर आसात कुडचड्याचे लोकप्रिय आमदार श्री निलेश काब्राल सर, गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सेक्रेटरी श्री रोहन गांवस देसाई, बाकीचे सगळे ओनर्स ऑफ द टीम्स, आमच्या क्लबाचे सगळे वांगडी वावरुपी हांगा जमिल्ले सगळे प्रेक्षक, सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे सगळ्याचे स्वागत करता ह्या कुर्चोरेम प्रिमियम लीग 2.0 हो टुर्नामेंट जो आयच्यान 3 राती आमचे भितर आसतलो आनी हांगा क्रिकेट एक्स्ट्रावॅगन्जा आमकां पळोवपाक मेळटलो. हो टुर्नामेंट स्टार्ट करपा पयलीं आमकां जे लोकांनी हांगा सपोर्ट केला, जे स्पॉन्सर आसा, मेन स्पॉन्सर आसा आमचो सर निलेश काब्राल, मागीर रोहन गांवस देसाय आसा, बाकीचे खूब जाणां आसा इंडिविज्युअल तांच्यांनी बारीक किंवा कितें आसनी पूण आमकां स्पॉन्सर केल्ले आसा, तांकां हांव ह्या वेळार सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या वेळार तुमी हो बरो क्रिकेट टुर्नामेंट आमकां जो हरीशान जे एक डिफरंट कितें तरी करपाचें येवजिलां ताजे खातीर हरीशाक सुद्दां हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताजी एक डिफरंट ताजो प्लॅन आसा हांगा कितें करपाचो तो आमकां सगळ्या कुडचडकारांक पळोवपाक मेळटलो इतलें सांगता आनी तुमी सगळ्यांचें परतून स्वागत करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सर मातशें करेक्ट करपाक सोदता, हो प्लॅन हरीशाचो आनी हो प्लॅन लकी बॉयसाचो. विदाउट लकी बॉयज हरीश इज नथींग. सो जितले म्हगेले वांगडी आसात तांणी खूब हातभार केल्लो आसा, तांणी खुबशे ब्रेन स्टॉर्मिंग जाल्लें आसा आमचें, आनी सगळ्यांनी मेळून हो टुर्नामेंट असो करचो अशें म्हणून चिंतिल्लें आसा. सो म्हज्या जे लकी बॉयज आसा तांकां पयलीं सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता ताळी मारच्यो. फुडले सुवातेर आमचे चेअरपर्सन आसात, तांणी उलयल्ले आसा, येवकार केल्लो आसात. हांव मागतां आशिश नायक बोरकार हाणें निलेश काब्राल सराक एक आमचो टोकन दिवचो. आमी चिंतलां की फुलां सगळे कडेन सदांच दिता, सो आमी डिफरंट कितें करया. सो ह्या खेपे जो टोकन ऑफ लव आसतलो वो तुमच्या ऑफिसान नाल्यार तुमच्या घरान उरतलो. सो तो रोवपाचो आनी तो वाडोवपाचें काम तुमचें. फुडले सुवातेर रोहन गांवस देसाय आमचो गेस्ट ऑफ ऑनर, ताका दिवपाक लायता हांव आदित्य नायक. तसोच प्रदीप सराक टोकन ऑफ लव दिवपाक हांव मागतां सर्वेश नायक बोरकार हाका. जशें आमच्या मानेस्ताक दिल्लें आसा, हांव रिक्वेस्ट करतां आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर रोहन बाब गांवस देसाय हांणी ह्या वेळार संबोधचें. सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. आयज लकी बॉयसान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या टुर्नामेंटाच्या उक्तावण सोहळ्याक आमी आयज सगळे हाजीर आसा. आयज आमच्या मदीं आमचे कुडचडेचे लाडके आमदार निलेश काब्राल, तशेंच आमचे चेअरपर्सन श्री प्रदीप नायक, तशेंच सगळे टीम ओनर्स हर्षद गांवस, बुबलू सावंत, यश, ऑल प्रज्योत नायक, किरण, निखिल, सगळे विठ्ठलदास बाब, हे सगळे टीम ओनर्स हाजीर आसा. आमचे पत्रकार भाऊय हांगा आसा, तशेंच एम्पायर आनी सगळे प्रेक्षक, सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. आयज लकी बॉयजान हो टुर्नामेंट घडोवन हाडला 2.0 फ्लडलायट टुर्नामेंट. शेगीत दुसरें वर्स हे मोठ्या दबाज्यान जशें हरीशान सांगला तसो हो टुर्नामेंट आयज तुमकां पळोवपाक मेळटलो. हांव बारीकशी गोश्ट सांगपाक सोदतां. लकी बॉयसाचो फावंडर मेंबर म्हणून आमी 20 वर्सां पयलीं आमी टुर्नामेंट करताले. हांव मुद्दमून याद करपाक सोदता ह्या माचयेर रावन जेन्ना श्याम सतर्डेकर फर्स्ट आमदार आशिल्लो 2007 तेन्ना साकून आमी हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा. प्रदीप सर जाणा आसतलो की प्रदीप सरा कडल्यान आमी त्या टायमाचेर 1000-2000 रुपया डोनेशन व्हरताले.
तेजे नंतर आमचे आमदार आयले, आमदारांनी आमकां कंटिन्युअस तेन्नाच्यान सपोर्ट करताले. पूण आतां आमी हो फ्लडलायट टुर्नामेंट घडोवन हाडटा. फाटलीं 20 वर्सां जालीं. हरीशान 7 वर्सांचो हिशोब दिलो, पूण हांव जाणा फाटलीं 15 वर्सां जालीं हो लकी बॉयसाचो टुर्नामेंट ह्या ग्रावंडाचेर आमी घडोवन हाडटात. सगळ्या लकी बॉयसाच्या मेंबराक हांव उनुनीत परबी दिता की तेंच्यांनी हो ही जी प्रथा आसा जी टुर्नामेंट घडोवन हाडपाची आनी ह्या कुडचड्या वाठारांतल्या सगळ्या प्लेयरांक एक प्लॅटफॉर्म दिवपाची, भायले जे गोंयचे प्लेयर्स आसा तेंच्या बरोबर खेळपाक ती खरोखर तोखणाय करपाची अशी आसा. आनी जो लेवल वर्सान वर्स हो लकी बॉयसान जो वाडोवन धरला, जो प्रत्येक वर्साक एक बरे मोठे प्रमाणान जे प्लेयर्स हांगा येवन कुडचड्यार खेळटात, ताजे खातीर हांव तांकां स्पेशल शाबासकी दिवपाक सोदता. जे आमचे सगळे वॉलंटियर जे क्लब मेंबर आसा तांकां सगळ्याक बरी शाबासकी दिवपाक सोदता. आनी देवा कडेन मागता की हो टुर्नामेंट बरे भशेन कंप्लीट जाल्यार पुरो आनी सगळ्याक अभिनंदन म्हणटा आनी म्हाका हांगा आपयलो हेच्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं रोहन. एक्चुअली सांगपाचें आशिल्लें म्हाका, पूण म्हाका खबर आशिल्लें तूं उलयतलो म्हणून. कित्याक की 20 वर्सां माय जवळ 22-23 वर्सां जेन्ना रोहन आमी हांगा बरोबर खेळटाले आनी हो ग्रावंड म्हाका दिसता ताज्या काळजांनी आसा तितलो. आनी कित्याक ते एक स्थान आसता, आपल्या क्रिकेटीची आवड आसा, आपूण ह्या ग्रावंडार खेळा कितें तरी मोग आसता काळजान. आनी लकी बॉयसाचो आपूण फावंडर मेंबर, डेफिनेटली ही इज अ फावंडर मेंबर. आनी आज आमकां लकी बॉयसाक उमेद दिसता आनी मान वाडटा आमचो लकी बॉयसाचो की आज आमचो फावंडर मेंबर गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचो सेक्रेटरी आसा. हाज्या व्हडली गजाल आमच्या खातीर वराची आसपाक शकना. मोठी बाल. आनी म्हाका दिसता रोहनान आमकां तितलोच तेंको दिल्लो आसा, कारण ताका दिसता खंय तरी आपलो क्लब खंय तरी आमच्या कुडचडकारांक साथ दिवपाचो हे ताच्या मनान आसा. त्या खातीर तो आमच्या बरोबर अलायन जाल्लो आसा. हांव मागता निलेश काब्राल सराक ह्या वेळार जो आमचो आमदार आसा, तशेंच तुमकां खबर आसा की हाजे पयलीं 2 वर्सां पयलीं 1.0 जाल्लो कुर्चोरेम प्रिमियर लीग, तेन्ना फूल स्पॉन्सर आमकां निलेश काब्राल सरान केल्लें. इतलेंच म्हणपाक सोदना की आतां डेव्हलपमेंट जो कुडचड्यार जाता, जावं तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं ना जाल्यार बाकीचे डेव्हलपमेंट म्युनिसिपालिटी बिल्डींग जावं ना जाल्यार सिवरेज प्रोजेक्ट जावं, कितले साबार कामां जातात. तशेंच प्रत्येक क्लब जिवीत दवरपाक कुडचड्यार म्हाका दिसता निलेश काब्राल सराचो तितलोच हात आसात. जावं तो क्रिकेट, जावं तो फुटबॉल, जावं तो कल्चरल कला क्षेत्रांत. कित्याक जेन्ना फंड्स येना, जेन्ना सपोर्ट येना, जेन्ना पाठबळ येना, जाल्यार खंयचोच क्लब जितो जावपाक शकना. आनी म्हाका दिसता हाजे खातीर निलेश काब्राल सराक आमी जोरान ताळी दिवया. कित्याक ताणें जर तर आमकां सांगलां तुमी फुडें वचा म्हणून, जाल्यार हें घडना आशिल्लें. सो हांव रिक्वेस्ट करता निलेश काब्राल सराक ह्या वेळार तुमी सगळ्यांक संबोधचें. जमलेल्याक सगळ्यांक अ व्हेरी गुड इवनिंग. आयच्या लकी बॉयज ह्या क्लबान हो टुर्नामेंट घडोवन हाडला आनी हे टुर्नामेंटाक आमचे मदें आमचो ऑर्गनायझींग चेअरमॅन आनी CCMCचो चेअरपर्सन प्रदीप बाब नायक, तसोच हे फंक्शनाचो गेस्ट ऑफ ऑनर आनी GCAचो सेक्रेटरी, गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचो सेक्रेटरी रोहन बाब देसाय, तशेंच ह्या टिमीचे सगळे ओनर बबलू बाब, तसो हर्षद बाब, तसोच आमचो देसाय बाब, तसोच आमचो अल बाब, आमचो प्रज्योत बाब, आमचो निखिल बाब, तशेंच आमचो किरण बाब, आमचो भट बाब आनी मुखार आसलेले सगळे लकी बॉयजाचे टीम मेंबर्स, तशेंच जमलेले सगळे प्रेक्षक, तशेंच सगळे पार्टिसिपेंट जे आयच्यान 3 दीस हांगा खेळतले, तशेंच म्हजे मोगाळ प्रेस भाव आनी भयणानो. म्हाका दिसता खूब वर्सां जरी तरी म्हजी एक इच्छा आशिल्ली की भुरगीं हांगा खेळपाक, आनी खूब वर्सां पयलीं लकी बॉयज म्हाका दिसता अजून उगडा आसा ते म्हणजे तेन्ना पंटेमळाचे चड आशिल्ले, आतां कार्यामळीचे चड जाल्ले आसा. पूण दोनूय वाठाराचे भुरगे एकठांय जावन हो टुर्नामेंट केल्लो आनी करता तेन्ना बारीक टुर्नामेंट केल्लो आनी तेन्ना आज हे स्टेजीचेर पावपाक म्हाका दिसता एफर्ट्स ऑफ एवरीबडी हे आज लास्ट टायम म्हाका दिसता जेन्ना फ्लड लायट आमकां करपाचो एक हेतू येयलो की कितें तरी प्रॉब्लम जालो म्हूण आमी डिसायड केलें की रातचें करपाचें आनी तेन्ना हो डिसिजन घेतलो तो आतां हो सेकंड टायम रातचें म्हणजे हेका एक्सपेन्सूय चड जाता. पूण आतां कितें आसा की एक्सपेन्स जालें म्हूण जायना, पूण ऑर्गनायझींग जे एक टॅलंट जे आसा म्हाका दिसता आख्खे लकी बॉयजा कडेन आसा. फुडें वचपाचें टॅलंट म्हणजे तितून भितर क्रिएट करपाचें टॅलंट जें आसा क्रिकेटी भितर तेणी जेन्ना लोकांनी दिल्लें आसा. प्रेक्षकूय रातचें म्हाका दिसता चड जाता. सो मातशें
म्हाका दिसता आयज मातसो लेट जालो चालू करपाक. हांव येयल्लो 6:30 5:30 पूण मे बी फाल्यांच्यान सारको टायमार चालू जातलो. पूण एक फ्लड लायट कॉन्सेप्ट हांगा करपाचो जे संकल्पना लकी बॉयजान दवरली गेल्या वर्सा म्हणजे 2 वर्सां पयलीं, तेन्ना एकूच हेतू आशिल्लो की लोकांक हांगा पार्टिसिपेट जावपाक जाय, भुरग्यांक हाडले पार्टिसिपेट जावपाक जाय. तेन्ना म्हाका दिसता फ्लड लायट करपाचें कारण भायर टुर्नामेंटाचे भुरगे जे प्रोफेशनल टीम आशिल्ले ते प्रोफेशनल खंय तरी दिसाचे खेळटाले आनी तेन्ना तांकां थंय हांगा येवपाक मेळनाशिल्लें. म्हणजे भायले प्लेयर आमचे कुचड्या वयले प्लेयर आशिल्लेच, पूण भायले प्लेयर जे प्रोफेशनल आशिल्ले तो जे कॉन्सेप्ट तेणी घातला तितून भितर येवंक पावनाशिल्ले म्हूण सांजची केल्ली. पूण म्हाका दिसता आतां ते सेकंड इयर हो सांजचो करता आनी फुडें ते सांजचे करीत रावतले. म्हाका खात्री आसा की लकी बॉयज ग्रूप जो आसा हो टुर्नामेंट बरे भशेन घडोवन हाडटा आनी हांव ताका शाबासकी दिता. तशेंच आयचो प्रदीप बाब ऑर्गनायझींग चेअरमॅन आसा आनी फूल स्पॉन्सर रोहन बाब देसाय जो आज हे पाटी लास्ट टायम हांवें केल्लो, हे पाटी फूल तो करपाचो आसा. हेजे फुडें तोच करतलो अशें ताणें सांगलां. बरे गोश्ट आसा कित्याक आज खुबशे भुरगे फुडें येवपाक जाय आनी अशें स्पॉन्सर करपाक जाय. रोहन बाब जसो सांगतालो पळय की अशें करून फुडें जी गेम जी आसा वेदर आज आमी गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब होय फुटबॉल क्लबा भितर आमी स्पॉन्सर करता, जी गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाचो तेंचे प्रोफेशनल टिमीन तेजे सब ज्युनियर टिमी 3-4 टिमी खेळटा. सो ताका आमी स्पॉन्सर करता. अशें करून खुबशे गोश्टी आसा की आमी स्पॉन्सर करता आनी तितून भितर सगळ्यांनी जर सपोर्ट केलो जाल्यार म्हाका दिसता कुडचड्यार भुरग्यांक आनी शायन जावपाक मेळटलें. आनी तेजे खातीर आज फाल्यां आमचे परवान वेट लिफ्टींग आसा, मागीर पावर लिफ्टींग आसा. अशे स्पोर्ट्स कुडचड्यार वाडचे हेजे खातीर कोण कोण स्पॉन्सर करता, वेगळे वेगळे लोक स्पॉन्सर करता, म्हाकाय बरें दिसता. तितलो खर्च आमकां कमी जाता. नाल्यार पयलीं हांवूच करतालो हें आनी नाका, पूण आतां खूब जाण तयार जाता. सगळ्यांनी तयार जावपाक जाय कित्याक लास्टा आमचे भुरगे जे आसा हे फुडें वचपाक जाय. आमचे भुरगे जे आसा जे पावंडेचेर फुडें 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 वचपाक जाय. पूण ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. सो तेन्ना हांव आज सगळ्याचे जे आमचे लकी बॉयज आसा अशेंच ऑर्गनायझींग करीत रावचे आनी एवरी इयर तुमी हो टुर्नामेंट आतां रोहन बाबान सांगले ते भाशेन की स्पॉन्सर हांव आसतलो, सो तुमी सदांच ते करचे. म्हजो तेको आसतलोच नो डावट, बाकीच्या प्रदीप बाबाचो सगळ्यांचो तेको आसतलो, ते डावट ना. पूण एक गोश्ट आसा की जेन्ना खंयचोच भाग घेवपाचो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता फुडें वयता तेन्ना तेको मेळता तेन्ना भुरगे तयार जाता. सो आज तुमकां हे 3 दिसाचे टीम जे इन्चार्ज म्हणजे आमचे मॅनेजमेंट म्हणू शकता आमचे वयर आसा आनी प्लेयर ओनर वयर आसा आनी प्लेयर सकल आसा तांकां हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. प्ले विथ द स्पोर्ट्समॅनशिप स्पिरीट. मे यू गिव युअर बेस्ट टू द गेम अँड सी दॅट यू परफॉर्म वेल. अल्टिमेटली स्पोर्ट्स इज समथिंग दॅट एवरी टायम वी कॅनॉट विन, but if we give our efforts and if we put our efforts, I'm sure the best team and the best player will make for this team. And last year I was there for this wonderful closing ceremony. It was like a wonderful experience for me also. And I hope that this year will be more wonderful experience in the closing ceremony. I wish the best team wins and wishing you all successful sports career. See that you keep your physique fit. आमची भाशेन पोटा हाडनाका. So physique fit. And see that you play all the time and keep you physically fit so that you can perform in different levels. आणि त्याच्या खातीर परतून एकदा लकी बॉयजांक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आणि ऑल द टीम्स हू आर हियर, द ओनर्स हू आर हियर, विशिंग देम ऑल द बेस्ट टू सी दॅट द ओनर्स स्टे टील द एंड ऑफ द टीम. नाल्यार लास्टा पयले थोडे ओनर मदींच वयताले आनी मागीर च्या बी पिवन नाश्ता बी करून येताले. सो तेंच्या वांगडा रावपाक जाय हें सांगून परतून एकदा देव बरें करून म्हणटा. थँक्यू, ऑल द बेस्ट. तुम्ही म्हणले फोटो वाडयनाका म्हणल्यार ऑल आसपाक लागलो. पण सरान म्हणलें त्या प्रमाणे फक्त हांव इतलें सांगपाक सोदता सर, तुमी दोगांय लागीं आसात, तुमी दोगांय ठरया आमकां कोण दितलो, कित्याक आमकां बुचकळ्यान घालनाकात. सो ते तुमी ठरयात कित्याक लास्टाक सगळ्यांक दिवपाक पडटलें आमकां. तो म्हाका दिसता आमचे सगळे मानेस्त हांगा आसा, उलोवणी जाल्ली आसा आनी बरे लायट मुमेंट्स हांगा चालू आसात. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे क्लबाचे एक मेंबर ताणें हो जो टोकन ऑफ लव आसा हांव जसो सांगता त्या प्रमाणे तांच्या हातान दिवपाचो प्रबल वस्त हांव रिक्वेस्ट करता तुका. हो टोकन ऑफ लव जो आसा तो निलेश काब्राल सराच्या हातान दिवचो, कारण तांकां जो ओनर्स जे आसात तांकां दिवपाचो हो ओनर्साक दिवपाचो. हांव रिक्वेस्ट ओनर्साक दिवपाचो सर, हो सरान ओनर्साक दिवपाक रिक्वेस्ट करता. हांव मागता ऑल भुरग्यांचा मातसो वच आनी तुजो टोकन ऑफ लव घे. सौका
तशेंच फुडले सुवातेर निखिल शिरोडकर हाका रिक्वेस्ट करता ताणें टोकन ऑफ लव दिवचो. खाजा यो आनी सरा कडेन दी. जियान खाजा आमचो मेंबर. निखिल बाब शिरोडकर सरकार 37. तसोच आदिलाक रिक्वेस्ट करता फुडलो टोकन ऑफ लव दिवचो सरा कडेन. आनी हांव मागता ओनर किरण सावंत देसाय हांणी हो भोवमान आसा तो स्विकारचो. तसोच हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या क्लबाचो आनी एक वांगडी चिराग हाणें मुखार येवचें आनी सरा कडेन दिवचो हो टोकन ऑफ लव. भोवमान हो आतां बाब यश प्रभुदेसाय हाका यशान स्विकारचो. फुडली जी 4 टोकन ऑफ लव आसा मोमेंटोस ती रोहन बाब गांवस देसाय दितलो. हांव रिक्वेस्ट करता प्रज्योत हाणें रोहन देसाय कडेन ही टोकन ऑफ लव दिवचें. आनी हांव मागता रोहनाक हर्षद गांवस देसाय मातोश्री वॉरियर्स हाका हो टोकन ऑफ लव दिवचो. प्रज्योत आयिल्लो आसा. तशेंच फुडले सुवातेर शिवम पांडे आमचो क्लबाचो इम्पॉर्टंट मेंबर हर्षद बाब गांवस देसायाक दितलो रोहन. तसोच विठ्ठलदास भट हाणें बी आपलो भोवमान स्विकारचो. हांव रिक्वेस्ट करता अमे मातसो मुखार यो. आनी बबलूक हांव पयलीं सगळ्यांत पयलीं सिद्धेशाक रिक्वेस्ट करता हो जो टोकन ऑफ लव आसा तो रोहना कडेन दिवचो आनी हो टोकन ऑफ लव वतलो बबलूक जो काकोडा बॉयसाचो ओनर आसा. सगळ्या ओनराचो भोवमान जाल्लो आसा. लोक आतुरतेन वाट पळयतात. हांव जशें ओनर्साक सांगिल्लें त्या प्रमाणे ओनर्सान आपल्याले वचपाचें माचे वयल्यान देंवचें आनी आपल्यालें पोजिशन घेवचें. सो आतां ओनर्स वतले आनी आपल्याचे पोजिशन्स घेतले. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जो आतां इनॉग्रल सेरेमनी जातलो तो टोटल आगळो वेगळो जातलो. फर्स्ट टायम इट इज ट्रायड इन गोवा. So we'll witness something different. You will witness something different, which is the idea and the brainstorm of Lucky Boys. So let's see how it goes. Everyone is waiting anxiously, and so are all our guests. So are all our patrons and our well-wishers. At our time आयिल्लो आसा unveiling ceremony, so unveiling of the trophy, the champions trophy, which is out in the middle, which is unsighted. You will sight it very soon. Apart from Lucky Boys and press, nobody should enter. Please take a note. So I request करता आमच्या आमदाराक रोहन बाब गांवस देसाय तसोच प्रदीप सर आमी माचे वयल्यान देवया. सो आमचे जे मुखेल सोयरे मानाचे सोयरे आनी आमचे प्रदीप सर जे चेअरमॅन आसा CPL 2.0चे तुमकां दिसता वयर ड्रोन तो कॅच करतलो. दिस इज द फोकस ऑन द ट्रॉफी एंड हियर कम्स आवर गेस्ट. हांव मागता पत्रकार बंधू जी वाट आसा ती मातशी सायडीन खाली करची. सगळे ओनर्स तुमी पळयात कशे रावल्यात आपल्या होर्डिंगा सायडीच्यान. This is just a trailer. Just a trailer, ladies and gentlemen.
काबार काबार जावपाक. Now it's time for all our owners to join. Semi circle. मागच्या फाटल्यान रावत. So I'll give it a count. निलेश काब्राल सर आणि रोहन गांवस देसाय दोगांय बरोबर ही ट्रॉफी आसा ती अनवेल करतली. हांव काउंट दितलो. 3, 2, 1 गो. फाटल्यान पळया आता. फाटल्यान पळया सगळे. आणि आता वो मोमेंट जो आसा तो कॅप्चर करता. सगळे जे खांबे आसा ते जे कशे प्रज्वलित जाल्या ते पळया आता. दिस इज द मोमेंट दॅट वी हॅव ट्रायड अँड दिस इज द मोमेंट दॅट हॅज बीन सक्सेसफूल. अँड आता सगळ्यो ज्यो लायटी आसात त्यो हळू हळू पेट्टल्यो. हांव आमचे मानेस्त जे आसात तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता अजून सर कांय जालें ना फाटल्यान या. जे ओपनिंग सेरेमनी टीम खेळटाले फर्स्ट इनॉग्रल मॅच जे खेळटाले ताणें मातशें रेडी रावचें. हांव मागता दोनूय टिमी आसात तांणी मुखार येवचे. दोनूय टिमी one by one the teams playing the inaugural match will come starting from the captain. Agni Avengers, please take your step. बेगीन येयात, मुखार येयात अग्नी एवेंजर्स. तशेंच ऑफिशिएटिंग अंपायर्स हांगा आमकां जॉइन जातात. सदगिरी नायक, अमेय नायक आणि पुण्य पालकर. Requesting both the teams, please join. येयात, starting from the captain. विपल यो आणि एका फाटोफाट एक बाकीचे सगळे जे प्लेयर्स आसा ते जॉइन जातले. तसोच MCCचो तवसू मुल्लनवार हो आयकॉन प्लेयर कॅप्टन आणि बाकीचे प्लेयर ऑफ NCC काकोडा आर जॉइनिंग इन. Captain next to Kiran, and then you line up. So both the teams have lined up. Adi, get ready with national anthem. आमच्या हांगा म्हाका दिसता आतां जी टीम आसा तशीच लायनअप जातली. हांव मागता प्रदीप सरा कडेन, निलेश काब्रा सरा कडेन आनी रोहना कडेन मातशें पिची कडेन येवचें, कारण आमी हांगा नाल्ल फोडून सुरवात करतले. जे आमचे
ज्या वाठारांतले सगळे देव देवता आसात सगळ्यांक नमन करून तशेंच आमची जी इगर्ज आसा तांकां गार्डन एंजल तांकां आर्गां वतून तशेंच आमचो सुफी जी मस्जिद आसा हांगा ताका दुआ करून सगळ्यांक मान दिवन आमी ह्या कुडचडें प्रिमियर लीग 2.0 हाजो आगाज करतात. हांव मागता प्रदीप सर हाणें नाल्ल फोडचो आनी एक बरी सुरवात करची, श्री गणेशा करचो ह्या टुर्नामेंटाचो. येस, आतां तुमी परत जॉइन जावपाक शकता. इट्स टायम फॉर नॅशनल एंथम. आय विल गिव काउंट ऑफ 5. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जे कोण बसल्यात फाटल्यान तुमची खुर्ची तुमची सिटां कोण वचपाना पूण नॅशनल एंथम चलता. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जाग्यार मातशे उबे रावात. जितले जाण कोण बायकार बसल्यात जितले जाण कोण खुर्चेर बसल्यात आसा त्याच जाग्यार उबे रावपाचे. इट्स टायम फॉर नॅशनल एंथम. बोलो भारत माता की. And let the fireworks begin. The show begins. हांव रिक्वेस्ट करता अपार्ट फ्रॉम कॅप्टन्स बाकीचे सगळे जे प्लेयर्स आसात तांणी आपल्या डगआउटान वचचें. ऑल द प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम कॅप्टन. इट्स नाव टायम फॉर द टॉस. निलेश काब्राल सर आता टॉस उडयतलो. विपल नायक जो अग्नी एव्हेंजर्साचो विठ्ठलदास बाबाची टीम ओपनिंग सेरेमनी खेळटात तशेंच प्रज्योत बाब नायकाली टीम MCC खेळटात. तवसू मुल्लानवार हांगा रेडी आसा. हो आसा स्पेशल आमी जो केल्लो आसा. हांगा टॉस उडयतलो. लकी बॉयसाचो बॅनर कॅप्टन्स दोगांय आसात. जोरान जावचें. कोण सर तूं मागपाक विपल जोरान कॉल जावनी. टेल्स इज द कॉल्स. हेड्स इट इज. सो तवसू जिखिल्लो आसा. तवसू कितें चिंतलां करपाचें? फिल्डिंग पयलीं चिंतून आयिल्लो टॉस जिखलो जाल्यार फिल्डिंग करतलो म्हणून. 6 ओव्हरीची मॅच. तुका सगळे रुल्स खबर आसा. कितें दिसता कितें टोटल तांकां आडोवपाक जाय जो तुमकां चेस करपाक इजी पडटलो? 40 to 45 कित्याक फर्स्ट मॅच न्हू. 40 to 45 भितर आमी दवरपाक चिंतताले. आनी कितें सायडीचो बॅलन्स तुजो आउटस्टेशन प्लेयर कोण? आउटस्टेशन मोहित गांवकार एक आमकां आनी साहील गांवकार. मोहित आनी साहील आनी बाकीचे सगळे कुडचडेचे. हांव तुमकां ह्या टुर्नामेंटाक आनी ह्या पयले दोंगरल मॅचीक यश भेटना. तसोच विपला कडेन वता. विपल तुवें टॉस जिखला तुवें फिल्डिंग येता आशिल्लो पूण टॉसीचेर मॅच आसना. मॅच मदीं खेळटा ताजेर आसा. पीच म्हणटा ती बेल्टर आसात. जर तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तुका दिसता कितें बरो स्कोर? एक्सेक्ट करता की 60+ तर जातलो स्कोर. पळोवया दॅट डिपेंड ऑन म्हाजे टीम मेट्स. पूण हांव फूल कॉन्फिडंट आहा आमचे टिमीचेर. सो आमी एटलिस्ट मिनिमम 60 पूण क्रॉस करतले म्हणून. एटलिस्ट 6 ओव्हरी मिनिमम 60 क्रॉस करतलो अशें विपलाक दिसता. तुजो आउटस्टेशन प्लेयर कोण जो हांगा खेळटलो? स्वप्नेश वेळीप. सपनेश वेळीप आनी आउटस्टेशन प्लेयर सपनेश वेळीप आनी तुजो सांगे केपें धारबांदोडा शंकर गांवकर. शंकर गांवकर हो जो प्लेयर आसा. हांव दोगांक यश आवडटा आनी सगळ्या मानेस्तांक रिक्वेस्ट करता की आमचो जो इनॉग्रल सेरेमनी ऑलमोस्ट समाप्त जाल्ली आसा. पूण आनी जशें तुमी पळयल्लें आसा खूब कितें वेगळो प्रयोग केल्लो आसा तसो आनी प्रयोग तुमकां बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मॅच तुमकां दिश्टी पडटलो. हांव मानेस्तांक रिक्वेस्ट करता तुमी
तुमची वचकत घेवची आणि रोहनाक रिक्वेस्ट करता मातसो राव. रोहन बाब, जशें पळयलें तुवें की प्रदीप सरान नाल्ल फोडलो आणि सरान निलेश काब्राल सरान एक स्पेशल मुमेंट असो टॉस इनॉग्रल मॅचीचो. सो तूं अशें चिंतलो की आपल्याक खंय अशें रोहनाक दिसत, पूण रोहनाक एकच सांगता, जो तुका व्हड आवडटा भिवपाची गरज ना, कारण जितलें स्थान बाकीचें आसा तितलें स्थान तुजें आमच्या काळजान आसा. कित्याक आमकां तुजो व्हड अभिमान. आमी बरोबर हांगा खेळ्ळे, आमी बरोबर तूं सर्वोदयाक खेळटालो, हांव बॅनरमॅनाक खेळटालो, अशी कितलीं वर्सां आमी क्रिकेट खेळ्ळे आनी आज तूं गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचो सेक्रेटरी जाला. हो व्हडा मान आमकां. तुका ह्या ग्रावंडार रावन एक म्हाका दिसता पयलींच्यो सगळ्यो यादी ताज्यो जाल्यो आसतल्यो, पूण तितलेंच करता आसतना तुवें स्वता गोवा वुमन्स प्रिमियर लीग घडोवन हाडिल्लो, जो व्हडा सक्सेसफूल जाल्लो. आनी तशेंच तूं पळयता की जेन्ना व्हडले टुर्नामेंट जाता, जांकां व्हडले बजेट आसतात, ते एक स्पेशल थीम सॉंग करता, बरोबर. सो अजून पर्यंत गोंयांत टेनीस बॉल क्रिकेटीच्या इतिहासान कोणें थीम सॉंग घडोवन हाडूना. ओके, आमी हो एक आगळो वेगळो प्रयोग केलो. प्रत्येक जाण प्रोफेशनल हायर करता, पूण जो आमी थीम सॉंग केल्लें आसा ते सगळे कंपोज केल्ले, लिरिक्स केल्ले, सॉंग म्हणिल्ले आनी म्युजिशियन सगळे लकी बॉयसाचे, सगळे कुडचडकार. आनी आतां तुज्या हातांतल्यान आमी हें थीम सॉंग लॉन्च करपाक पळयतात. लोकांक रिक्वेस्ट करता हें थीम सॉंग आयकुपाचें, जाचेर आमी भरपूर मेहनत घेतिल्ली आसा. वन ऑफ इट्स ओन कायंड, जे अजून पर्यंत टेनीस बॉलांक घडूना, जे तुमकां परत प्रत्येक फाटी तें थीम सॉंग आयकुपाक येतलें. तें लकी बॉयसाचें CPLाचें थीम सॉंग. रोहनान इतलेंच म्हणपाचें, लेट्स प्ले. ओके, यू आर रेडी? लेट्स प्ले. हियर गोज द सॉंग. Everyone out there, it's time for the most awaited and coveted championship, the Curchorem Premier League 2.0. Here we go. आयला बारे क्रिकेटीचे खुडचड्यार, काळजात जोश घेऊन खेळगडे सरल्या मुखार. चढ एकलो क्रिकेट खेळूक सामकोच आयला नेटार. गोर आनी सिक्सरीचो खुडचड्यार येतलो हुवार. क्रिकेटीचो उत्सव घेवन लकी बॉय सरल्या मुखार. चल CPL खेळूया. चल CPL खेळूया. चल CPL खेळूया. चल CPL खेळूया. आता टीम लिस्ट घेऊन येयात. तुमचा बॉल जे आसा ते सिलेक्ट करात. थोड्याच क्षणान इनॉग्रल सोहळो जो जी मॅच आसा आता ती सुरवात जातली. आमचे अंपायर्स रेडी आसात, तशेंच आमचे जे सगळे मानेस्त आसात ते रेडी आसतात, गेस्ट रेडी आसात. पयलो बॉल घालतले. हांव रिक्वेस्ट करता टीम शीट घेवची. दोन्ही कॅप्टनांनी हजर रावचें, बॉल सिलेक्ट करचो आनी आमकां मदत करची हो जो इनॉग्रल मॅच आसा जात तितले बेगीन सुरवात करपाक. दोन्ही कॅप्टन येयात, तुमचे बॉल सिलेक्शन करात आनी जे अंपायर्स आसात, ऑफिशिएटिंग अंपायर्स, ते ग्राउंडार वतले. रुल्स एंड रेग्युलेशन्स हांव तुमकां सांगता. 6 ओव्हरीची मॅच आसतल्यो, लीग मॅचीस, ज्यो पयले मॅचीच्यान सुरवात जातल्यो. टोटल 6 मॅचीस दिसाक, फाल्यां टोटल 6 मॅचीस आनी मागीर सेमीस 2. एक स्पेशल अशी मॅच दवरिल्ली आसा जी आमी दर वर्सा दवरता, ती एक्झिबिशन मॅच बिफोर द फायनल्स. जे खेळटले आमचे ओनर्स, जे खेळटले आमचे स्पॉन्सर्स म्हणल्यार आमचे पार्टनर्स. आनी 6 ओव्हरीची मॅचीक एक बॉलराक 2 ओव्हरी मेळटल्यो. ती 2 ओव्हरी घालतलो कुडचडेचो बॉलर. जो पयले पावर प्लेन बॉलिंग घालतलो तो दुसऱ्या पावर प्लेन ओव्हरान बॉलिंग घालपाना. 2 to 5 ओव्हर्स आसतली ती बॅटिंग पावर प्ले आसतली. त्या वेळार 3 फिल्डर भायर अलाउड मेळटले. आउटस्टेशन प्लेयर्स जे आसात तांकां फक्त एक ओव्हर मेळटली. टायम बाय नियम जे आसात, जे ICC आनी MCC कोड ऑफ लॉज, ते तुमकां फॉलो करचे पडटले. बॅट्समॅन जो आसा, बॅट्समॅन तो 1 मिनटा भितर क्रिजीर वचपाक जाय. बॉलर 1 मिनटा भितर बॉलिंग मार्काक वचपाक जाय. टायमा भितर जर तर मॅच तुमी इनिंग्स आपल्याली सोंपयना जाल्यार अंपायर तुका पेनल्टी दितली, कितें आसा ती फावो. सो जितले सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसात तुमी वाचचे बिफोर एंटरिंग, बिकॉज दॅट रुल्स एंड रेग्युलेशन्स वील बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. आनी आमी गार्डन स्पोर्ट्स क्लब हांणी आमकां खूब हातभार केल्लो आसा. तांचे वतीन जॉन्सी हो हांगा पाविल्लो आसा. हांव जॉन्सीक सन्मानान वेदिकेचेर हाडटा. आनी
जॉन्सीक रिक्वेस्ट करतात आणि माचेर येवचें. तुका आसा व्हिडिओ काउंटडाऊन म्हाका पयलीं भायर प्ले करून दाखय खंयचो तूं दाखयता भायर प्ले आं त्या ड्रॉ हेजेर मरे फर्स्ट दोन रिमाइंडरी पावर प्ले ना 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 तेजेर ते ताणे हांव सांगता एकूच पावर एक पावर प्ले आनी दुसरो एक मॅन्डेटरी दुसरो असो तो सेकंड टू 5 ओवरा भितर बॅट्समॅनान घेवपाचो ते तुमी सांगात तेका 3 बार ते हांव परत परत येना बाकीचे तुमी हँडल करपाचे रेडी केले बॉल बॅक प्ले हांव सांगता तेन्ना प्ले करपाचो अंपायर एक काउंटडावन आसतलो काउंटडावन जातकीच ते पयलीं सेट कर तांकां ड्रिबलिंग जावनी बॉलर बॉलिंग मारपाचें वतलो मागीर हांव प्ले करतकीच मॅच चालू जातली ओके ऑडियो ना तुमकां ऑडियो बाप ऑक्स दी हांगा थंय म्हाका हें जाय सावंड कनेक्शन केबल ना केबल आसा दुर्गेश विचारता रे बेगीन कर बेगीन कर जाल मरे हां कितें तरी कर ऑक्स तेणे घेतलो कोणे सद्या तागे काड सद्या ताजो काड तुजो काड ऑक्स तुजो काड हाजो ऑक्स काड आनी ताका दी सद्या सावंड म्हाका दी रे म्हाका दी एलईडी वाले कितें सांग म्हाका जाय रे शाण्या हांव सांगता तितलें म्हाजो ऑक्स ना म्हाजो हे मोठो होतो कितें तो तेच्या हेका लागना आउटपुट काड म्हणटा तो काड तो काड आनी ताका दी सद्या मागीर तुका रोकडो इमिजिएटली लायता जॅक ना अरे परत लायता शाण्या जॅक ना जॅक ना जातलो मरे अरे ताजो काड आनी पकय ताजे सावंड जाय म्हाका ताजे एलईडीचे प्ले करतकीर सावंड तो जाय प्ले करता रे म्हाका दी हां कितें प्ले करपा ते म्हाका दी ओके पेन ड्रायव्हर ना व्हॉट्सॅप तो म्हाका निखिलाक धाड बेगीन तूं सावंड दिता मरे तुजो व्हॉट्सॅपा वयल्यान म्हागे व्हॉट्सॅप एलईडीचेर येतलो मरे हय हय हां एलईडीचेर तो हें करतलो तुवें ओके दी दी तुका हें दिल्लें आसा HDMI दिल्लो आसा हय हय तो प्ले जातलो ऑलरेडी व्हिडिओ दिसता न्ही व्हिडिओ धाडटा का ऑडियो येतलो हांगा प्ले केल्यार ऑडियो येवचो ना तेका लागून खंय रे ते बॅनर्स हें खंय आसा हें खंय आहा रे धाडिल तो काउंटडावन व्हिडिओ म्हाका मेळना म्हणून अशें धाड धाड मरे ताका धाड बेगीन धाड हांव रिक्वेस्ट करता दोनी प्लेयर्सांक जातीतले बेगीन ग्राउंडा मदीं देंवचे जे टिम्स आसा फिल्डिंग करतात तांणी जातीतले बेगीन ग्राउंडा मदीं देंवचे अंपायर्स आर रेडी Only 12th man will enter the field. Please take a note. Only 12th man will enter the field. No one else will enter the field.
हाजेर बरयना रे गिटार कोणे रिक्वेस्ट करता दोन्ही टिमीक जाता तितले बेगीन येवचें फिल्डिंग टीम आणि बॅट्समॅन येवचे प्रॅक्टीस जी ग्राउंडार चालू आसा ती मातशी बंद करात आणि ज्यो दोन्ही टिमी हांगा खेळटले तांकां रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन ग्राउंडार देवचें सगळ्यात पयली फिल्डिंग टीम MCC मादेगाळ क्रिकेट क्लब आणि आपल्याली फिल्डिंग सजोवची सगळे कुडचडकार तशेंच म्हाका दिसता कुडचडे वाठारांतले न्ही जाल्यार बाकीच्या सगळ्या वाठारांतले लोक कुडचडेम प्रिमियर लीग पळोवपाक आयिल्ले आसात म्हणून इतली मोठी गर्दी जाल्ली आसा आणि तशेंच पयल्या ओव्हरीन जर बॉल भायर गेलो बॉल मेळूं ना जाल्यार न्यू बॉल घेतले प्लीज नोट करात बॉल भायर गेलो शेणलो आनी बॅट्समॅनाक परत परत बॉल चॅक करपाक मेळपाचो ना अंपायर्साक जे रुल्स आसा ते फॉलो करचे पडटले प्रत्येकाक कायदो आसा तो प्रत्येकाक फॉलो करचो पडटलो आनी अंपायर्स आर the adjudicators of the rules and regulations of MCC code of laws in the middle. So please don't argue with the umpires. Umpire decision is going to be final and binding for everyone. The batters are ready. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lucky boys for second floodlight tournament. Gurunalla, I wish Lucky boys all the best and let's start the tournament. nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. लकी बॉयज तो सेकंड फ्लड लाईट टुर्नामेंट घडून हाडल्या. आय विश लकी बॉयज ऑल द बेस्ट अँड लेट्स स्टार्ट द टुर्नामेंट. उन तमाम से कहना चाहिए आज शुरुआत के इस माहौल में एक बेहतरीन माहौल मैदान पर चलता हुआ. और इस बार हवाई शॉट फायर किया गेंद को. गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर जा रही है और देखते हैं सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए मैदान पर. शंकर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का इस इनिंग का. शुरुआत की पहली गेंद और उसके बाद शंकर का अटैक जो कि बल्लेबाजी पर. और इस बार फिर से स्कोर लेग पर के ठीक ऊपर से स्कोर लेग बाउंड लाइन की गेंद लगभग 1 बाउंस बाहर 4 रन के लिए. चौवे के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचे जबकि 10 रन पर जो कि कोई नुकसान नहीं. पहली गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरी गेंद जो कि ऑन साइड पर स्कोर लेग के ऊपर से मैदान पर. शंकर शुरुआत में अटैकिंग बल्लेबाजी मैदान पर पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करता हुआ इस मैच में. इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पर चूके गेंद की लाइन से ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर निकलती गेंद. देखिए एक वापसी मैदान पर गेंदबाज की. शुरू की पहली 2 के 3 गेंदों पर लगभग 10 रन बन चुके थे. उसके बाद एक वापसी, कोई रन नहीं बनता हुआ यहाँ से और टोटल स्कोर पर तब्दीली जबकि 10 पर पहुंचा. सीपीएल का आगाज मैदान पर खेल चलता हो जो कि इस मुकाबले का पहले ओवर का. कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को फुल टॉस बनाकर खेला बैकफुट पॉइंट पर जहां पर फील्ड हुई. बैकअप उतना ठीक ठाक लेकिन चलिए वहां से रन निकलता हुआ. 1 रन के साथ स्ट्राइक पर अब जाएंगे जो कि दूसरे खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा जबकि 11 रन पर. उत्तम जो कि इस मैदान पर स्ट्राइक पर रहेंगे. पावर प्ले में शुरुआत बहुत सुंदर मैदान पर और इस बार हवाई फायर गेंद को अब पिच खेलेगा जरूर लेकिन गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन पर और देखते हैं सीमा रेखा पर गेंद को जब तक फील्ड करने का प्रयास होता सिर्फ प्रयास रहता हुआ गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए. एक बहुत सुंदर शॉट मैदान पर, गेंद को बिल्कुल हवा में खेला. थोड़ा सा अपीच जरूर था लेकिन वहां पर जो चौका निकला उसके बाद ये टोटल रनों का इजाफा होता हुआ इस वक्त एक 2 चौवे, 1 छक्का और 1 सिंगल, मतलब टीम का स्कोर इस मैच में बनता हुआ 15 रन मैदान पर. पावर प्ले की पहली ओवर जबकि 15 रन खर्च होते हैं और साथ साथ जो टीम बल्लेबाजी कर रही है अग्नि एवेंजर्स टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास पहुंचे नाम बताने के लिए. अग्नि एवेंजर्स टीम जो कि शुरुआत बहुत ठोस मैदान पर शुरू के पहले ही ओवर में आक्रामकता दिखाते हुए और शुरुआत जो होनी चाहिए मैदान पर इस पावर प्ले के ओवर में वो पावर प्ले के ओवर में शुरुआत लगभग 15 रन जोड़े गए मैदान पर. उत्तम और शंकर इस जोड़ी मैदान पर. अग्नि एवेंजर्स कप्तान अपना अतिरिक्त खिलाड़ी भेजा हमारे पास. अग्नि एवेंजर्स टीम के बिल्कुल खेमे में नीलेश तारी सर मौजूद है. आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान. एक बेहतरीन माहौल मैदान पर इस समय पर ग्राउंड फील्डिंग एक स्कोर लेग सीमा रेखा पर अब लगाया जा चुका है क्योंकि इस वक्त
एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, ये कुछ फील्डिंग मैदान पर, एक कवर पर पीछे रखा है मैदान पर। देखिए कुछ चक्रियों इस वक्त सच शंकर को रोकने का प्रयास करते हुए मैदान पर। शंकर अभी तक अपनी बल्लेबाजी में 5 गेंदें और कुल मिलाकर मात्र 11 रन मैदान पर, और टीम का स्कोर पहुंचा 15 रन पर। हेलो, नया बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक पर मोहित गांवकर को मिलती पड़ी सफलता इस मैदान पर, और 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 15 पर पहुंचा टीम का स्कोर। इस बार ऑफ्टर के बार कट किया मौका हाथ खोलने का, हालांकि गेंद वहीं पर घूमी, गेंद निकली थर्ड मैन सीमा रेखा पर। जब तक उसको वापस में फील्ड किया जाता तब तक शायद ये दूसरा भी रन मैदान पर। विकेटों की बत्तियां बिल्कुल जल चुकी, लेकिन उसमें अंपायर का इशारा था नॉट आउट का। काफी अच्छी दौड़ विकेट के बीच में, देखिए जैसे आपको शॉट खेला गया, बिल्कुल अच्छा विश्वास दिखाते हुए। और हम जरूर कहते हैं युवा खिलाड़ियों को अगर सीख सकते हैं, देखिए शॉट खेलने के बाद किस तरह से स्ट्राइक के बल्लेबाज जल्दी पहुंचे स्ट्राइक एंड पर, मतलब जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बनते हैं, और यही काम करना पड़ेगा आपको इस वक्त। 2 के साथ 17 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि 1 विकेट नुकसान के बाद शंकर जो कि लौटे, उसके बाद मोहित गांवकर वापस अपने मोर्चे पर सामने से। चेंज ऑफ पेस की गति परिवर्तन, पहले गेंद शरीर पर शायद लगी, वहां से विकेट कीपर गए उठाए गेंद को, रन लेने के आसार लगभग समाप्त होते हुए। एफसी स्टेट ने पहले टॉस जीता, और शुरुआत में जो कि गेंदबाजी करते इस मैदान पर शुरू का पहला और लगभग 15 रन का निकला। ओह बिल्कुल अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई। देखिए यहाँ से अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है हमेशा, अगर सीधे हम खड़े होते तो शायद बताते कि कितनी करीब से गुजरी है, लेकिन लगभग मुझे लगा कि शायद बिल्कुल वहां पर नाक के करीब से गुजरी गेंद। और इस बार हवाई फायर किया जरूर, हाफ शॉट जहां पर मौका अधूरा जरूर रहेगा, लेकिन जब तक इनको उस बढ़िया बैकअप करते हुए लॉन्ग ऑन पर। देखिए शॉट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से ये दौड़ते विकेट की, जहां पर 2 रन बनते हुए, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर बहुत हुआ, जो कि 19 रन, जबकि 1 विकेट नुकसान के बाद इस मैच में। दोन्ही टिमीचे 12th मॅन आसा ते हांगा मातशे कॉमेंट्री बॉक्सान येवचे. दोन्ही टिमीचे 12th मॅन मातशे कॉमेंट्री बॉक्सान येवचे इमिजिएटली. देखिए यूट्यूब पर ये मुकाबले चल रहे, जो कि हम आपको फिर से बता रहे, गोवा लाइव का माध्यम से आपको यूट्यूब पर ये मुकाबले दिखाया जाए। इस बार शॉट हवा में जरूर है, गेंद बहुत ऊपर जा रही है, और फील्डर वहां पर मौजूद है, और ये आउट मैदान पर। उत्तम की बारी लगभग समाप्त, दूसरा विकेट निकला 19 रन पर मैदान में।
नया बल्लेबाज स्वप्नेश मैदान पर पहुंचता हुआ, जबकि एक सफलता मैदान पर निकलती इस वक्त नए गेंदबाज को। देखिए 2 और 1 गेंद के बाद खेल में बिल्कुल सब कुछ काटा बदला, 19 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। ऑन साइड पर ताकत बहुत, लेकिन गेंद फिर से हवा में, स्कोर लेग सीमा रेखा पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और जब तक दूसरे प्रयास में को लपका जाता और एक विकेट मैदान पर। थोड़ी सी जल्दबाजी वहां पर आते हैं बल्लेबाज करते हुए, बिल्कुल शॉट में बिल्कुल ताकत जरूर थी, लेकिन हवा में गेंद काफी खड़ी और उसके साथ एक अच्छी फील्डिंग मैदान पर। तीसरा विकेट निकलता है इस मैच का, जबकि टीम का स्कोर मात्र 19 रन पर। स्वप्नेश ने अपना कोई खतरा नहीं खोला, जबकि आउट होकर वापस जाते हुए और नए खिलाड़ी के रूप में अब मैदान पर पहुंचेंगे, जो कि कप्तान जो कि मैदान पर विफल मैदान पर पहुंचते हुए। वापस खेल चलेगा विफल जो कि मैदान पर इस वक्त पहुंचता हुआ नए खिलाड़ी के रूप में कप्तान जो कि इस वक्त टीम का। शॉर्ट गेंद घूमकर जरूर खेला, थोड़ी सी बिल्कुल गेंद धीमी आती हुई, स्कोर लेग सीमा रेखा पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक उस गेंद को रोका जाएगा। जब पे 1 रन बनता हुआ खाता खोला अपना इस वक्त, जो 19 का पड़ा था वो चल चुका आगे, मतलब 20 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैदान पर। रात का समय बेहतरीन मुकाबले मैदान पर, 2 बड़ी टीमें आमने सामने, और CPL का आगाज जो देखा आपने शुरुआत में, बहुत सुंदर अंजाम किस तरह से होगा ये बिल्कुल पता चलेगा आपको। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया और चूके गेंद की लाइन से, देखिए बीच बीच में ये बहुत बार देखा जाता है मैदान पर आजकल बल्लेबाज जो कि कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, रिवर्स पर रन बनाने का प्रयास वहां पर करते हुए, लेकिन चूंकि वहां से जिस तरह से माहौल चल रहा है इस शाम के समय पर, बहुत बड़ा मुकाबला मैदान में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय अभी तक बिल्कुल सफल, 3 विकेट 20 रन पर। थोड़ी सी नाजुक हालात सामने टीम के। इस बार शॉर्ट गेंद को बिल्कुल खेला है मिड विकेट पर और सीधे खिलाड़ी के हाथ में, और यह आउट मैदान में। अग्नि एवेंजर्स जो कि शुरुआत में पहले ओवर में लगभग 15, कोई नुकसान नहीं, उसके बाद के हालात मैदान पर, जबकि 2 ओवर और कुछ गेंदों के बाद मैदान पर खेल चलता, विकेट निकला, चौथा खेल बनता जो कि 20 रन का मैदान पर। नया बल्लेबाज जो कि स्वप्नेश खांडेकर मैदान पर पहुंचता हुआ इस वक्त 2 सफलताएं, बैक टू बैक मैदान पर, एक बहुत बड़ी वापसी मैदान पर, और जिस तरह से माहौल चल रहा है इस वक्त, शुरुआत अच्छी जरूर थी एवेंजर्स टीम की, लेकिन थोड़ी सी जो कि वापसी मैदान पर करती है गेंदबाजी पर। इस बार शायद क्या पल्ले पर पहले लगी या फिर पैड पर देखना पड़ेगा, अंपायर का इशारा क्या आता हुआ, शायद पहले बल्ले पर लगी है, और 1 रन के साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ, जबकि तीसरा शुरू की कहानी लगभग 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर, जबकि 21 रन और 4 विकेट के नुकसान के बाद जो कि अग्नि एवेंजर्स टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। कप्तान अब रहेंगे स्ट्राइक पर, जबकि विफल मैदान पर, और आज जिस तरह से शायद बैटिंग चॉइस हाँ बैट्समैन पावर प्ले का इशारा मैदान पर पहुंच चुका है गंदर, जो कि इस वक्त बल्लेबाजी गेंदबाजी के मोर्चे पर नए खिलाड़ी के सामने, और कप्तान आज किस तरह से रहेंगे इस मैदान पर।
देखिए आज कप्तान को एक बड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी इस मैदान में। कम से कम बची हुई कुछ 18 गेंदें हैं इस वक्त, और उस 18 गेंदों में कप्तान को लगभग 20-22 रन खुद के जोड़ने पड़ेंगे। मतलब कम से कम 50 तक पहले बल्लेबाजी होनी चाहिए, अंदाज रहेगा शुरुआत से। और सामने वाली टीम में जब बात करते उन्होंने भी कहा था कि लगभग 40 के आसपास रोका जाएगा सामने टीम को, मतलब उनका अभी तक ठीक ठाक है। 4 विकेट निकल चुके अग्नि एवेंजर्स टीम के। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया, हालांकि पैड पर पहले लगी होगी हल्का सा अपील, लेकिन इनफैक्ट सबसे अहम था इनफैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर जहां से हम पाने इनकार करते हैं, मतलब रन वहां पर नहीं मिलते हुए। देखिए सीपीएल की शुरुआत बिल्कुल बड़े शॉट के साथ, छक्के के साथ हुई थी। उसके बाद कुछ लगा कि आगाज बहुत रहेगा, लेकिन क्या वापसी गेंदबाजी की, बहुत सुंदर वापसी मैदान पर। ओ लाइन थोड़ी सी ऑफ्टर के बाहर, बहुत बढ़िया वापसी। देखिए जैसे 4 विकेटें निकले, प्रेशर बनता हुआ मैदान पर। और अब तक की इस वक्त खेल में देखा जाए तो लगभग 20 गेंदों का खेल यहां से हो चुका है, जहां से कुल मिलाकर 21 रन और 4 विकेट। देखिए शुरुआत में पहले ओवर में 15 रन जोड़े गए थे, कोई सफलता नहीं था। उसके बाद अंतिम अगर बताऊं बात, यहां से लगभग 14 गेंदों पर सिर्फ 6 रन निकले। ओ बीट क्या आवाज है, फिर से बीट क्या आवाज है। देखिए गेंद टीपा करेगा तो हल्की सी बाहर जाती हुई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए खड़े खड़े बिल्कुल अपने पॉपिंग से बड़े शॉट लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्क्वायर लेग पर है खिलाड़ी मौजूद, एक मिड विकेट पर है खिलाड़ी मौजूद, एक लॉन्ग ऑफ पर 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात है इस वक्त पोजीशन पर। ओ बीट क्या आवाज, फिर से बीट क्या। देखिए हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरने के बाद अपना कांटा बदलती गेंद, और थोड़ा सा दूर भी रखा जा चुका है। यहाँ से मुश्किल है यहाँ पर बल्लेबाजी करना। यहाँ से और इस बार सीधा शॉट, हवाई फायर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से लगभग गेंद। अब देखना पड़ेगा इशारा क्या पहुंचता है अंपायरों का। अभी तक अंपायर भी कुछ देखते हुए यहां से कितने रन वहां पर बने जाएंगे। 6 रन के लिए एक बड़ा शॉट निकला कप्तान की इस बारी पर, और शायद तो उसी की उम्मीद थी मैदान पर, जबकि 27 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैदान पे। बैटिंग का पावर प्ले चलता हुआ, जिस पर कम से कम रन जाने चाहिए हमारे साहब सर। ओ लाइन थोड़ी सी बाहर रखिए, एक ही गेंद जो आपकी खराब सामने डाली, इस पर मौका मिला, लेकिन ये और बहुत बड़ा एक बड़ा शॉट जरूर लगा, लेकिन मैं कहूँगा उतना कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि सिर्फ 6 रन निकले इस ओवर से, और कोई सफलता जरूर नहीं, लेकिन एक वेल डन अच्छी बॉलिंग मैदान पर। चलिए 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम यहां से पहुंची 27 रन, जबकि 4 विकेट नुकसान के बाद। अग्नि एवेंजर्स टीम जो कि After the completion of 4 overs, the score has managed to reach 27. Here comes the 5th over. Ganesh, that's a good strike, but is straight to the man in the deep and just gets a single. Interesting match, interesting position here. We certainly don't know what kind of role the pitch will play. This is the first match and we are just witnessing a turnaround here. The start that Avengers had got, they could not capitalize on that. But there are lots of deliveries, lots of time still left. The 6 overs match, and anything can happen with 1 or 2 hits. Things change just like this is stoppage. This should be a catch. Catch taken, went for the switch hit, getting the leading edge, and none of the catches have been dropped so far by MCC. One more going down, and the score at the moment doesn't look good here for Agni Avengers. 27 for 5, 5th over in progress. And just to tell you that there are a lot of support that we got from Curchorem people, and that's the reason why we have lots of partners for this tournament, and all these partners will be seen for entire 3 days on the LED screen that has been placed here, and it's a view for everyone to see. Here comes the new batter. Left-hander. Looks to be Aniket Trivankar, the left-hander.
Bear is popularly known. He's a very good bowler and can be handy with the bat. Oh, goes for the big one. Might be big one. Ah, yes, it is. That was the icing on the cake. They require this boost to come from somehow, and he is known for these big hits. With this 6, the score immediately moves on to 34 for the loss of 5. Let's see what sort of total we get in the 6 overs. People are also eagerly waiting. Everyone wants a close match. Nobody wants a one-sided affair. And for that to happen, I feel somewhere around 50 should be a good enough total. It's just the first match. We don't know what is going to happen in the second innings. This time nicely played. Could have stopped there, Ganesh, but just gets a single down towards the long off region, the left-hander. Single takes the score to 35. 35 for the loss of 5. 5th over in progress. So far, 8 runs have come off this over of Ganesh. He is a member of Lucky Boys, plays regularly on this ground on Saturday and Sunday matches. Oh, full toss ball and above is no ball. That should be a free hit. The next ball. Here is the opportunity. Here is the opportunity to grab. As the batsman cannot get out, and if the ball doesn't land on the right place, if it lands on the sweet spot of the bat, it's going to go for maximum. Little bit pressure at the moment. I told you 50 runs in 6 overs sometimes can be a little tricky. So they may be thinking of getting the 50 runs and hoping that things work in their favor. Oh, this was also a full toss ball. He tried to play it at the long off region instead of playing a cross-batted heave. Opportunity lost. 37 for 5. This time he strikes. Doesn't get that much of power. There's a man in the deep. And it just restricts to a single. So pretty decent over here for Agni Avengers at the moment. That will finish over number 5. And it's 38 for 5. And in comes the last over of the first innings of the first match. And immediately there will be a little break. Not a break of sort, but for the time will be taken by the side chasing. 38, if they get around a minimum 12 runs, 12 to 14 runs in this over, that can give them a feel, a hope that yes, we have posted a decent enough total. This time drives away, drives nicely in the covers. They exactly know what sort of the strengths and weaknesses each everyone possesses, as most of the players are from Curchorem in the Curchorem Premier League Season 2.0, and aware that he plays very well on the leg side. So they are trying to bowl him just outside the off-stump, fuller length deliveries, and singles won't matter at this stage for the bowling side, MCC. This time also Gandhar fires it in almost close to his legs. Could not get the elevation going. Vipul so far is trying to get himself going with a boundary or a 6. He's trying hard, but the ball has not been given in the slot. Nothing given away at the moment by the bowlers. MCC, they have got a very, very strong bowling unit, and they are surely showing their class over here in the first inaugural match. This time it was a full toss, a little pacey. Did not get the distance over there. Might be thinking of a couple. This is poor running into the wickets. Maybe he's thinking that let me give strike to Vipul over here. This time getting an outside edge, just doing with the singles at the moment. Timing part is missing here. So far 4 singles or 4 balls. And Gandhar has bowled exceedingly good spell. 1.4, 10 runs so far. The 2 overs that a bowler from Curchorem gets. This opportunity has been given to Gandhar by Captain Tausumullah Nawar, and it has been working well.
This time just place it. Should be another single. Left hand running between the wickets also doesn't look to be positive here. No positive thoughts are being applied. Maybe a couple here trying to put pressure. Things are going in favor of MCC at the moment. It's just 43 for the loss of 5. One ball left. Let's see how much they can get of the last ball. Can they get a 6 and finish it off on 49 so that the target is 50 runs? Here comes Gandhar, and that's the icon player, Vipul Naik. Once again, what a beautiful over. This is a magnificent over. Almost full length delivery. Nothing much given away by Gandhar. Trying to go for the 2. And they will finish it up on 44. Just like what captain said, we'll restrict them to somewhere around 40-45 runs. And that is what they have managed. Beautiful bowling performance from all round, all the bowlers of MCC. And that's the reason why they could restrict Agni Avengers to a mere total of 44. So 45 is the target in the first match. Requesting everyone to please immediately take your fielding positions. Agni Avengers and also the batsmen of MCC, please come on the field as a batters as fast as possible, because there are timing restrictions for everyone. So you have to follow the timing restriction. The batsman has to reach on the crease within 1 minute. The bowler has to be on the bowling mark within 1 minute. All the rules and regulations has to be followed in this tournament. Otherwise, you'll be penalized. So requesting the teams that are playing the next match, overlocked and team Kakoda boys, please come and take your sheets and mark your sheets. Captains, please take your sheets and mark and also come for the toss. Captain of Kakoda boys and captain of team Overlocked Sports Club, please come fast. हांव रिक्वेस्ट करता अग्नि एवेंजर्स जातीतले बेगीन फिल्डार येयात. तशेंच बॅट्समॅन ऑफ MCC टायम वेस्ट करपाचो ना, जातीतले बेगीन ग्राउंडार येवचे. टीम काकोडा बॉयज, टीम ओवरलॉक स्पोर्ट्स क्लब, प्लीज कम फास्ट. कॅप्टन्स, please set the field as fast as possible. Team Agni Avengers, 45 is the target. Here comes the batters. So the batters are ready, and so are the viewers waiting anxiously to see what's going to happen next, whether this total is going to be good enough. Any total can be defended in any game. We're just now seeing in SAG ground Curchorem, even a total of 30 in 5 overs was defended very well. They won comprehensively by almost 4 to 5 runs in the last over. And that can also be done. Yes, we are ready, all set for the run chase. So here is Viresh Asiam, Tosu and Sahil Gaonkar. This time very nicely played, finds the gap but gets only a single. So the icon player is taking the lead over here for MCC, understanding that these are the power play overs and have to take the maximum advantage, trying to get somewhere around 10 to 15 runs in the first over to ease the pressure on the middle order if at all a wicket falls. And Sahil, what to tell about this man, an elegant looking player from Darbandoda. You can see played with soft hands. This is what cricket is all about. It's not all about 4s and 6s. It's all about
playing with the mind, using your mindset to good effect out in the middle. And then whenever the loose balls are there, loose deliveries are there, put that away and get maximum runs possible. Sensible batting to get a single. This time in the air, should be catch, taken at the mid-off region, and cheers in the camp of Organic Avengers. They get their first wicket they were eyeing for. The icon departs. So although there is a lot of hard work being done by Lucky Boys to roll it over, but this is the first match. Nobody knows how and what role the pitch is going to play. Might be an interesting match on our hands. Might be the bowler ruling the roost here at CPL. This might be just the signs. Things will open out once the tournament opens out. Once more games are being played, things will clear out. So far, you can see the crowd. Huge crowd here at Figueiredo Ground, Pontemal to watch a Curchorem Premier League Season 2.0. It's packed. All the seats are being taken. And also, there are a lot of spaces. There is retaining wall that has been built over here, and that is also utilized to the full capacity. In comes Viresh AGM. Can he give up one more big blow? Oh, this is very nicely played. A very good shot. They were under pressure after the shot was being played and the batsman out in the previous ball. But this is Mohit Gaukar. He has got class of his own. So both the outstation players are playing for MCC at the moment. He gets the switch it right, gets the boundary, takes the score to 6. It's time towards the fine leg region. That's the poor delivery down the leg side. Ball runs away for 4 runs. Mohit Gaukar, at the point of time that he has come onto the crease with a positive intent, gets back-to-back boundaries here, trying to put pressure on Agni Avengers. And Mohit will play his natural games, his natural instincts. He's aggressive, and if the ball is there in his slot, if he feels comfortable that yes, there is no risk over here, he'll going to go full-blooded. 10 of the first over. So far, 1 delivery left. Once again, going for the switch at this time, straight to the man in the short third man region, and gets a single. So 11 runs coming off the first over, and a wicket as well for Viresh AGM. MCC 11 for 1 in 1. Kakoda boys, captain, please come for the toss. Vicky Naik. And the Overlock Sports Club, Alvino Carvalho requesting you to please come for the toss along with the sheet. The umpires are ready and so are we. It's time for the toss of the second match. Vicky. In comes Aniket Trivankar. The field has slightly opened up. This time trying to shuffle across on the offside. The ball going just above the wickets or slightly outside the off stump. This is the shot that he likes. Nowadays batsmen try to move, shuffle, use the depth of the crease to good effect and get as much as possible in tennis ball cricket. Most of the tournaments doesn't have LBW, can be sometimes controversial. That's why it's avoided in most of the tournaments. This time nicely cut away towards the backward of point region for a single. Single will take the scoreboard to 12. 45 runs is what they are chasing. 45 runs is what Agni Avengers has to defend. And you can see a wonderful setup here for Curchorem Premier League. It was a grand inaugural ceremony, one of its kind, being tried here by Lucky Boys. I hope that, hopeful that everyone likes and liked it.
This time towards the fine leg region and just going to get a couple of runs. So with this couple, the score moves on to 14. This time should be a boundary. That was shot down the leg side. Easy runs, and both the outstation players are doing job here for MCC. So only 2 balls left. Let's see who is going to be the bowler here to bowl the 2 balls. Looks to be Swapnesh. So outstation player is going to bowl 2 balls here to complete that over number 2. Target is 45. It's 18 for 1. Aniket Trivankar will be attended. Let's hope that it's not too serious about this injury. Hope he recovers. And back action on the game. Swapnesh Vedippa is going to bowl the next ball.
The two deliveries at the left, and on strike is Sahil Gaonkar. This time nicely clipped away on the leg side. Looking for a couple there, chance. Oh no, first thought of a couple, then thought maybe I could not reach over there, so let's not take a risk here. We are going very well, and let's not give the second wicket in the form of run out. 1.5, 19.1. Mohit Gaonkar, one of the very good all-rounders right now in cricket circles. Hailing from Marshall and goes all across recently. Nicely played. And oh, a hesitation out in the middle between both these batters. There was a moment there, a scare for MCC, but they recover in the end. And that is over number 2 gone is 19 for the loss of 1. So in comes the icon, Vipul Naik. This is going to be an important phase of the match. This is the batting power play that has been chosen. 3 fielders allowed outside, 1 kept at the cow corner region, 1 at wide, long on region. Here comes Vipul Naik. Nicely flicked away. Although there is a man in the inner ring in the short square leg region, it was always a single by the time the fielder collects the ball. Doing it in a steady way. Maybe they have decided that Sahil is the one that going to stay on the wicket, and Mohit is the one that is going to go after the bowling. Run rate will definitely not come as a part of this tournament to be in the qualifiers or for the semi-finals. Going for the switch hit, as he knows that less risk is there in this shot. Although Vipul bowled very nicely over there, right on the block hole, right on the mark, exactly where you need to bowl when the batter is going for the switch hit. 20 for the loss of 1 and 2.2. Oh, once again, good bowling. He just missed. You can see the reaction from Vipul. If he could have taken this wicket, things could have turned around here for Team Agni Avengers. So Vipul so far bowled exactly where he needs to bowl against Mohit Gaonkar. This time should get a boundary, He bowled so well the first 3 balls. This time straying down the leg side, that to a full toss. He just may have to get a bat onto the ball, and the pace did the rest. Wide and 4 runs. So 5 runs. Not good here for Agni Avengers. They need to be much more better than this, much more tighter than this. $25 for 1. This time swept away nicely. The ball is not going to race over for 4 runs. Staying inside, and a good couple of runs picked up here by MCC and Mohit Gaonkar. The over which was turning out to be good one is turning in favor of MCC because of that 5 extras. 27 for 1, 2.4. Oh, full toss ball. That's a freebie here. Freebie should get 4 runs. Trying to hike with a lot of power. He just finds a gap and gets himself going. So the over which has started well here by Vipul, maybe he's trying to bowl with too much of pace. Maybe he intends to bowl Yorkers which are not working for him. And now the score moves on to 31. Just 14 runs required in 19 balls.
So the equation is very much in favor of MCC. But because of the league matches, there is an opportunity for everyone to come back strongly in the match. There is no run rate being counted. It's all about the bowl out or the super over. If you tie up, if you're tied, oh, catch taken. That's a good catch. So finally, Vipal strikes. Is this the ray of hope that was required here for Agni Avengers to come back in this match? The outstation player, the big striker, Mohit Gaukar departs, is 31 for 2. Three overs need 14 runs in 18 balls. Equation is well within the reach, and till Sahil Gaukar is there on the wicket. And here comes the man of Lucky Boys, RJ. We call him Sajish Naik. He likes this ground. He likes this ground very much. He is at non-strikers and at the moment, and that's the reason they know that this is his home ground. He plays regularly. He loves this ground, and they have sent him up the order to give company to the outstation player. Left and right hand combination. Oh, that's a good flick here. Maybe they are looking for a couple here. That's wonderfully placed by Sahil. And yes, they might go in for the referral. That was a good throw straight in. And you can see that LED wickets. As you know, ladies and gentlemen, we have tried this for the very first time in the first season. And we are the only club so far in the entire Goa to use that in tennis ball cricket. So he makes it in. He makes it in, and that is 2 runs. That is good running between wickets by Sahil and RJ. .33. This time nicely played on the offside. Very sensible batting here. He knows that his wicket is important at this point of time. If they lose wicket, you never know. 1 or 2 might fall in quick succession. And is an opportunity for Sajish Naik to get the strike. First up, coming at number 4 position. And Viresh is putting up the field for him. 11 runs required in 16 balls. Not much of a pressure, you can say, at this point of time on any of the batters of MCC. If at all wickets keep tumbling, if at all dot balls creep, then only you can see the pressure. Nicely played away. He was absolutely in control. Didn't go for that pull shot which goes in the air. Not trying to play it in the air, just trying to play, you can say, half breaker. And with this single score moves on to 35. So 10 runs required in 15 is the equation. Doing it sensibly at the moment. Once again, a flick of the wrist. And a single. So now they are in the single digits in this run chase. First time, 9 in 14. The people are still watching anxiously what is happening. This time also, this is a chance. So they are not giving any dot balls against Viresh. They are playing sensibly, taking the singles, keeping the scoreboard moving along. And
So far, it's all singles with a couple that came in the first ball. 1 ball left in this over. 13 balls remaining. 8 runs required. 37 for 2. 45 is the target. Well, as you know that the stall has been put. We have got official stall partners, Senator Culasso, Route 1. The stall is open. Just close to the generators here, to the right side of the stage. And you can get a lot of good food at that counter. This time you can see that shot shuffled across. He saw what Viraj was doing. And sensibly enough, they are just picking the gaps. Nothing more. 38 for 4. Starts off the bowling. This time trying to pull away. This was much quicker than the batsman anticipated. It's a dot ball after quite some time. This time an inside edge. The ball is hurrying on to the batter. 2 dot balls in a row. Still trying to be in the game. 6 runs required in 9 balls. RJ is trying to just tap it around for a single, but good piece of fielding. I feel that this is the pressure that has been mounted or pressurized the batter here. You can see there is a short point. There is a short covers, short extra cover as well. What a shot this is. Magnificent hit from RJ. And RJ finish it off. Is it 6 runs or 4? 6 runs. That's his favorite hunting ground. And RJ does it for MCC. So time for the next match.
करेंगे इस वक्त गेंदबाजी पर, शायद विकी नाइक जो कि इस वक्त मैदान पर कुछ फील्डिंग इस तरह से लगाई गई, ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है इस वक्त इस मैदान पर। विकी नाइक जो कि शुरुआत करेंगे इस मैदान पर, पावर प्ले का पहला ओवर लेकर सामने से, और इस बार सीधा शॉट, बिल्कुल बड़ा टाइमिंग, इसके साथ ये बिल्कुल गेंद निकलती सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। पुनाजी जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे इस वक्त, पहला खाता खोलते अपना इस वक्त इस मैदान पर, एक बेहतरीन टाइमिंग, सीधा शॉट निकलता हुआ। पुनाजी कलुंगट जो कि स्ट्राइक पर, ऑलविन जो कि नॉन स्ट्राइक पर, जोड़ी मैदान पर, और इसी के साथ शुरुआत पहली गेंद जो कि सीमा रेखा से बाहर। गोवा राज्य का सबसे टॉप खिलाड़ी इसको जिनकी गणना रहती है हमेशा, वो खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर। ऑफ टर्न के बाहर से अपने आप को रूम देते हुए इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर खेला गया, पहला रन बहुत तेज निकला, जब तक कौन निकल पाता। एक रन के साथ पुनाजी अपने निजी टोटल पर पहुंचे, जबकि 5 रन पर, और टीम का स्कोर भी उसी अंदाज में, जबकि 2 गेंदे लगभग 5 रन पर। इस वक्त तो स्ट्राइक पर ऑलविन जो कि रहेंगे इस मैदान पर, राइटर खिलाड़ी 16 नंबर जर्सी पहनकर सामने से। तो बड़े दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने, विकी नाइक और पुनाजी जो कि एक साथ बहुत बार एक ही टीम में खेल चुके, लेकिन आज आमने सामने जो कि इस मैदान पर। वो इस बार खेलने का प्रयास का ऑन साइड पर, बल्ले पर ऊपर हिस्से में लगती गेंद सीधी विकेट के बर्तन निकली, हालांकि शायद मौका था ये, इस समय तो इस स्टेज पर ये मौका होना चाहिए मैदान पर, एक बहुत आसान सा था, क्योंकि विकेट के ऊपर उतना मुश्किल, और हवा में छलांग लगाते तो शायद ये कैच बन पाता मैदान पर, लेकिन कैच छोटा सिंगल निकला, ऑलविन जाएगा स्ट्राइक पर, और इस वक्त फिर से वापस पुनाजी। देखिए पुनाजी की शुरुआत हमेशा आक्रामक रहती है, गोवा राज्य में एक इनके नाम पर एक शतक भी है, बल्लेबाजी में तोड़फोड़ बल्लेबाजी करना पसंद करती है मैदान पे। और इस बार फिर से सीधा शॉट,
एक बहुत बड़ा शॉट निकला छक्के का मैदान पर। शॉट के इस बार रिवर्स किया अटेम्प्ट, बल्ले के बिल्कुल बीच तो नहीं होगा, लेकिन चलिए वहां से रन बनते हुए मैदान पर। एक ही रन वहां से निकलेगा और सिंगल के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा, जबकि 18 रन पर। अब अलविंद रहेंगे स्ट्राइक पर। आखिरी गेंद पर वो छक्का लगाया जिन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ बहुत दूर गेंद निकाली, और उनके सामने अब मात्र नया गेंदबाज जो कि इस मोर्चे पर। इस बार बल्ले पर लगे विकेट कीपर के लिए मौका, और ये सफलता पहली मैदान पर। पहला विकेट निकला, टीम का स्कोर जबकि 18 रन पर। सोमेश जो कि इस वक्त नए खिलाड़ी के रूप में मैदान पर पहुंचता हुआ, जबकि टीम का स्कोर 18 पर पहला विकेट मैदान पर निकलता हुआ। रुपेश काउकर जो कि वापस अपने मोर्चे पर सामने से राउंड विकेट से, और इस बार शायद उतनी ठोसने लगे बल्ले पर, लेकिन विकेट कीपर की तरफ जाती हुई गेंद। चलिए हाफ शॉट खेलने का प्रयास आप कर रहे थे, पूना जी को ज्यादातर मौके देने का प्रयास कर रहे तो, लेकिन शायद पूना जी अभी तक नॉन स्ट्राइक पर, जितनी देर ये खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर खड़ा रहे ना, आप सफल है मैदान में, क्योंकि ये जब भी मैदान पर स्ट्राइक पर पहुंचेगा ये अटैकिंग बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करता है, और आक्रामकता ही उनका जो कि एक अंदाज रहता है बल्लेबाजी करने का। लो फुल टॉस, शॉट जरूर खेला है, गेंद निकली लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से पार, 6 रन। हम तो हो गए जमा, धीरे धीरे भागा मार, हमसे ना कभी। इस बार फिर से वाला शॉट वही आता है, इस बार बेहतरीन फील्डिंग वहां पर गौरेश द्वारा। गणेश नागवेकर जिन्होंने कैच लिया इस से पूरे गोवा राज्य में जो कि दर्शक खिलाड़ी उन्होंने बेहतरीन कैच का पूरे फुल फाइल आउट है, और वहां पर सफलता दूसरा विकेट निकलता, 2 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर मैदान में पहुंचे इस वक्त। 24 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, जबकि खेल चलता हुआ तो उसने ओवर का, और ये देखिए यहाँ से एक सफलता दूसरी, और शायद वहां से देखिए कैच का देखिए किस तरह से हवा में बिल्कुल गोता लगा, बहुत ऊंचे कद के, शायद इनके लिए बहुत आसान होगा गौरेश के लिए। ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, गेंदबाजी तो उनकी घात तक हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन आज जिस तरह से माहौल बनता सामने पुणा जी वापस रहेंगे इस वक्त स्ट्राइक पर। 2 ओवर के बाद लगभग 24, 2 विकेट नुकसान के बाद, और पुणा जी ऑन स्ट्राइक मैदान पर। स्कोर लेग सीमा रेखा पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर, लॉन्ग ऑफ पर ये कुछ खिलाड़ी इस वक्त सीमा रेखा पर तैनात है। इस बार फिर से बीट क्या पर बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर, क्या वापसी इस खिलाड़ी की गेंदबाजी में भी की रही कि इनका नाम का बोलबाला बहुत ज्यादा है, दबदबा बहुत ज्यादा है, और आज उसी नाम पर खरा उतरना पड़ेगा मैदान पर। लेकिन सामने गोवा राज्य का सबसे टॉप खिलाड़ी जिनकी गणना रहती है हमेशा, बहुत तेज खिलाड़ी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, 50 रन बहुत बार बना चुके हैं,
और इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया, वहां पर देखिए वापस सिंगल तो निकलेगा, लेकिन क्या वहां पर पहले बल्ले पर लगेगी? हाँ बिल्कुल बल्ले पर पहले लगेगी। वाइडिश गली और पॉइंट के बिल्कुल बीच में से निकल रही, जहां से रोका गया इनको। एक रन के साथ 25 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर खेल चलता हुआ। शुरुआत का पहला ओवर लगभग शायद अंदाज था वहां से 11 रन का, लेकिन उसके बाद विकी नाइक अपनी वापसी करते, लेकिन सफलता जो चाहिए उनको वो अभी तक नहीं मिलती इस मैदान में। काबिल बहुत ज्यादा कूट कर भरी काबिल मालिका भी बहुत बार ले चुके, बहुत बढ़िया 2023 साल का गुजरा। और इस बार गेंद को उड़ाया सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। एक बहुत बढ़िया शॉट, उम्दा शॉट इस वक्त पूरा जो कि इस वक्त नॉस्टैक एंड पर उनके सामने जो कि इस बार क्लीन बोल्ट। जैसा से बल्लेबाजी हो रही है बहुत दूर के वो छक्के, आक्रामकता जो कि नॉस्टैक एंड पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, और सामने विकी नाइक इस वक्त मैदान पर। इस बार बढ़िया डाइव वहां पर करते हुए बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी भी, टाइमिंग बहुत सुंदर था, लेकिन उसके साथ साथ जो फील्डिंग कवर बाउंड्री पर उसकी भी सराहना करनी पड़ेगी। लेकिन एफर्ट के भी हम 100 जोड़ देंगे, लेकिन एक रन वहां पर बनता हुआ। और अब फिर से जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर पुणाजी मैदान में आक्रामक खिलाड़ी, बहुत उम्दा खेला, जब तक खड़े रहेंगे प्रेशर बनता रहेगा सामने वाली टीम पर। और विकी नाइक को इस बात का इल्म है कि पता है कि अगर ये खिलाड़ी ज्यादा देर तक खेलता रहेगा तो बड़े शॉट देखने को मिलेंगे दर्शकों को, और बिल्कुल पूरा मनोरंजन रहेगा इस मैच में अगर ये खेलते मैदान पर आज। तो इस बार फिर सेकंड को खेलेगा, टाइमिंग बहुत सुंदर कवर पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग, लेकिन सिंगल वहां पर बनेगा, और सिंगल के साथ तो खेल चलता हुआ समाप्त लगभग इस वक्त 3 ओवर का, और 3 ओवर के साथ विकेट निकल चुके हैं, जबकि इस मैदान पर 3 और 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर 33 पर। गेंदबाजी पर निखिल मैदान पर सामने से दौड़ते हुए, सामने पुणाजी मैदान पर विस्फोटक विध्वंसक खिलाड़ी, जब भी ये 5वें गेयर में शुरू में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, आक्रामकता ही उनकी पहचान है, और वही पहचान के साथ मैदान पर। और इस बार हवा में कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन सिर्फ बनेगा दर्शक मैदान में।
गेंद निकली कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए इस मैदान पर। सीपीएल का आगाज बहुत बढ़िया उम्दा मुकाबले मैदान में। इस बार रिवर्स के अटेम्प्ट बल्ले पर ठीक तो लगे, लेकिन फील्डर के सीधे हाथ में जा रही, वहां पर वन बाउंड शायद निकल चुका हाथ में, जहां से रन नहीं बनते हुए। देखिए हर वो शॉट इनके पास रहता है, चारों दिशा में खेलना ये बहुत पसंद करते हैं, और बिल्कुल सर्वाधिक उनका अगर बताओ बात तो 100 भी उन्होंने बनाए एक प्रतियोगिता में, मतलब काबिलियत बहुत ज्यादा इनकी है, और दर्शक वही देखने के लिए आ चुके हैं इस खिलाड़ी का खेल मैदान पर, किस अंदाज में ये खेलेगा खिलाड़ी। शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग हम पर ठीक ऊपर से, और गेंद निकले लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। दूसरा चौका इस ओवर का। वन का खेल अभी तक चलता है इस टीम का, लेकिन जबकि 3 विकेट जरूर निकल चुके, लेकिन जो कि बल्लेबाजी है मैदान पर, सराहनाजनक बल्लेबाजी मैदान पर, पूरा जो ऑन स्ट्राइक मैदान में। लाइन बहुत दूर रखी है, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर रखी है, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था वहां से, लेकिन थोड़ी सी लाइन को बाहर रखा, बिल्कुल अच्छी वापसी मैदान पर। ऐसे देखा पुणा जी को कदम बढ़ाते हुए, कहा था कि अटैक करेंगे, सामने से चलकर आ चुके हैं यहां से, और क्या चतुराई भाई गेंदबाजी भी, शायद एक तेरी हो सकती, लेकिन दूसरी मेरी, कुछ इस अंदाज में बॉलिंग मैदान पर। ओ इस बार खूबसूरत खूबसूरत शॉट, बहुत उम्दा शॉट, सिर्फ देखिए इस शॉट को, सराहना करनी पड़ेगी, टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण, और इसी टाइमिंग के साथ सीमा रेखा से लगभग गेंद पार, 6 रन के लिए। ऑन साइड पर फुल टॉस को सिर्फ कलाइयों के सहारे मोड़ा, गेंद निकली मिड विकेट सीमा रेखा पर, जहां पर अपने निजी टोटल पर 14 गेंदों पर 28 रनों की वो बल्लेबाजी मैदान पर इस वक्त इस मैदान पर नॉन स्ट्राइक एंड पर, जो कि पुणे जब जाएंगे स्ट्राइक पर, और टीम का स्कोर पहुंचा 48 रन मैदान पर, जबकि 3 विकेट नुकसान पर मैदान में। पेंडी तालुका से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी, गौरेश नाम के घुंगरू इस नाम से पूरे गोवा राज्य में प्रख्यात खिलाड़ी, एकदम शांत खेला, लेकिन गेंदबाजी उनकी बहुत कड़क रहती है हमेशा, और शायद उसी अंदाज से उनको लगाएगा सामने पुणा जी के सामने इस मैदान पर। ओ फिर से फुल टॉस बनाकर ऑन साइड पर मिड विकेट पर पहला रन, बहुत तेजी खेला, कॉल उतना बेहतरीन, इसका मतलब है शायद 1 ही रन बनेगा, और शायद मामला बहुत करीब था। थ्रो अगर स्टंप के आसपास रहता तो पुणा जी को शायद जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। देखिए दौड़ चुके थे वहां से, अपने हाथों में स्ट्राइक रखना पसंद कर रहे थे, लेकिन जैसे देखा थ्रो बहुत अच्छा था, फील्डिंग की तारीफ भी करनी पड़ेगी उतनी, कुछ बातचीत होती हुई। बैटिंग चॉइस पावर प्ले में कितने रन बनने चाहिए सोच है सभी की, मैं तो कहूँगा 12-15 रन, लेकिन जो टॉप गेंदबाज है इस वक्त गोवा राज्य का सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में इनका गणना होती है, और आज वो गेंदबाजी करे मतलब घुंगरू जिस तरह से, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो 6-7 रन ही बन सकते, अंदाज है सभी का। और इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया, चूके गेंद की लाइन से, रन तो वहां पर नहीं बनेंगे। देखिए तो जिस तरह से देवगढ़ में अभी तक प्रतियोगिता चल रही है, जिस प्रतियोगिता में इससे पहले कुछ साल में सुपर ओवर में जिन्होंने गेंदबाजी की थी, बहुत लाजवाब गेंदबाजी, और बड़े बड़े दिग्गजों को एकदम शांत कर दिया था, और वो अंदाज से अब गेंदबाजी मैदान पर काबिलियत बहुत है इनके पास है। और इस बार गति के साथ ही बीट किया उन्होंने,
क्या मुझे तो लगा बल्ले पर तो शायद नहीं लगी, लेग बाइस के रूप में रन मिलता हुआ, लेकिन स्ट्राइक थी पुना जी के हाथों में जानी, वहां तो मिल चुके हैं, मतलब 1 रन बनता हुआ और 50 रन जबकि पूरे हो चुके हैं 4 ओवर और 3 गेंद के बाद मैदान पर। 65-70 के आसपास होना चाहिए टोटल, ऐसा कुछ अनुमान रहेगा सामने से जब तक पुना जी खेलेंगे। मैं 80 की तरफ कहना चाहूंगा, ये बन सकते हैं रन, इतनी काबिलियत इस खिलाड़ी के पास है। लेकिन सामने एक दिग्गज गेंदबाज वापस मोर्चे पर, और इस बार शरीर पर लगी, बल्ले पर लगने के बाद, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट। देखिए ये होता है बहुत बार, एक साथ जब एक टीम में कभी खेलते हैं ना, तो कुछ हद तक बिल्कुल परख जाते हैं कि किस तरह से बॉलिंग करनी है उनको, क्या बल्लेबाजी करनी है उनको। और शायद घुंघरू अभी तक सक्षम, और जो अनुमान था दूसरे ओवर में इनको लगाया जाएगा शायद वो नहीं लगाया। उसके बाद तो पुना जी को शांत बिल्कुल नहीं रख सके कोई भी गेंदबाज, लेकिन इन्होंने रोक के रखा है, अभी तक तो रोक के रखा है। ओ चेंज ऑफ पिच, क्या गति परिवर्तन, लेकिन गेंद बहुत ज्यादा बाहर निकली। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ और टीम का स्कोर 51 पर पहुंचा। 3 विकेट नुकसान के बाद मैदान में। माहौल बहुत बड़ा मुकाबला, बिल्कुल दिग्गज खेल। एक शायद बारदेस तालुका से, एक शायद पिंड तालुका से, 2 खिलाड़ी आमने सामने बने और दोनों खिलाड़ी अपने अपने तालुका में सबसे टॉप में से खिलाड़ी है ये। ओह इस बार क्या वहां पर हुआ, शायद लेग स्टंप के बाहर, हाँ बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर वाइट, एक अतिरिक्त खाते में। ये होता है बहुत बार कि थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है, बड़ा खिलाड़ी सामने है, शायद ये गेंद देखिए गति परिवर्तन जरूर थी, लेकिन शायद थोड़ी सी गेंद बिल्कुल बाहर निकलती हुई। बड़ा मजा रहेगा इन दोनों के बीच में, बहुत बड़ा मजा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बारी क्या सब कुछ पता है। तो कौन किस पर हावी रहेगा, अब तक तो पुना जी को सामने से रोक के रखा है इस मैदान पर। फुल टॉस गेंद, सिर्फ टाइम किया पॉइंट के ऊपर से, और गेंद पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। $56 अभी तक इस ओवर में 2 वाइट, 1-2 सिंगल और वहां से एक बाउंड्री, मतलब 7-8 रन तो निकल चुके इस ओवर में। बढ़िया क्रिकेट वहां पर हल्के हाथ से खेला, शॉर्ट कवर का खिलाड़ी बहुत नजदीक था, यहां से 1 ही रन बनेगा सिंगल के साथ।
नए खिलाड़ी के रूप में सिर्फ साथ देने के लिए पुणाजी का मैदान पर। और इस बार फिर से धीमी गेंद, देखिए बिल्कुल गेंद को उनकी तरफ पहुंचा, इसका मतलब है कि शायद पहला रन तो बहुत तेज निकला है, कॉल अच्छा है और सामने से मौका, और ये रनआउट के रूप में दूसरा रनआउट मैदान पर इसी ओवर में। देखिए 2 गेंदें हो चुकी है, 2 रनआउट हो चुके हैं, 2 रन भी मिल चुके हैं, एक वाइड, मतलब टोटल 2 गेंदों पर 3 रन निकले अपने निजी टोटल पर 36 पर, और टीम का स्कोर यहां से पहुंचा 61 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 2 गेंदों पर 2 रन आउट। क्या इनका विकेट, ओ हो उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। दो गेंदों पर स्लोअर पर उनको फंसाया, लेकिन तीसरी बार ये माफी नहीं आपको होगी। ये खिलाड़ी बहुत अनुभवी है, बहुत साल का तजुर्बा, और उसी तजुर्बे को बिल्कुल इस वक्त काम करते वो बड़े शॉट मैदान पर। और फिर से स्कोर लगा पर के ऊपर से बैक टू बैक, ये बहुत दूसरा बड़ा शॉट 6 रन के लिए। पहली 2 गेंदों पर 2 रनआउट, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के, 22 गेंदों पर 48 रनों की एक विध्वंसक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर। नाम है पुणाजी कलंगुटकर। क्या 50 रन इसी ओवर में अपने, और इस बार खेला शॉट तो बहुत अच्छा, मिड विकेट सीमा रेखा, और पहला रन बहुत तेज निकला। अब दुविधा हो चुकी है, पहला रन तो तेज निकल चुका है, कॉल अच्छा हो चुका है, सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन चलिए तीसरा इसी ओवर में रनआउट। रनआउट का कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले बल्लेबाजों को पता है कि ये विकेट ही बचाना आपको है, क्योंकि एक शॉट अगर और बनता है तो ये और सबसे बेहतरीन हो जाएगा। 49 पर अपने निजी टोटल पर, 74 पर टीम का स्कोर, और गेंदें बची है शायद क्या सीपीएल का ये पहला 50 रन देखने को मिलेंगे। सीपीएल के पहले 50 रन क्या देखने को मिलेंगे मैदान पर। सामने पुणाजी अपने निजी टोटल पर 49 पर, 23 गेंदों पर ऑफ स्टंप के बाहर निकली है गेंद, और शायद ये अगर डॉट गेंद है तो शायद नहीं। एक बार तालियां जोरदार बजे इस बल्लेबाजी के लिए। 47 रन 24 गेंदों पर, एक बेहतरीन बारी लगभग इस मैदान पर। इनिंग समाप्त हो चुके हैं और टीम का स्कोर पहुंचा इस मैच में 73 मैदान पर।
hello. This time going for the big one. Should be a leg by. 74. We were thinking that 43 was a decent total in the first innings, but having seen Punaji, if he goes like this, then it's going to be dangerous for the bowlers around in CPL edition. 74 is a pretty good total in 6 overs. Saish starting this power play over here for overlocked. Went for the cover drive. Saish, you feel that when he's coming up to bowl in his bowling mark, doesn't have that much of pace, but he's got good stature and he's quite a strong man, so he can generate that pace a little extra, and batsmen can be late at times. Entertainment is definitely guaranteed for all 3 days, just like the inaugural ceremony here. This match is also will be turning interesting if we see 1 or 2 big sixes from Kakoda boys. You can see the lower full toss ball is being tried here by Saish. This power play over always very important when you are chasing somewhere around 74, 70 plus total. Power play over is important. If you come around 15 runs per over, 15 in that, especially power play overs, then things can change in favor of the side chasing. This time he goes for the big one, Rupesh. And good piece of fielding in the deep. Just restricts the batters to a single. This is a new ball. Every innings is a new ball in almost the first over. So ball is not going to fly around. Highly rated cricketer, top batter. It's a super Spartan from Malkane. And he has got a lot of followers in Goa. When he comes on to bat, there are a lot of people come especially to watch him play. This time in the air, but just going to be a single, and that is going to be over number 1. So over number 1 very well kept away for the batters, and very well bowled here by Saish. 4 without loss at 1. Versus losers of match 2, that is Agni Avengers, and whoever loses this match is going to play the next match. So we'll take the toss after some time. Till then, interesting match. Although a lot of runs required, 17, 30 balls. Rupesh is the big hope. Oh, what a shot, what a shot. Magnificent down the ground. This is the shot that was required for Kakoda boys to get themselves going for this run chase. Sunil Sawant, as popularly known as Sano. He is very much famous among his teammates for giving them the big hits. And he has got the company of Rupesh. This time, second time in a row. What a strike. Directly over the mid-wicket region. Somebody was telling that the ball is not flying. If you hit the ball rightly, the ball will fly across anywhere at Figueiredo ground. Just need to time, just need to place it well, and just need to power it well. The Kakoda boys are on a roll with those back-to-back. And Alvino Carvalho, who is a very good cricketer of Curchorem, especially of Sheldon Panchayat, when he goes for Sheldon Blasters team in Panchayat Municipality Tournament. He is currently in good form with the bat and with the ball, but if he can strike sound like this, it's going to be dangerous signs for Alvino. Score moves on to 16. This is going to be a high scoring encounter.
Ah, take that! Just take that! Marvelous batting display here from Sunil Sawant. Well, everyone was quiet, everyone was down. If you fail that, the first over was just for 4 runs. Look at this hat-trick of 6s. Leg side is peppered by Tsono here. Score moving on to 22. Well, the runs are coming fast. The stage given for all the Curchor cars to shine like this. This is in the air. This might be an opportunity. Just mistimed. But fortune favors the brave. Just lands safely. Sometimes not timing the ball is also a blessing in disguise, which happened to Sunil over here. A single will take the score to 23. They are well on course. More 51 runs required in 26 balls. Close to around 20 runs per over, which hardly matters in tennis ball cricket. This is one more. This is one more. The most expensive over so far in CPL 2.0. Rupesh Gavkar says, if Sunil can do, why can't I do it better? This is turning haywire here for overlocked. The lock has been opened here by Kakoda boys in the second over of the overlocked bowling. Expensive one. Still a ball to go for Alvino in this over. Oh wow! Oh wow! Just wow! Just keep looking at this shot, keep seeing replay on LED and just enjoy it. This is Rupesh Gavkar at his best. 35 for the loss of 0 at 2-0, and Kakoda boys are on a roll and they are well on course to chase this. 5 6s for Alvino Carvalho. Can anyone imagine? Yes, this is CPL for you. This is CPL 2.0 and you can witness anything. You can witness 5 wickets in 5 balls. You can witness 5 6s in 5 balls, and just waiting for more surprises to come on your way. $14 runs per over to around 9.5. So Saish has been given the confidence here by the captain to bowl the next over. This is a good ball. This is a slower ball. He deceived the batsman. Just ball turning turtle. Basics of cricket not followed here. The ball will definitely turn, and it's turned. It's not been stopped here in the short fine leg region. Prithvi, very experienced cricketer. 3 runs taken here. They're surprising. So if you run hard, even 3s are possible on this ground. This was full toss ball, could not connect, straight to the backward of point region. He likes to play that switch hit, and once the fielders are inside, no ball signal. It's going to be a free hit next. Maybe overstepping the problem with him. Many times I've seen Saish overstepping in his career, and umpire was very right in adjudicating it. So clearly a no ball, and that's going to be one more free hit. Rupesh comes in the mind with free hit directly from the dressing room. You don't have to give anything free for him. 39, the score moves on to. This time, this is Rupesh for you. Don't give anything free. This is a free full toss ball, and he strikes it freely for 6 runs. The super Spartan from Malkane rages on like a bull here at
Figueredo ground for CPL 2.0. Just 29 runs required in 22. Oh my gosh. Oh my gosh. This is straight in the house. Your cars are at risk. Your faces are at risk. Be alert. Be alive. Watch the ball carefully, ladies and gentlemen. Is Rupesh Gaonkar, highest bidded player in CPL auctions 2.0 for 52,000 after one leg, and he is well on course to win them the first match. 50 already up without losing a single wicket in just 2.3 overs. Just 23 runs required in 21. They are making a mockery of this run chase. Absolute mockery. The way things are going, this Kakoda boys outfit looking very strong right at the top. And they have also got a very good company in the middle order. Vicky is yet to come. Few good batters are there. Rupesh Ajit was in the slot. This is the area that he likes. So he is not leaving anyone. He is not sparing anyone. Once he got going, you can imagine just 4 runs coming off the first over, and now the situation is 2.4 overs. They are 51 without loss. Asking run rate, which was hovering around 14 runs per over, has come down to around 6.5. That's the damage that both these openers have done. So 23 in 20. Short ball. Look at the ball flying there. This is humongous. This is top class batting from Rupesh Gaonkar. He is in a hurry. Maybe he wants a tea at this point of time. This is like something you start, a kick start, once like a diesel engine. Once it gets going, it is unstoppable. Is the diesel force, is the Spartan force of Malkarne. And Rupesh would like to get this finish very early in the 4th over itself. 17 runs required. What a strike, what a strike. Just going to get a single. And Rupesh will be happy with that because he will keep the strike of the next over. Kakoda boys, the way they are moving at the moment is looking to be just a one-sided run chase. You can imagine that 74 runs being scored in just the 6 overs, and they are after 4 overs 58 without loss in 3 overs and need just 16 in 18 balls. Jay Gocha
प्रायज हा भितर सगळ्यात व्हडलो टुर्नामेंट करता ते फातोडेच्यान हांगा आयला वो CPL पळोवपाक येवकार करता इस्माईल बाय करीम प्रमोद बाब मांद्रेकार सगळ्यांक तुमकां येवकार करता GCCची टीम ऑक्शन जातले 10th of January जे SCPL 2, 3, 4 फेब्रुवारीक SCPL घडटले आनी तांकांय बी उमेद आयिल्ली आसा CPLाचे जे एक सेटअप केल्लो आसा आनी क्रिकेट मोगी सगळ्यांक क्रिकेट बरें कोण ऑर्गनायज करता ते आवडटा त्या खातीर सगळे वाठारांतल्यान लोक हांगा आयिल्ले आसा CPL पळोवपाक येवकार करता तुमकां सगळ्यांक. So Somesh back in action. So far he has just conceded one wicket as well, 59 for 1, 15 runs required in 15 balls. But the devil is there at the non-strikers end. Till that point of time, you don't have to worry for Kakoda boys. Oh, he missed an opportunity there, Vicky. He likes to play this shot, the lap shot, as we call it. Missed opportunity, just gets a single. Leg by signal by umpire. And that will get Rupesh on strike against Somesh Durabani. Somesh hailing from Curchorem Village Panchayat has got a decent pace. A regular part of Curchorem Blasters team. And they have faced many a times against each other, Somesh and Rupesh. This is a good shot. There is no one there. There's absolutely no one. Inside out. And he plays it finally. He knows exactly where the gaps are. So now equation is well within the reach, just 10 required in 13 balls. Oh my God, this might be catch. Oh, I thought it's flying in the air. And he has not even touched his hands to the ball. It went so high, it almost touched the skies and came back. So 2 runs, a chance given here to Rupesh. So 4 overs gone, a good over here from Somesh Dodamani and a chance created as well, but very late I would say at this point of time. 66 for the loss of 1 after 4. You need just 8 runs in 12 balls. His arm, chancing his arms and hoping that he gets some wickets here and make the match interesting in the last over. And wide signal here by umpire Sadgiri Naik, Punya Palkar, Ameya Naik officiating umpires for CPL 2.0. This time played wide off the extra cover, mistimed, just getting a single. That is enough for them. They don't have to do anything silly at this point of time. Just get a single, give strike to Rupesh, and Rupesh will see what is going to be done next. I went for the switch hit. You know exactly that Punaji is bowling the leg spinners. Having a laugh out in the middle, Punaji and Rupesh, they are pretty good friends of each other, all 3 players. Icon players in most of the tournaments held across different parts of Goa and gel well with each other, but definitely the fighting spirit will be there. Punaji knows that he is just trying his luck here, trying his luck against Rupesh to get his wicket. This time Rupesh says, keep your luck to yourself. My bat will do the talking, and has done the talking and finishes off in style for Kakoda boys. What a marvelous batsman. He has shined brightly in the first game. Outstation player. He's picked up for 52,000 points, and that 52 out of 52,000, I think 10,000 has been already made worth by Rupesh. There is more to come from this Spartan of Malkane, and it's
First game, Kakoda boys win convincingly against Overlocked. I request the captain of Overlocked to please come fast here and select your team and come for the toss. Team of Overlocked Sports Club gelling with each other, and captain is requested to come here and join us to select his team, and along with Vipal Naik for the toss. Zian toss. Vipal Naik, please come. Alvino, you select your team for the second match. All the members in the squad should play at least one match in the league games. So it's time. It's time for the toss. Third game.
Agni Avengers won the toss, deciding to bowl first. So please don't take time. Please take the field immediately. Agni Avengers. All the members in your squad should play at least one game. Please, icons and owners, please note, as we had already told. जे 14 जाण तुमच्या स्क्वॉडान आसतले ताणे प्रत्येकाने एक तरी मॅच खेळिल्ली आसपाक जाय बाय द टाइम ऑफ थर्ड गेम. So umpires are out in the middle. So Agni Avengers won the toss, deciding to field first, and they are taking the field. There's still a chance for Agni Avengers and even overlocked. You never know if teams are tied at 2 points each, then it might be a bowl out. Two teams are tied at equal points, then it will be a super over. If three teams are tied at equal points, then it will be a bowl out. So all the opportunities are still open for all the teams. हम रेडी. दोनों खिलाड़ी दोनों कप्तान माफ कीजिए अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजिए हमारे पास नाम बताने के लिए. सो प्लीज दोनों कप्तान अपना अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास भेजिए नाम बताने के लिए. स्वागत वापस सभी का इस मैदान पर इस खेल में. और पहली गेंद हवाई फायर किया कवर बाउंड्री पर. एक खूबसूरत शॉट मैदान पर 4 रन के लिए. पुणा जी के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौवा और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा जबकि 4 रन पर. असल लगभग समाप्त मैदान पर. एक खूबसूरत माहौल के साथ मैदान पर यह खेल चलता हुआ जबकि इस वक्त पहले ओवर का पावर प्ले का पहला ओवर जिसमें कि पहली गेंद पर पुणा जी के बल्ले से निकला वो पहुंचा हुआ मैदान पर. इस बार बीट किया इस बार बहुत बढ़िया वापसी मैदान पर. देखिए शुरू के पहली गेंद पर भले चौवा लगा हो लेकिन क्या वापसी मैदान पर. 2 लगातार गेंदें डॉट मैदान पर निकलती भी. कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर बहुत बहुत बढ़िया.
देखिए मानसिकता को पहले बढ़ा, वहां पर देखा जैसे पूना जी थोड़ी सी चहल कर रहे हैं, शायद उनको भी भरोसा था कि ये पूना जी अगली बार कुछ हद तक आक्रामकता दिखाएंगे, कदमों का इस्तेमाल करेंगे और पहली जाना उन्होंने वहां से। सबसे अहम बात होती है हमेशा आपको गेंदबाजों को एक तौर पर आपको बल्लेबाज को पढ़ना आना चाहिए, और वही क्या वहां से गेंदबाज ने इस बार लेक्चर के बाहर व्हाइट का इशारा। अग्नि एवेंजर्स टीम जो कि इस वक्त गेंदबाजी कर इस मैदान पर, सामने पूना जी जो कि एक अच्छी बॉलिंग, लेकिन उनके अग्नि जो कि टीम के पास है, जो कि हमारे करीबी दोस्त नीलेश तारी सर, आपका फिर से स्वागत इस मैच के दरमियान। आज वो उनकी जैसे भी दिखाई देगी, खासकर आक्रामकता इस वक्त गेंदबाजी में देखने को मिलती हुई। एक वाइट जरूर डाला, लेकिन अभी तक थोड़ा सा शांत रोक के रखा है, पावर प्ले के ओर पे तो रोक के रखा है सामने से। और इस बार शरीर पर टकराई है, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, क्या फिर से वापसी मैदान पर। देखिए ऑन साइड पर एक खिलाड़ी प्रोटेक्शन दिया गया, स्क्वायर लेकर डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर बिल्कुल शुभम सिंह हमारा जो कि कैमरामैन की भूमिका में जो काम करता हुआ, उनके बिल्कुल सामने मैदान पर। गोवा लाइव कास्ट के माध्यम से आपको यूट्यूब पर ये मुकाबले दिखे जा रहे हैं। एक बेहतरीन जो कि क्लियरिटी आज इस वक्त देख सकते हैं आप, और निखिल डांगी उनके सर्वे सर्वा एक बेहतरीन माहौल के साथ मैदान पर वापस खेल। ओ इस बार फिर से गति परिवर्तन, लेकिन ये बिल्कुल बिट करते हुए कैरेबियन स्टाइल में इनको रोका गया, लेकिन एक रन वहां से नहीं, 22 के रुपए रन था वो मैदान पर, और टीम का स्कोर पहुंचा एक और समाप्ति के बाद एक 24 की मदद से 6 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि कोई नुकसान नहीं। थैंक यू डीजे। बॉलिंग टीम अपना अतिरिक्त खिलाड़ी भेजे, नाम बताने के लिए, नाम नहीं पता सभी के। फुल टॉस स्किन ऑन साइड पर स्क्वायर लेग हम के भी बगल से, जबकि गेंद वहीं पर रुकी, मतलब एक रन कॉल, अच्छा शायद मौका आउट करने का मामला थोड़ा सा करीब था, वहां पर 2 रन बनते। एवेंजर्स टीम सुप्रीस अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजे, नाम बताने के लिए, नाम नहीं पता। शिवम बॉलर कौन? दीपक इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने पूना जी का लॉन्ग आउट कर टीम का स्कोर पहुंचा इस वक्त 8 रन पर, जबकि कोई नुकसान नहीं, लेकिन एक शांत शुरुआत जरूर है। किस तरफ रहेगी अखिल, और इस बार बोल्ड कर दिया वहां से। पहले मैच में 49 रन की एक अभिजीत बारी, लेकिन इस मैच में लगभग एक 44 बारी में शामिल, मात्र 6 रन की बैटिंग लगभग समाप्त मैदान पर। थैंक यू डीजे। अब नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर मैदान पर, इस बार अच्छा शॉट कॉर्नर, शायद मॉर्गन आउट करेगा, मामला बहुत ही करीब है ये। थर्ड अंपायर की तरफ जाना पसंद करेंगे इस वक्त मैदान पर। थर्ड अंपायर की भूमिका में सदगिरी सर जो कि इस वक्त देखेंगे इस वक्त क्या पॉपिन किच में पहुंच चुके या फिर नहीं पहुंच चुके, थोड़ा सा मामला कड़ गई है। 19-20 का ये खेल, थर्ड अंपायर जो कि डिसीजन देगी इस वक्त हम देख रहे हैं आपको। और ये आउट इशारा करते हैं अंपायर, एक रन आउट का विकेट मैदान पर। थर्ड अंपायर का इशारा था हुआ जो कि आउट का, और एक सफलता वहां पर, दूसरी विकेट मैदान पर।
उसका साथ देने के लिए नया खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर स्ट्राइक एंड पर सोमेश मैदान में। गेंदबाजी में दीपक बिल्कुल इस रात के समय पर बिल्कुल जलता हुआ, इतनी बड़ी लाइटों में उसका दिखना बहुत सही है। 2 सफलता है। पुणा जी को यह आउट किया जहां से एक राउंड का विकेट, एक बहुत कुशल अच्छी बॉलिंग मैदान पर, और इस बार कट किया गेंद को वाइड गली के बगल से निकली गेंद। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद है जहां पर सिंगल निकलेगा, सिंगल के साथ खाता खोला और भरत अर्कस के हाथों में लगी स्ट्राइक मैदान पर। देखिए पहले व्यक्ति में भरत अर्कस ने बड़ा एक शॉट लगाया, उसके बाद आउट हो गए थे। एक बड़ी बारी देखने को नहीं मिलेगा। अब टीम को आवश्यकता है कि पुणा जी के लौटने के बाद एक किसी खिलाड़ी को आज पूरे ओवर खेलने पड़ेंगे। क्या वो भरत हो सकते हैं? और इस बार ऑन साइड पर बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच है। क्या ग्राउंड फील्डिंग वहां पर, सुंदर फील्डिंग, जहां से कम 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। शशिकांत ने क्या फील्डिंग दिखाई वहां से, बहुत सुंदर फील्डिंग। हालांकि कम से कम 3 रन तो टीम के लिए बचाए, और भारत अर्केस के खाते में सिर्फ 1 ही रन बनेगा, जहां से टीम पहुंची अब मात्र 2 अक्षरों में, जबकि 10 रन पर। अभी तक थोड़ा सा शांत दीपक, अच्छी वापसी मैदान पर, और इस बार शॉट को खेला गया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। दो ओवर के बाद टीम अब यहां से पहुंची, जबकि प्रति ओवर 8 रन 16 रन जो कि इस मैदान पर पहुंचती हुई, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद। दो और 16 रन, जबकि इस वक्त 2 विकेट नुकसान के बाद अब भरत अर्कस मैदान पर। जैसे नंबर 25 AB 25 ये सभी जानते हैं, लेकिन आज इस स्तर पर ये बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर रहेंगे इस मैदान पर। सोलह रन। नया गेंदबाज जो कि विपुल मैदान पर इस वक्त सामने से पहुंचता हुआ। भरत अर्कस ऑन स्ट्राइक पर रहेंगे, जो कि अभी तक अपने खाते में सिर्फ 2 रन शायद जोड़ चुके हैं खिलाड़ी। काबिलियत बहुत है इनके पास, काबिलियत बहुत है, लेकिन आज किस अंदाज में बैटिंग होगी इनकी। हो इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। एक बड़ा शॉट मैदान पर, जिसकी उम्मीद थी सर भारत के बल्ले से। चेंज ऑफ पेस किया, गति परिवर्तन बिल्कुल बीट करते हुए। देखिए कुछ हद तक ये करना होता है मैदान पर आपको, जबकि पहली गेंद तो आपने तेज डाली, उसको बिल्कुल बल्ले के बीच ही इस बार चेंज ऑफ पेस किया। भारत अर्कस ने परखा जरूर था, लेकिन उतनी बल्ले पर लेने में सक्षम नहीं रही वो। लेकिन टीम अब यहां से लेकर इस तीसरे ओवर में 22 पर पहुंची इस मैच में। बल्ले पर लगी है गेंद, निकली थर्ड मैन सीमा रेखा पर। हालांकि खिलाड़ी वहां पर है मौजूद सर्कल के ठीक पास, जहां से गेंद को उठाया जाएगा इसी 1 रन के लिए। देखिए शरीर के दूर से, ऑफ स्टंप के कितनी दूर से गेंद को खेला गया, तो शरीर के दूर से गेंद को खेला गया, जहां से आप कम से कम बल्ले पर ठोस लग तो कवर बाउंड्री के लिए ये शॉट, लेकिन बल्ले पर ऊपर लगी। लेकिन चलिए एक बड़े शॉट के बाद एक सिंगल निकलता हुआ, और सिंगल की कहानी में तब्दीली, जबकि 23 पर। ऑफ स्टंप के बाहर शरीर के बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया, व्हाइट लाइन की भी दूर से गेंद थी, जहां पर व्हाइट कैच अंपायर का पहुंचा। एक अतिरिक्त खाते में बनता हुआ, और एक अतिरिक्त खाते के साथ अब रनों की संख्या में इजाफा, जबकि 24 की हालत मैदान पर।
देखिए माहौल अभी तक ठीक ठाक है, सब कुछ अलबेल है मैदान पर। ओ लो फुल टॉस गेंद को खेला गया, सिर्फ टाइमिंग किया गेंद को, कुछ पल हवा में गेंद रही लेकिन उस बात का उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड ऑफ पीछे है और इस वक्त अगर मिड ऑफ अगर पीछे है तो वहां से आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ टाइमिंग करके भरत अर्कस को मौके देने पड़ेगा। आपको कितनी देर ये खड़ा रहेगा खिलाड़ी, उतनी देर मनोरंजन पूरा देखने को मिलेगा मैदान पर। ओ इस बार फिर से अच्छी वापसी, गेंदबाजी में हर वक्त कुछ वापसी देखने को मिल रही है मैदान में। प्रेशर उतना ही बढ़ता जा रहा है कि पता है कि 27 है ये टीम का स्कोर, आपको ये 25 है ये टीम का स्कोर, जहां से 2 ही विकेट निकल चुके, विकेट हाथ में है और ओवर्स भी बचे हैं। इसका मतलब कि आक्रामकता होनी चाहिए इस मैदान पर। कदमों का इस्तेमाल का शानदार शॉट मैदान पर, लॉन्ग ओवर कवर के बीच बिल्कुल बीच में से गेंद निकल रही है, लेकिन क्या वहां पर ग्राउंड फील्डिंग तारीफ करनी पड़ेगी, 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। सही मायने में देख बताए तो शशिकांत ने पहले 3 रन बचाए और ये 2 रन और किसी खिलाड़ी ने बचाए, मतलब 5 रन अभी तक ये सेव कर चुकी है टीम और टीम का स्कोर हो चुका है, जबकि पहले 3 ओवर की लगभग कहानी समाप्त हो चुकी है। इसमें 2 विकेट और टीम का स्कोर 27 मैदान पर। ओके वीरेश मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में गेंदबाजी पर लंबा रन है लगभग 15-20 कदमों का, उसके साथ कितनी अच्छी बॉलिंग देखने को मिलेगी मैदान पर। वो आड़े बल्ले से कुछ हद तक शॉट में वो ताकत लगा रहे थे, बल्ले पर गेंद नहीं निकली ठोस, लेकिन चलिए रन निकलता सिंगल और भारत के पास पहुंचेगी स्ट्राइक और टीम अब पहुंचे, जबकि पहले 3 और 1 गेंद के बाद 28 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। अभी तक रन रेट ठीक ठाक है, 60-65 यहां से बन सकते हैं ये बल्लेबाजी करते तो। ओ इस बार बेहतरीन टाइमिंग है, ये सिर्फ दर्शक बनेगा खिलाड़ी। खूबसूरत शॉट, सीधा गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर गेंद, 4 रन के लिए मैदान पर। चेंज ऑफ पेस, क्या गति परिवर्तन, हालांकि क्या पैड पर पहले लगी या फिर बल्ले पर लगने के बाद पैड पर लगे, लगता है सर हम पर कैसा था, बल्ले पर पहले ही लगी है गेंद, उसके बाद आसपास पैड पर टकराएगी, लेकिन उस बात का उतना फर्क नहीं पड़ा, सिंगल निकला इस वक्त और सिंगल के साथ रन गति यहां पर बनती हुई, जबकि 33 रन पर। एक बहुत खूबसूरत मुकाबले मैदान पर इस रात के समय पर। शॉर्ट गेंद, गति परिवर्तन गेंद, बल्ला बहुत तेज डाल रही है, पता है कि बल्ला इतना तेज चला रही है कि बल्ले पर अगर लगी गेंद तो वो बड़े शॉट की छाप होगी, लेकिन एक चतुरा भाई गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, गति परिवर्तन, बीच बीच में एक आध गेंद तेज, एक आध गेंद बिल्कुल थोड़ी सी लेग ब्रेक, कुछ हद तक थोड़ी सी ऑफ ब्रेक गेंद, और 2 गेंदें वो धीमी डाली बहुत लेग ब्रेक अंदाज में, जहां से शॉट को आपको बनाना पड़ेगा मैदान में। ओ आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा पर अच्छी फील्डिंग, यहां पर 1 रन बनेगा, कॉल अच्छा स्टिंगर के साथ। इस वक्त हालात यहां से बनते हुए, जबकि इस चौथे ओवर की कहानी में सिर्फ 2 विकेट निकल चुके 34 पर, 8 विकेट बचे और बल्लेबाजी ठोस है पीछे, तो अटैकिंग वो बैटिंग देखने को मिलनी चाहिए मैदान पर। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, क्या गति परिवर्तन किया उस बार, इसे देखा रिवर्स के लिए जा रहे, अल्टी पल्टी शॉट है लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ये चौथा ओवर भी समाप्त हो चुका है, 4 और 34 रन, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर।
अमीर गांवकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। अमेय जो कि इस वक्त मैदान पर, माफ कीजिए, और इस बार शॉट, बहुत ताकतवर शॉट, 6 रन के लिए मैदान पर। इंतजार का इस शॉट का, गेंद का, और इंतजार में कुछ हद तक मैं कहूंगा पूरा ओ फिर से अटैकिंग बल्लेबाजी, हवा में गेंद खड़ी हो गई, वहां से मौका, लेकिन इसी अंदाज में शायद इस मौके पर 2 रन बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल 2 रन बनते, कैच भी छूटा, रन भी वहां पर बनते। 42 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। देखिए हवा में गेंद थी, मौका था आपके पास इस वक्त। सीधा शॉट तीर की तरह निकला, हालांकि खिलाड़ी वहां पर है मौजूद, इसका मतलब 1 ही रन बनेगा। देखिए पहली गेंद पर वो बड़ा शॉट, उसके बाद 2, उसके बाद सिंगल, मतलब ये अभी तक 3 गेंदों पर 9 रन बनते हुए और टीम यहां से पहुंचे के 43 पर। क्या इस बार भी 60 का आंकड़ा पार हो सकेगा? ओहो हो, इस बार सीधी हाथ में और आउट। का मैच होगा एमसीसी और काकोडा बॉयज, ये आपको पहला कॉल रहेगा और दोनों टीमें तैयार रही है। इस वक्त कुछ चेंजेस करने तो आप यहां पर पहुंच सकते हैं। एमसीसी और काकोडा टीम जो कि इसके बाद टॉस करेगी इस इनिंग के बाद, और दोनों कप्तान हमारे पास पहुंच जाइए। इस इनिंग के बाद टॉस होगा। साइश जो कि इस वक्त मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में साइश ने जो कि स्ट्राइक करेंगे, भरत जो कि आउट मैदान पर चुके। आते ही बड़ा प्रहार किया, गेंद को लॉन्ग ऑन किया, ऊपर से खेला, 6 रन के लिए मैदान पर। फोर्टी 49 ये टीम का स्कोर, और साइश नाइक के बल्ले से निकला वो बड़ा शॉट, आक्रमण करते हुए खिलाड़ी। ओ इस बार क्लीन बोल्ट। थैंक यू डीजे। आखिरी 6 गेंदें स्वप्नेश जो की गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से रहेंगे इस वक्त। इस बार शॉट तो बहुत तगड़ा है, लेकिन कवर पर प्रोटेक्शन जो कि दिया गया, इसका मतलब यहां से थोड़ी सी खराब फील्डिंग।
जहां पर एक ही रन था वहां पर लगभग 4 रन बनते हुए मैदान पर, और 50 रन भी पूरे इस वक्त इस मैच में 53 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि 4 विकेट नुकसान के बाद। ओ इस बार टाइमिंग बहुत सुंदर, लेकिन सीधे खिलाड़ी की तरफ गेंद, और ये आउट मैदान पर। इसके बाद टॉस होगा एमसीसी वर्सेस काकोडा बॉयज। कप्तान टॉस के लिए पहुंचिए। एमसीसी वर्सेस काकोडा बॉयज, कप्तान टॉस के लिए पहुंचिए। नया खिलाड़ी जैसे नंबर 7 पहनकर। ओह बाउंस, अतिरिक्त गति, शॉर्ट पिच गेंद करने का इस्तेमाल किया, वहां पर साइज को बिल्कुल परखा वहां से। ठीक है, एक्सेप्ट भी नहीं किया शायद इसने कि इस तरह से बाउंसर आएगी आखिरी ओवर्स में, लेकिन 53 पर 5 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हुआ मैदान पर। और इस बार गति परिवर्तन बिल्कुल बीट करते हुए 2 गेंदें लगातार डॉट मैदान पर इस अंतिम ओवर्स की। 53, 5 विकेट नुकसान के बाद इस खेल में। शॉर्ट गेंद, कट गेंद को पॉइंट पर, हवा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, चाहता उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान पर, और ये आउट। चुका है, लेकिन कॉल अच्छा, लगभग दूसरा भी रन बनता हुआ मैदान पर, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर 55 रन पर पहुंचा इस इनिंग में, इस मुकाबले में, और जिससे पीछे जो कि इस वक्त 56 टू बी मैदान। देखिए काकोडा बॉयज और दूसरी टीम जल्दी पहुंचे इस मैदान पर। 55 बन चुके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त मैदान पर, जिसमें कि भरत अर्कस की एक छोटी, एक बड़ी बारी, महान बारी, जो कि इस मैदान पर जो पुनः से उम्मीद थी, वो उम्मीद उतनी नहीं देखने को मिलेगी। चलिए क्या गेंदबाजी देखने को मिलेगी मैदान पर वापस में। 55, 56 टू विन है मैदान पर। काकोडा बॉयज कप्तान जो कि यहां पर पहुंच नहीं चुका अभी तक, सामने वाला कप्तान पहुंच चुका है, सो प्लीज जल्दी कीजिए।
हेलो काकोडो वाइस कप्तान अभी तक नहीं पहुंचे, सामने वाला कप्तान पहुंच चुके, काकोडो वाइस कप्तान अभी तक नहीं पहुंचे, सो प्लीज जल्दी पहुंचे। थैंक यू डीजे। 56 टू विन है इस मैदान पर और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके। 12 मैन, सो प्लीज नाम बताए ओपनिंग जोड़ी का। शंकर और उत्तम ये जोड़ी मैदान पर। देखिए पहले मैच में शंकर ने शुरुआत तो ठोस दी थी, लगभग पहले ओवर में 15 रन जोड़े थे मैदान पर। उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी वहां पर, रन वहां पर कम हो चुके। अब शायद उस कमी को पूरा करना पड़ेगा। गेंदबाजी में शुरुआत करेंगे इस माहौल में। कदमों का समझोड़ क्या था, शायद वो बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर लगी गेंद और बिल्कुल छूकर मिट्टी को निकली गेंद, विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं। देखिए पावर प्ले में आप किस तरह से अटैक करते हैं ये बहुत अहम रहेगा। 36 गेंदों पर 55, 56 टू विन है मैदान पर। 55 बनाए पहले बल्लेबाजी करते इस मैदान पर। इस बार रिवर्स बहुत सुंदर शॉट, गेंद निकली थर्ड मैन सीमा रेखा शॉट बाहर, चार। देखिए ये शॉट जब भी लगते ना तो बिल्कुल आबाद लगते हैं, लेकिन जब भी डॉट गेंद निकलती इसी शॉट के लिए तो शायद कहीं ना कहीं वो अंदाज थोड़ा सा गलत रहता है, लेकिन चलिए काम हो चुका है। बाउंड्रीज निकली शुरुआत की इस ओवर में, पहले दे गेंद के बाद कहानी और टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 4 रन पर। इस बार फिर से रिवर्स शॉट, कवर बाउंड्री के, गेंद निकल रही है बाहर, 1 बाउंस, 4 रन। इस बार सीधा अपने फॉल्स विकेट को रोकते हुए रन नहीं वहां पर मिलेंगे। देखिए डॉट गेंद, 2 अच्छी चौवे, उसके बाद एक डॉट गेंद मैदान पर। देखिए पावर प्ले में कम से कम आप 10-12 रन चाहते हैं मैदान पर, जो शुरुआत चाहती है ठोस, उस शुरुआत को बरकरार रखने और वही काम इस वक्त करते हैं खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक शंकर मैदान पर। ऑफ टर्न के बाहर खींच कर खेलने का प्रयास किया, रन नहीं वहां पर बनेंगे। देखिए 2 गेंदों पर वो चौवे, उसके बाद 2 गेंद लगा डॉट। यही क्रिकेट है मैदान पर, हर वक्त पैर ऑफ टर्न के बाहर गेंदबाजी हो रही है, इसका मतलब पॉइंट पर पीछे खिलाड़ी रखा गया, लॉन्ग ऑन पीछे रखा है, बाकी एरिया जो मिड विकेट है ना कवर खाली रखा है और वही अंदाज से गेंदबाजी। इस बार ऊपर के गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर जहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जो कि एक ही रन बनेगा और एक रन के साथ काकोडो बाइस टीम ने पहले टॉस जीता और उन्हें कहा वो गेंदबाजी करना पसंद करेगी। इसके बाद जो मुकाबला होगा उसमें और टीम पहुंचे 1 ओवर, जबकि 9 रन, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। जो कि स्वतः स्ट्राइक करेंगे शंकर के सामने नया गेंदबाज जो कि इस मैदान पर सोमेश मैदान पर 56 का लक्ष्य है सामने से, 9 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पर, छू के गेंद की लाइन से डॉट गेंद निकलती हुई। देखिए शंकर ने हर वो प्रयास किया, पहले एक चौवा रिवर्स का, उसके बाद वो बिल्कुल दूसरा रिवर्स, उसके बाद लगातार कुछ 2 गेंद डॉट, उसके बाद वो सिंगल, सब कुछ उस ओवर में नाटक मैदान पर। 9 रन पर अंतिम 7 गेंदों पर, जो कि प्रति ओवर 9 रन आपको जोड़ने हैं मैदान में।
शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। अग्नि एवेंजर्स टीम जो कि बहुत अच्छी स्थिति में अभी तक, क्योंकि 3 लगातार जो कि इस वक्त अभी तक इस इनिंग में तीनों जो चौके लगे ना, यहां पर शंकर के बल्ले से एक अच्छी बल्लेबाजी, शुरुआत ठोस है मैदान पर। ओह, क्या वो गेंदबाजी लेग स्टंप के बाहर है, हाँ बिल्कुल वाइट। गेंद को छोड़ा वहां से। अग्नि एवेंजर्स टीम के सपोर्टर, युवा ब्लड के कुछ हद तक बहुत से आ चुके हैं यहाँ पर, दर्शकों में बैठ चुका और उत्साह विश्वास करते हुए उनके साथ अब हमारे करीबी दोस्त भी यहाँ पर नीलेश तालेसर भी पहुंच चुके। पूरा लुफ्त उठाया जा रहा है इस मैच का, पूरा आनंद उठाया जा रहा है इस मैच का। और इस बार खींचकर शॉट को खेला गया, जरूर ऑन साइड पर ताकत उतनी नहीं है, लेकिन रन वहां पर सिंगल निकलेगा। सिंगल के साथ जब तक थ्रो पहुंच पाएगा नॉन-स्ट्राइक एंड पर, टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा 15 रन पर। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक उत्तम ने कोई भी गेंद नहीं खेली है, जो कि दूसरे ओवर की ये गेंद हो चुकी है, शुरुआत दूसरे ओवर की। और उत्तम ऑन स्ट्राइक मैदान पर, फुल टॉस, पहली गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच, गेंद को खेला ऑन साइड पर, लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। उत्तम के लिए एक फुल टॉस गेंद, एक आसान गेंद, जहां पर अपना खाता खोला उस चौवे के साथ मैदान पर। इस बार फिर से ऑन साइड पर खेलेगा प्रयास, यहां पर शरीर पर टकराती गेंद, हालांकि उतना विश्वास नहीं दिखाते वहां पर सामने से। देखिए गेंद बिल्कुल सटीक थी, शायद लेग स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर थी, पैड पर लगी है, लेकिन मंशा साफ है उत्तम की, क्या अटैक ही किया जाए मैदान पर। देखिए जोड़ी जब तक खेलेगी तब तक इस मैच में बहुत आसान है ये बल्लेबाजी करना, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी उतनी अच्छी बॉलिंग है, लेकिन जब तक विकेट हाथ में है तब तक ये मैच सामने से मुश्किल है दूसरी टीम के लिए जो गेंदबाजी कर रही है। चेंज ऑफ पेस किया, हालांकि गलती परिवर्तन, तो एक बड़ी बाउंड्री के साथ लगातार 2 गेंदे डॉट मैदान पर, और उसके साथ ये और भी समाप्त हो, पहले 2 ओवर की कहानी लगभग समाप्त हो चुकी है। 19 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, 56 टू विन है मैदान पर। अंतिम 24 गेंदें बची इस खेल की, और जीत से पीछे यहां से लेकर बैटिंग जज पावर प्ले का इशारा मैदान पर पहुंच चुका है। 24 गेंदों पर 37 रन, जिससे पीछे पूना जी के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा इस वक्त मैदान पर, और 24 गेंदे 37 जिससे पीछे इस मैदान पर। शंकर ऑन स्ट्राइक रहेंगे इस मैदान पर। क्या वो ये और बड़ा होगा इस मैदान पर? ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खेलने का प्रयास वहां पर दूर से करते हुए, देखिए तो ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, लाइन बिल्कुल अच्छे परखा वहां से। देखिए 3 ही खिलाड़ी पावर प्ले में बाहर रहे सतीश में इरादा से, तो 2 खिलाड़ी जो कि ऑन साइड पर मिड विकेट और स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन पर 3 खिलाड़ी वो इस बार बल्ले पर लगे, निचले से बल्ले लेग स्लिप के खिलाड़ी तरफ पहुंचे। 1 रन निकले, इशारा बहुत अच्छा है, लेकिन उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पहुंचेगी शंकर के पास, और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचे जबकि 20 रन पर।
थैंक यू। 36 रन अभी भी जिससे पीछे अंतिम 22 गेंदों पर। ओ शायद ऑन साइड पर उतनी ताकत नहीं जुटा 22 गेंद पर, लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ स्ट्राइक वापस पहुंची शंकर के पास। अभी तक पार्टनरशिप देखिए इस जोड़ी के बीच में, जो कि 21 रन की भागीदारी इस जोड़ी के बीच में। यहां पर 3 गेंदे हो चुके, सिर्फ 2 रन निकल चुके इस मैदान पर। कदमों का इस्तेमाल किया, खूबसूरत, बहुत उम्दा, आला किस्म का शॉट मैदान पर, सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। रनों की भागीदारी समाप्त हो चुकी इस मैदान पर। This time just gets a single. That will finish over number 3. 28 for the loss of 1. So in comes Somesh. Somesh to Ramani, 28 runs required in 18 balls. Very interesting match here. Just 1 wicket has gone down. Inside is Swapnesh Veripur is an Australian player that was opted here by Agni Avengers. And is a fantastic player from Bali. Plays for Cowboys Bali in a Panchayat level tournament. A fine player, and they need his services at this moment. This is not going to be easy run chase. This is going to go right down the wire. They need innings of substance, at least 10 to 15, especially from one of these two batters. Uttam on strike. Very well left here, understanding that he's going to get an extra ball. Every run, every wide, every extra run is cheered here by Agni Avengers. They know they have to win this match to stay in the race of semi-finals. A win here will give any of the team boost, believing in themselves that yes, they can certainly qualify by winning the next match. This is in the air. This should be a catch, and oh, lucky. Absolutely lucky, falling in between both these fielders. They tried hard to take this catch, not timed, surviving this onslaught from Somesh Rabani. Is fighting it, he's bowling with pace, bowling with zest, bowling with heart. He wants to keep his owner, he wants to keep his franchisee alive in this competition of CPL 2.0.
25 runs required in 16. This time coming down the track, a little shimmy. And sometimes you have to do it. There might be one or dot balls, but you have to be one up against the bowler. The competition is very fierce in CPL 2.0. And you cannot be predictable as a batter or as a bowler. This time just flicks it away on the leg side, intended to go for a couple, and they are taking a couple. This is brilliant. This is brilliant batting. This is the kind of batting that is required. It's not all about boundaries and sixes. Sometimes you have to be innovative. Sometimes you have to be smart. Sometimes you have to be cheeky, just like the situation. 23 runs required in 14. This time a good shot straight on the ground. The two fielders covering and good dive, very good dive. He overran the ball and understanding that the ball was going behind him, dived. This is the effort by all the Curchorem players. They know that the spotlight is on them. It's the Curchorem Premier League Season 2.0. And a lot of their players, family members are watching this match. A lot of live viewership on Goa Livecast at the moment. Trying to be cheeky. Appeal here from Somesh Dulabani, but there was nothing, absolutely nothing in it. It was just an excitement. So pretty decent over here coming us at the end of 4 overs, 35 for 1, 21 required in 12 balls. This is nicely played. This is in the air. This might be 6 runs, and it went. Oh, he was all in the position for a while. Thought like he's taking the catch, but just bounces off his hands and goes for 6 runs. Just enough is good enough. This is going to be one more, and Shoto is striking, and Shoto is striking big in CPL 2.0. Just at the moment, just 9 runs required in 10 balls. Albino has been expensive. Oh, he went for one more, just missed. The most expensive bowler so far. You can imagine this is the cricket. This is a great level game of great uncertainties. You were just a hero last week and not having a great outing in CPL 2.0 as a bowler. Once again, good shot. There is a man in the deep. They have kept the boundary riders very well here. They just cannot stop a single. Asking run rate has got down close to around 6 runs per over. Need 8 in 8. Very good matches here in CPL 2.0, where previous game it was a high scoring encounter of 75 runs, which was chased easily by Kakoda boys, and now it is even Stevens in the third match.
Swapnish Whip on strike. Going for the switch hit, ball went nowhere. They have kept a man for the switch hit in the backward point region, deep point region. They know exactly that he likes to play this shot. Not easy sometimes to play the switch hit when you are doing it as a premeditated option for you. Once again, might be looking for a cheeky single, and we have to wait for the umpire signal. Where's the leg by? This is not intended, says umpire. He didn't know where the ball had gone, and a single to finish over number 5. 49 for 5. And has to wear these netted jerseys if he wants. We just want to set a game of cricket where everyone comes and everyone loves. Something new has to be tried, something new in a presentable manner, something new in a fashionable manner. Goes for the big one. This might be 6 runs. Yes, it is. Yes, it is. That's enough. And that's it. Agni Avengers will certainly come closer to the target. Just 1 run required. Just 1 run required here. GCCच्या सगळे मेंबर्स जे फातोडेच्यान हांगा आयल्या मॅचीस पळोवपाक येवकार करता तुमकां सगळ्यांक फाल्यां बी येवचें तुमी आनी मॅच पळोवची. And that might be a chance, and taken. Finally, anti-climax here. Sapnesh went for the big one, getting a top edge and taken at the short tournament region. So he has done his job fabulously for Agni Avengers, getting them close to the target, just 1 run away. Next match is going to be blockbuster. Team MCC and Team Kakoda boys. Both teams hailing from Kakoda, and 2 owners who are pretty good friends of each other, but it's going to be rivalry out in the middle. Nothing about friendship when you are going for the glory like a trophy which has been kept in front of the pendle. Everyone is fighting for that. Kakoda boys won the toss, choosing to bowl first. That's up next. Welcome Tushar Kalmarkar here in the commentary box to watch this live update. Just 1 run required. Oh, that's cut him into half, but that was enough. That goes for 4 runs, and Agni Avengers win their match comfortably in the last over. Congratulations, Agni Avengers, and overlocked are still locked in their dreams. So आता टाइम आयला पयले मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच दिवपाक. ओके आता टाइम आला प्लेयर ऑफ द मॅच पहिल्या मॅचीचो, आणि पहिल्या मॅचीचो प्लेयर ऑफ द मॅच साहिल गांवकर ऑफ टीम MCC. आणि हो प्लेयर ऑफ द मॅच इतलो आमचो वेन्यू आणि ऑक्शन पार्टनर जो ओदोच्यान हांगा आसा, क्रिकेटीचो मोगी. लास्ट टाइम CPL 1 आमचो रनर्स अप रुद्रा अवतार्स, जी टीम जबरदस्त खेळिल्ली, रनर्स अप जाल्ली. आणि दितलो राजेश बाब काकोडकर
आमचो एक बरो मगती जाणें आमकां मदत केल्ली आसा ह्या टुर्नामेंटाक, आमचो पार्टनर, वेन्यू पार्टनर आनी ऑक्शन हॉल पार्टनर. ह्या सगळ्या आमच्या पार्टनरा खातीर येदो व्हडलो टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडपाक शकल्या. आनी देव बरें करूं तुका राजेश, देव बरें करूं तुका राजूभाई. Just Sahil batting kota. Okay, so I'm calling the player of the match in the second game, Rupesh, and he's playing as well. In the third game is Swapnesh Verip. So Swapnesh Verip to player of the match असा आदल्या मॅचीचो आत्ता जाल्ल्या त्या स्वप्नेश वेळीप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जबरदस्त खेळ्ळो. स्वप्नेशाक रिक्वेस्ट करता मातसो हांगा स्क्रिनी कडेन येवचो आनी तुजो प्लेयर ऑफ द मॅच जो आसा तो घेवचो, कारण पयली दोन आसात ते अवॉर्ड ऑलरेडी टीम्स खेळटात. जो साहिल आता ओपनर वता आनी तसोच रुपेश आसा तो ग्राउंडार आसात. ते मागीर दितले थर्ड मॅचीचो प्लेयर ऑफ द मॅच स्वप्नेश वेळीप. मातसो यो राजेश काकोडकर जाणें आमकां खूब हातभार केल्लो आसा ह्या टुर्नामेंटाक, तो एवॉर्ड दितलो स्वप्नेश वेळीपाक. So it's a player of the match award. You can see Rajesh at the background as a venue partner. So congratulations Swapnesh Matsarao. And now it's time for the countdown. So here goes the countdown before the start of the match. Requesting everyone to see. Starting now. Here is the countdown. This is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the game. Thank you. So now it's time to concentrate on this match. This was the countdown of all our partners. We had taken the videos and a countdown was created by all the partners, and this was also seen on Goa Livecast along with the screen provided here. Thank you to all the patrons, thank you to all the partners who have helped us to get this tournament in start, Kakula Boys versus MCC match. What a good shot, what a lovely shot here. Just using the depth of the crease, ball has got enough legs to go for 4 runs. So Vicky, in spite of bowling a first dot ball, has been taken for 4 runs. Power play over has to be used for maximum. This time straight back to the bowler. And Vicky, as you know, recently he was a part of the winning tournament as an Australian player in Pan Am Premier League. So they won that trophy. He is franchisee. A highly rated all-rounder from Curchorem who goes as an icon player all across Goa and outside Goa as well.
Oh, this is India. This might be a difficult one. This is a skying, and oh, he has taken. What a catch! This was a difficult catch. I also can't believe he was in no position absolutely whatsoever, but he hangs onto it. In comes Mohit Gaonkar. This time a leg by single to the score. Score is 5 for 1. Just the first over in progress. They already got 1 wicket. Now these are the same players that won them match quite comfortably. Sahil Gaonkar, player of the match in the first game, along with Mohit Gaonkar. This is India. That's a good shot. He plays very well on the offside, just lifting it over the head of the long off region fielder, and a good piece of fielding. Magnificent fielding, just restricting the batters to a couple. This is the intensity. This is the commitment that is required to win an event like CPL 2.0. You just cannot be lackluster. The fielding is the most important aspect, and you have to be absolutely bang on in the first game itself. The first over gone is 7 for 1. MCC Kakoda. Requesting our partners of this tournament, if at all you are there here somewhere watching the matches from the road, from wherever you are seated, you are requested to please come in the pendle and have your esteemed seat. All the partners of CPL, all the sponsors of CPL. You are as valuable to us as all the players, as all the owners. We don't know where you are seated, but if at all any of our partners are listening to me, please come and join us here in the commentary box. In comes Gungru, Gaudesh Nagwekar, one of the top all-rounders in Goa at the moment, hailing from Padne, coming all the way from Padne to Curchorem to showcase his talent for all the Kurchakars and all the people of Goa in CPL 2.0, and here is up against Mohit Gaonkar. Oh, that's clean bowled, and Gungru strikes. Mohit has to depart. The outstation player taking and getting rid of the outstation player.
the victory runs, the 6 runs in the previous game. And he's up against the top all-rounder, one of the fastest bowlers in Goa. Let's see how he faces him. It's going to be a battle to watch. Very nicely played, very watchfully played, carefully played, and there is a no ball from the umpire. So this no ball, and it's going to be a free hit next up. Very alert umpires. You got to be absolutely bang on with the rules and regulations. 9 for the loss of 2 in 1.1. Here is the opportunity here for Sahil. This is a free hit, hailing from Darbandoda, and has many accolades, many men of the series awards, bikes on his name, bicycles on his name, and a very talented cricketer, plays very well on both sides of the wicket. That's a lovely shot. Half stop here, but certainly cannot stop the 2 runs. Although even if the catch was taken, still would have been not out, as the free hit was on. 2 runs added, score is 11 for the loss of 2. This time wide down the leg side, slightly straying down, trying to bowl with a lot of pace. That's a good shot. That's a fine shot. What a lovely shot, inside out, finding the gap with ease, with beautiful timing and beautiful flare of the bat. This time it's going to be single. We are focusing on this match at the moment, where it is 17 for 2 in 1.4 overs. Pretty good run rate at the moment. Trying to play that shot that he likes on the leg side, but this is little bit more pace than he's used to. It just takes time to adjust in the intensity of the light. It's not easy when you are not a regular goer, but so far he has done a fine job, RJ. And there are a lot of overs still left in this match. A lot of time still left. This is in the air. This is not time. This might be a chance. Just going above his head. They might be thinking of a couple, risking a run out. Oh, this was not required. Actually, it was call of Sahil. Sahil called it for the second run, and what a lovely throw. Just next to the bowler, and he just removes the bails. So Sahil has to depart.
comprehensively thanks to Sanil Sawant and Rupesh Gaonkar. 18 for 3 in 2 overs, and Gaurish comes on strike. Oh, what a hit! What a magnificent hit! This is switch it, and switch it off is best and class. Well, he's taking on Vicky. That's not easy. Not easy at all. But CPL 2.0 is also not easy. If you want to shine, you want to do something extra. You want to create, you want to innovate, you want to rule. Be at your best. 6 and score moves on to 24 for 3. This time comes back nicely. He bowls that quick off cutters, sometimes the leg cutters. If you pick it from the hands when he is juggling that ball in the hands at his bowling mark or during the last delivery stride, and you can gauge something. Otherwise, it's very difficult to pick for most of the batters around. Cleaned him up. Cleaned him up. You can see that LED wickets lightning. That is an indication that the batsman has to depart. Batsman looks to be Mandar. Requesting an extra man, 12th man or 13th man of MCC to please come here in the commentary box, and so is Kakoda boys. W Sawant, you are requested to send your 13th man here in the commentary box, and also Prajat Naik. Meanwhile, the match continues. Oh, you can see this slow leg cutter, the ball rising up, trying to defend and just getting the single but off the leg by. Surprising. 25 for 4. Still the third over is in progress. Kakoda boys, 13th man has come over here in the commentary box, expecting the 13th man of MCC. Trying to sweep it on the leg side, and I think that was a off cutter that went away from the left hand. That is a very effective delivery, especially against the players who are strong on the leg side. Dot ball in the third over. This time it is too wide, says umpire, raising both his arms, signaling wide. Moves the score to 26. Both these have very good bowlers, and certainly somewhere around maybe 55-60 runs is going to be a fighting total. And once again, Vicky finishes off in a very good fashion. 3 overs gone is 26 for the loss of 4 wickets. तशेंच आमचे हांगा स्टॉल्स आसात. तो रूट 1 म्हळ्यार सनेडुकुला, सो आमच्या स्टेजीच्या रायट सायडीच्यान खुबशे जेवण तुमकां कटलेट्स, रस आमलेट, आमलेट पाव, चिकन, च्या जाय ते मेळटा.
आनी रातचो टायम म्हाका दिसता खूब जाणांक खावपाक भुकूय लागता, सो येवचो आनी तुमकां जाय तें तुमी घेवचें. Rupesh, not only is a good batter, but he is a smart bowler, especially when he bowls for his Panchayat team. He had an outing in Sanodim Boys tournament in the morning, and now he's playing here in CPL 2.0. That's a good shot. There is a man placed there, and missed by the first fielder, but there was a good backup by the long off region fielder, and just 2 runs conceded. 28 for the loss of 4 in the 4th over. This time in the air, this should be an easy taking, and one more wicket goes down back to the pavilion. Mandar goes back, 5th wicket going down of team MCC. The advantage with Kakoda boys is there is Australian player who can bowl. There is Australian player from Sange Kepe Darbandura region, Rupesh Gaonkar, who can also bowl that 1 over. And Vicky, as an icon player, can bowl those 2 overs. So that 4 overs are almost covered up. Then remains in the 5th and 6th over. That's the reason why Bablu Sawant was opting for the 2 bowlers option. This is in the air and an easy catch. Ganesh walks in and walks back without troubling the scorers, trying the flick shot, but he has to depart. So it's all Kakoda boys at the moment, all over MCC. Gandhar, the emerging player of the tournament in CPL 1.0 as a bowler, now comes on to bat. Chance for a hat-trick. This is the hat-trick ball from Rupesh. Can he be the first one of CPL 2.0? Oh, there was a chance there. Inside edge, could have chopped onto the wickets, or could have been a chance for the keeper as well. Lucky to survive. Kakoda boys certainly doing a fantastic job as far as the bowling is concerned. 29 for 6. MCC reeling at the moment. They have taken the catches. They have come back strongly. And still RJ there on the wicket. There's the big hope for them. There are still 13 balls left. In 13 balls, we have seen magical things happening. 1 over, 1 good over in a game of 5-6 overs can change the entire scenario. And expecting a wide, it was well within the guideline, and dot ball to finish that over. Number 4 is 29 for the loss of 6 wickets, and just 2 overs left for MCC to put a good total on the board. So in comes Nikhil Naik.
In comes the first ball of the fifth over. Score has not moved anywhere after the first 2 overs. Goes for the big one. This has just gone high. Did not time it well. And Saish wants the strike. He is the better compared to the two at the crease. And he feels that now is the time to take the responsibility on his shoulders and get some runs under his belt and for the team as well. The important part is to be there on the wicket. Just 1 over can change the entire complexion of this match. 30 for the loss of 6, 4.1 overs. Kakoda boys have done a fabulous job as far as all bowlers are concerned. Nikhil is ready to bowl the next ball. This time it was wide. The intention is to bowl outside off stump to the left-hander, not trying to bowl on his legs, on his body. And that is the ploy that has been used by all the bowlers of Kakoda boys. Now there is a field change, mid-off going to a long-off region as the bowler bowled slightly wide. Oh, missed the opportunity there. That was a short ball. Could have taken advantage. You can see the reaction there. He knew that that was a ball to take the advantage, but gets a single. Score moves on to 32. Now Gandhar will be on strike. Once again, they are missing the sweet part of the bat. And another single. So Nikhil comes. Nikhil also bowling decently. 3 balls bowled and just 3 runs given away. In fact, 4 runs as 1 was an extra added to the total. 33 for the loss of 6. This time, short ball option chosen by Nikhil, surprising the batter. And 1 for the over. That is a surprise there from Nikhil to Saish Naik. Still 2 balls left. They need to get somewhere around 45, at least a 50. They have got a pretty good bowling lineup as MCC Kakoda. This should be wide. It was very well left, too wide. So mix over here so far. He's bowled few dot balls. He has considered few wides. Crowd are also waiting anxiously that they are expecting something to happen here. Some fireworks from the left-hander. The ferocious batter plays regularly on this ground. This time, once again, the sweet part missing. Another single. Nikhil can hurry on to as a batter. Bowl decent line. Used to bowl in the leather ball cricket as well, sometimes back. And that's the reason why he has got that long run-up. Once you start with that long run-up in your career, it just remains in your lifetime. Some try to change it in the due course of time with age. So again, no sweet connection so far they were waiting for, and they are looking for a couple, and they get the couple comfortably. And that's a pretty good over end here for Nikhil. At the end of 5 overs, the score is 37 for the loss of 6. As United Brothers and so Fireside Floodlight
टेनीस बॉल टुर्नामेंट जो चालू आसा शिरफोड हांगा. सो कोणी इंटरेस्टेड आसा 25,000चे पयले इनाम तशेंच बाकीची हेर इनामां आसात. सो अंडरआर्म खेळपी जर कोण आसा जाल्यार ताणें डेफिनेटली थंय आपली एंट्री नोंद करची. In comes the last over. And that's it, out. A struggling innings from RJ comes to an end. You can see the LED wickets shining brightly. That shows the end of the batter. So one after the other. Digambar Mazgaonkar strikes, and in comes Chandresh Desai. Well, he has played a lot of leather ball cricket, tennis ball cricket, a lot of tournaments, and can strike big. Cho is a popular face. Cho strikes, he gets a big one. Well, Cho should have come a little bit earlier than the position that he has been sent. He has been at number 9, which is very surprising. 43 for 7, still 4 balls left for Cho. Can he get them past 50? Digambar will be under pressure now. Cho ready to go. Oh, this was a quick ball. This was a quick ball here off the legs. Well, sometimes you knew as a keeper and as a bowler that it was off the legs. He's just trying to be smart here, one up against the umpire. These are GCA registered umpire here for this CPL 2.0. This time Cho once again strikes, looking to get the strike. You see Vicky there. There's the experience. That's the experience of playing in a lot of tournaments. He didn't throw there. He just came along with the ball and just restricts the batter to a single and keeps the Cho off a strike at the non-striker's end. That was the plan from Vicky. That is successful. 44 for 7. Just 2 balls left. This time, this might be a good connect. No, it's straight in the hands. So that is one more wicket going down. 44 for the loss of 8. MCC just lacking the power, just lacking the timing. Gandhar departs. Once again, this is the last ball of the innings. They might be looking for a couple there. Good throw straight to the keeper. And that's it. One more going down. So 9 wickets down after playing all their 6 overs. And they managed to get a total of 45 runs. So 45 for the loss of 9. 46 is the target.
So all the partners of CPL are seen on the screens, right from Honorable MLA Shri Nilesh Cabral, who is the title sponsors, Rohan Gams Desai, GCS Secretary, the co-sponsorer. Varun Beverage is the official beverage partner. And all the sponsors. Rajas was one of the sponsor who is a venue partner along with the auction partners as well. And many other. Varun Kurchadkar, associate partner, along with Pradeep Naik. So all these partners of CPL are there to be seen on the screens, their photos, their videos, and also going on Goa Livecast. 46 is the target, and in comes MCC. The next match will be played between MCC and Overlock team. Till then, we have to wait for this match to get over for the toss of the next match. And people are waiting anxiously to see whether MCC can defend this, as they've got the bowling line covered up. But people very well know, as the cricket enthusiasts, Kakoda boys have got a strong batting order, especially top heavy. If one of their toppers click, then it's going to be over within no time. Batsman Macha Beginio. And over to Krishna Devji. नमस्कार, वापस खेल मैदान पर चलेगा इस वक्त पावर प्ले की शुरुआत इस मैदान पर। ओ अच्छी गेंद सटीक यॉर्कर खुद के निकाला, गेंद को हल्के से ऑन साइड पर सिर्फ टाइम किया गेंद को 1 रन के लिए। बढ़िया वापसी वहां पर। पता है कि थोड़ा सा रुकना पड़ेगा पावर प्ले के इस ओवर में, क्योंकि जिस तरह से खेल चलता हुआ यहां से तो बिल्कुल एक ओवर अगर 15-20 का निकले तो मैच बहुत आसान होगा इस मैदान पर। हल्का सा अपील इस वक्त शायद हम की तरफ देखते हुए। तो सब प्रेशर होता है इससे मैचेस में, जब आपके सामने ज्यादा तो टोटल ना हो। 46 रन जिससे पीछे, तो इसका मतलब है कि आपके पास उतना बड़ा टोटल नहीं है, तो शायद थोड़ा सा वो प्रेशर बनाने का शुरू में प्रयास करते हुए। प्रेशर उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास विकेट ना निकले। इस बार बहुत बढ़िया सिंगल वहां पर निकलता हुआ। इक्का दुक्का बनने के बाद एक बड़े शॉट की अब तलाश करनी पड़ेगी पावर प्ले के इस ओवर में। और रिवर्स खेलने का प्रयास किया, अपना बिल्कुल पोजीशन तो जरूर बदली, लेकिन शायद मौका। मामला बहुत संगीन था, बहुत कड़क था ये निशाने पर लगता ना स्टंप को, तो शायद 19-20 का खेल था इस मैदान पर। तीन पर पहुंचा टीम का स्कोर। थोड़ा सा दबाव शुरू में पावर प्ले के इस ओवर में, जहां पर रन बनने हैं।
और इस बार हवा में खेला गेंद को, गेंद पावर पॉइंट पर हवा में निकली गेंद, शायद गेंद ने काटा बदला, सिर्फ काटा नहीं, वहां से गेंद निकल रही सीमा की तरफ, उतनी बढ़िया फील्डिंग। यहां पर एक रन था, वहां पर 2 रन बनते इस मैदान पर। और एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर मात्र मैदान पे पहुंचा 5 रन, जबकि कोई नुकसान नहीं। पहले मैच में कुशल बॉलिंग, लगभग दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन देकर एक सफलता, इतना बेहतरीन माहौल उनका। लेकिन आज आमने सामने बड़ी लड़ाई मैदान पर, ऑफ स्टंप के बाहर इनको हल्के से खेला, शायद वहां पर थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है, मतलब एक ही रन बनेगा, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर मात्र मैदान पर पहुंचा, जबकि 6 रन पर। इस वक्त हालात थोड़े से बिखरे, पता है कि यहां से ये जोड़ी जितनी पार्टनरशिप करेगी उतना आसान होगा मैच को बनाना, और एक विकेट की तलाश रहेगी सामने से मैदान पर मोहित को। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास वहां पर, क्या चूक है इनकी लाइन से। देखिए दबाव, उतना प्रेशर है मैदान पर कि रात का समय लगभग 12 तो बज चुके, 12:19 हो चुके, मतलब बड़े इस वक्त टाइम तो हो चुका है, लेकिन शायद उसलिए हवा थोड़ी सी बिल्कुल हवा में नमी छा चुकी है, और शबनम भी है साथ में। इस बार हल्के से गली पर मोड़ा गेंद को, ये रन अब थोड़े से महंगे हो रहे हैं। पता है कि जितनी दी उतनी होगी, उतना ही बाद में बैटिंग करना शायद मुश्किल रह सकता है, लेकिन इस टीम के पास वो प्रतिभा है, ये कभी भी 5वें घेर में बल्लेबाजी कर सकते, इतनी काबिलियत इनके पास है। वो ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, क्या वो लेग स्टंप के बाहर है? हाँ बिल्कुल वायर है, वाइट का इशारा मैदान पर पहुंचता हुआ। टीम का स्कोर पहुंचा 8 रन पर। 36 गेंद 40 का ये टोटल सामने से। इस बार ऑन साइड पर फ्लिक ऑफ द रिस्क करेंगे सारे मोड़ा गेंद को, टाइमिंग उतनी ठीक नहीं है, लेकिन बैकवर्ड्स को लेग स्लिप पर जो कि खिलाड़ी मौजूद है, जिन्होंने इनको आराम से उठाते हुए, देखिए इतना इक्का दुक्का बनाते जा रहे। पता है कि रन रेट उतना दूर का नहीं है, एक ओवर अगर 10-15 का निकले तो मैच आराम से बन सकता है, इसलिए विकेट भी चाहिए साथ में हाथ में, ये कुछ प्लान है इनका। ओ इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ला आखिरी क्षणों में डाला, वहां से बल्ले को गेंद लगी, विकेट कीपर की तरफ गेंद निकली। हालांकि विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटी वो बात अलग है, लेकिन वहां से सिर्फ छूटी नहीं, रन भी बना वहां से। रुपेश इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, वहां पर चूके गेंद की लाइन से, हल्का सा अपील मैदान पर। देखिए पहले मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी खिलाड़ी की, पहले 2 ओवर का खेल समाप्त, लगभग 5 रन प्रति ओवर, जबकि 10 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। वापस खेल, चलिए क्या होगा इस वक्त, अब हाथ खोलने का क्या अवसर रहेगा इस ओवर में, क्योंकि पता है कि अब थोड़ी गेंद को पूरा नहीं हो चुके, शायद कुछ है तो ये भी प्लान होगा, नई गेंद से आसान नहीं होगा बड़े शॉट खेलना इस वक्त, क्योंकि हवा में नमी छा चुके, शबनम जो कि आ चुके, थोड़ी सी ओस भी गिर रही है, इसके कारण शायद बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं रहेगा। इस बार बल्ले पर लगी है, सिर्फ नहीं बल्ले पर, स्टंप पर भी लगी उसके बाद जाकर, और सफलता पहली जो कि आउट मैदान पर।
थैंक यू। विकेट राइट के रूप में नया खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुका है, जिसमें काबिल बहुत अच्छी है और गुणवत्ता इनके पास भी है। आते ही बड़े शॉट के जाने का प्रयास किया, बल्ले पर ही लगी है गेंद और विश्वास जताते हुए विकेट कीपर सफलता दूसरी इस ओवर में। CPL 2.0 की इस वक्त ये पहली हैट्रिक हो पाएगी, ये देखना पड़ेगा मैदान पर। अभी तक हैट्रिक हुई नहीं है, एक बार मौका आ चुका, लेकिन ये आज के दिन पर ये दूसरा मौका मैदान पर। ओ क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर। CPL की पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बन चुके खिलाड़ी, क्या गेंदबाजी वहां पर। थैंक यू। 3 गेंदों पर लगातार 3 सफलताएं, टोटल वहीं पर खड़ा है, जबकि 10 पर पहुंचा टीम का स्कोर। पहला विकेट 10 पर, दूसरा विकेट 10 पर, तीसरा भी विकेट 10 और बस में कितना फर्क है, क्या ये भी विकेट चौथा होगा। अभी तक नए खिलाड़ी के रूप में चंद्रेश ने वापस एक पहला हैट्रिक प्रबल दावेदार बना इस पहले हैट्रिक का, इस CPL 2.0 का, जिसमें नाम है चंद्रेश का। क्या वो चंद्रेश और एक विकेट निकलकर वापसी और कर पाएंगे। बढ़िया डिफेंस वहां पर। शॉट खेले ना खेले उस दुविधा में फंस गए, वहां से गेंद आकर जल्दी, मुझे लगा बल्ले पर टकरा गई गेंद, शायद बाद में पोजीशन थी, लेकिन शायद दौड़े ना दौड़े कि रुपेश नॉस्टे गेंद पर है। वो खिला नॉस्टे गेंद पर, इसका मतलब है आपको रुकना है मैदान पर। ओ इस बार सीधा शॉट, लेकिन उस बात का उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंगल निकला, खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा ये 10 के बाद 11 पर पहुंचा। अंतिम 5 गेंदों पर शायद मेरे अंदर से एक ही रन बन चुका है, मतलब ये और सबसे क्रूशियल और 3 विकेट, जिसमें कि 2 बोल्ड 1 कैच। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, सिर्फ बल्ले पर लिया, टाइम किया गेंद को मिड विकेट पर, जहां पर खिलाड़ी पहुंच चुके। एक सिंगल निकलता हुआ और अपने हाथों में स्ट्राइक रखना पसंद करके पहले 3 ओवर की कहानी में बिल्कुल तब्दील हो चुके। 46 रन का पीछा कर रही है टीम सामने से, और जीत से पीछे अंतिम 18 गेंदों पर 34 रन की आवश्यकता मैदान पर। मैदान पर ले चुका है, पता है कि ये 46 रन मुश्किल है इस मैदान पर, और हमने पहले शबनम गिर चुकी है और हवा में थोड़ी सी बिल्कुल, जो कि इस वक्त देखिए हवा थोड़ी सी धीमी भी हो चुकी है, हल्का हवा बह तो रही, लेकिन जो नमी छा चुकी है ना हवा में, उसके कारण गेंद उतनी जल्दी बाहर नहीं जाएगी, और थोड़ी गेंद बिल्कुल भारी भी हो सकते हैं शबनम गिरने के बाद, मतलब जो गेंद गीली रहेगी उसके बाद। तो
गेंदबाजी करना मुश्किल है, लेकिन उतना ही बल्लेबाजी करना टेनिस क्रिकेट में शायद तो मुश्किल होगा। लेकिन चलिए, मुश्किलों से ये खिलाड़ी सीखा है अपने आप को उभारना। T10 प्रतियोगिता में बहुत बार मडगांव की तरफ से, घुमटेश्वर की तरफ से इन्होंने बल्लेबाजी किया, जो कि तालुका वाइज में, और तोड़-फोड़ बैटिंग किया, मतलब काबिल है इनके पास। एक बार तो लगभग पूरी बरसात में इन्होंने बल्लेबाजी किया और बहुत दूर दूर छक्के लगे, मतलब गीली गेंद से उनको उतना कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे अंदाज से। काबिलियत है इनके पास। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। हम बात कर रहे थे गीली गेंद हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भरी बरसात में उन्होंने T10 प्रतियोगिता में बल्लेबाजी की थी और दूर दूर छक्के थे उनके, मतलब उस बात का उनको पता है ये बल्लेबाजी कर सकते हैं। और इससे भी बल्लेबाजी नहीं करते, ये तो तोड़-फोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि अच्छी फील्डिंग वहां पर, पहले 2 गेंदों पर 11 निकल, और मैं कहूँगा अंतिम अगर 4 गेंदों पर 5 भी निकलते ना तो 15 रन का ये ओवर हो जाएगा, मतलब रन रेट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा मैदान में। लेकिन अगर एक बड़ा शॉट बनता है तो सोने पे सुहागा मैदान पर। लेकिन उसी शॉट को गेंदबाज को अब रोकना पड़ेगा। देखिए, इस ओवर में कम से कम 15 से पहले ये ओवर समाप्त करना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले गेंदबाजों पर बिल्कुल बड़ी कठिनाई होगी बात में वापसी करना। यही तो क्रिकेट है। तीसरे ओवर में लगा मैच समाप्त हो गया, 3 लगातार विकेट, और चौथे ओवर की पहली गेंद पर मैच ऑन हो गया मैदान पर, क्योंकि रुपेश जब तक नॉस्टैक एंड पर है तब तक इस वक्त मैदान पर खेल बनता रहेगा। ओह, टाइमिंग नहीं है, ताकत नहीं है, खिलाड़ी है वहां पर सीधे झोली में, और ये आउट मैदान में। थैंक यू डीजे। देखिए, इस खिलाड़ी के बारे में हम हमेशा जिक्र करते हैं, पेंडी तालुका के खिलाड़ी है ये, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। साथ साथ देखिए, इनके फिटनेस के बारे में बताओ तो लगभग सुबह 4 बजे उठकर ये दौड़ना शुरू करते हैं भरी रेत में, और बिल्कुल ये जिम में हमेशा आते हैं। खास फिटनेस का इन्होंने बहुत सोचा है, और ताकत तो इनके पास बहुत है। ये कोई गेंद गीली है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे अंदर से, इनके पाले में आनी चाहिए गेंद बस। सही क्रिकेट वहां पर, सही क्रिकेट। सामने वाला खिलाड़ी अगर बड़ी बैटिंग कर रहा है रुपेश, तो आपको वो गलती नहीं करनी है, विकेट नहीं देने आपको, जो गलती इससे पहले बल्लेबाज नहीं की, जरूरत नहीं थी उस शॉट की। आपको सिंगल ही तो निकालना था, नॉस्टैक पर से स्ट्राइक पर रुपेश को लाना था, वही तो काम करना। 20 पर पहुंचा, टीम का स्कोर अभी भी 26 रन। क्या आवश्यकता मैदान पर, अभी भी मैच ऑन है। ये 2 बड़े शॉट चाहिए इस ओवर में बनते तो बहुत अच्छी बात रहेगी इस मैच में। ओहो, उड़ाया 6 रन के लिए। टू 26। ओवर इस मैदान पर अंतिम 5 गेंदों पर, जो कि 14 एक विकेट, ये कुछ लेखा जो का इस ओवर का इस मैदान पर। शॉर्ट गेंद, कट किया गेंद को, तोहफा इस वक्त मैदान पर, पॉइंट बाउंड लाइन के बहुत दूर। अब अंपायर बताएंगे कि गेंद ये सीमा रेखा से पार है या फिर चौवा। नहीं, ये गेंद सीमा रेखा से पार ही है मैदान पर। ओवर निकला लगभग 20 रन का मैदान पर, और अंतिम 12 गेंदे और 14 रन मैदान पर, जिससे पीछे इस मुकाबले में।
12 गेंदे 14 रन। मुकाबला बहुत कड़ा है, ये ऑन है, ये सबसे ताकतवर खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी के पास अकेला सेना सामान है ये। लेकिन भाई देखिए किस तरह से जब रुपेश बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने आप को रुका, सिंगल बनाया। जो काम इनके पहले बल्लेबाजों को करना था ना, ये आखिरी आकर कर रहा है। ये पता है कि रुपेश जब तक खड़ा है ये मैच कुछ फिनिश करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खड़ा रहना है। सही क्रिकेट वहां पर देखिए, ये सही क्रिकेट, सिंगल निकाला वहां से, और सिंगल के साथ फिर से रुपेश को स्ट्राइक दे दी, क्योंकि लगातार 2 गेंदों पर वो 2 बड़े छक्के काम कर गए मैदान पर। रुपेश अपने निजी टोटल पर 10 गेंद पर 24 रन, 3 बिल्कुल छक्का उस बल्लेबाजी में शामिल मैदान पर, और जो कि घुंघरू 2 गेंदों पर 2 रन। ऑफ स्टंप के बाहर रिवर्स खेलने का प्रयास यहाँ पर, चूंकि गेंद की लाइन से अंतिम 10 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ, 13 रन की आवश्यकता जीत से पीछे इस मैच में। एक शॉट बिल्कुल मैच को ठीक ठाक कर जाएगा, लेकिन एक विकेट मैदान पर वापसी कर पाएगी। शॉट गेंद पुल किया, पुल है, सक्सेसफुल नहीं रहेगा, गेंद सीमा रेखा पर सीधे हाथ में, ये आउट। ग्यारह गेंदों पर 24 रन की बैटिंग, एक बार जोरदार तालियां बजाए भाई। बीच मजदार में रुपेश अपने अपनी नाव को छोड़ा है, जो नाव आपको पार करनी थी, जिसको आपको बेड़ा पार करना था, उस बेड़े को आपने उठाया, लेकिन वो बिल्कुल पूरा नहीं कर सके। उसका कारण क्या था? शॉर्ट गेंद, लालसा बड़ी आपकी, जिस गेंद पर आप कभी भी छक्का मार सकते थे, उस गेंद पर आपने हवाई फायर की और कैच लेने की भी तारीफ करने वाली खिलाड़ी की। अब लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी, 9 गेंदे 13 रन मैदान पर, क्या होगा? क्योंकि नॉस्टेक एंड पर जब तक ये खिलाड़ी घुंघरू मैदान पर है, जो कि गौरव, तब तक इस मैच में ये तो कहा जा सकता है कि मुकाबला अभी भी बल्लेबाजों के फेवर ही में रहेगा, क्योंकि इसके पास बहुत ताकत है। लेकिन लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, क्या करिश्मा कर पाएंगे? क्या ग्राउंड शॉट से इस वक्त मैच को वापसी हो पाएगी? सीधा शॉट हल्के से ड्राइव किया, इनको सिंगल के सही सोच, वहां पर सही क्रिकेट, वहां पर बैकअप ठीक ठाक है, लेकिन एक ही रन बनेगा। देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंगल निकालना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अंतिम 8 गेंदे और 12 रन जिससे पीछे मैदान पर। काफी दर्शक यहां पर बैठ चुके हैं, हमारे दर्शकों में हमारे करीबी कुछ दोस्त भी बैठे, सच विराट तेंदुलकर, जो कि इस वक्त मैच का लुफ्त उठा रहे। गौरव जी के सबसे टॉप स्कोर में इनका नाम गिना जाता है, और आज ही इस वक्त बढ़िया क्रिकेट देखिए, सिंपल, कोई जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। पता है कि पीछे अगर एक गेंदबाज शॉट है, 7 गेंदे और 11 रन मैदान पर। भाई तो लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी को अब बल्ला चलाना है, क्योंकि नॉस्टेक एंड से सिंगल निकालेंगे तो वापस आप स्ट्राइक पर रहेंगे। लेकिन मैं कहूंगा बल्ला चलाते, बल्ले पर लगी गेंद तो काम बन जाएगा इस मैच का। ये सही शॉट है, टाइमिंग है ये, लेकिन ताकत उतनी नहीं पहुंचा पाई। लेकिन चलिए, रन वहां पर मिलेगा, कॉल अच्छा, लेकिन एक ही रन वहां पर मिलता, थोड़ी सी गफलत, लेकिन उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम 6 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, और जीत से पीछे इस वक्त मैदान पर 10 रन की आवश्यकता इस मैच में। धन्यवाद। आखिरकार बिल्कुल जिससे आरंभ होता है वो गणेश पाटिल मैच के दरमियान वो ऑन साइड पर सिर्फ टाइम किया गया, ऑन साइड पर पहला रन तो बहुत तेज निकला। घुंघरू अपने हाथों में रखेंगे, स्ट्राइक मैदान पर, अंतिम 5 गेंदे और 9 रन मैदान पर। देखिए, 2023 में लीग मैच पर इनका सर्वाधिक स्कोर था 79 अकेले का। इतनी काबिलियत इनके पास बल्लेबाजी करने की।
और एक ही दिन में मतलब 3 मैचों में 100 से ऊपर रन बनाने वाला ये सबसे लीग स्टेज का खतरनाक खिलाड़ी है। मतलब ताकत है इनके पास, प्रतिभा कूट कूट कर, लेकिन आज उसका क्या होगा इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले 2-3 दिन तो उन्होंने आराम से रोक निकाले, मतलब सूझबूझ भरे बैटिंग इनके पास है, तो क्या रोक पाएंगे गेंदबाज उनको। ओहो, इस बार हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन सीधा हाथ में और आउट। खूबसूरत है ये माहौल, ये भी हाथ में जा रही है गेंद और ये भी आउट मैदान पर। गांवकर ने आखिरी क्षणों पर जो शॉट खेला, शॉट पिच गेंद पर जहां पर सिक्सर था वो, लेकिन वो मिस टाइम कर बैठे। उसके बाद की कहानी है ये, क्या वापसी होगी मैदान पर गणेश की। बहुत बड़ा मॉल है ये, इस बार फिर से मौका और हैट्रिक, एक ही मैच में 2 बार हैट्रिक मैदान पर। रन मैदान पर, 8 विकेट निकल चुके। नितल्ले बल्लेबाज है, ऐसा नहीं कि नितल्ले बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उमेश यादव ने बहुत बार 2-2 छक्के लगाए एक ही 2 गेंदों पर, ये इतिहास उधर भी गया। शमी ने भी बल्लेबाजी की भारतीय टीम में आखिरी आकर, मतलब बैटिंग इनके पास भी है मैदान पर, सिर्फ अपनी आज तलवार को चला रहे हैं मैदान में। किस सूरत में, किस हालत में चले आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैच गणेश आपके लिए ऑन है ये। ओहो, इस बार गेंद को उड़ाया सीमा रेखा पर, और ये देखिए शायद दोनों बल्लेबाज इकट्ठे खड़े हैं। ये क्या कर रहे हैं मैदान में, शायद 2 रन तो बनाइए, बात की देखी जाएगी। नहीं, एफर्ट की अच्छी तारीफ नहीं है, ये एफर्ट नहीं है। 1 गज आगे थे, अगर रुक जाते ना तब भी ये कैच था, इसलिए एफर्ट में कुछ नहीं दूंगा। मैं तो कहूंगा कि बल्लेबाज की गलती है। आपको 2 रन बनाए थे इस मैदान पर, 8 रन चाहिए अंतिम गेंद पर। 2 बनाते, तीसरे के दौड़ते, आउट होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का, लेकिन ये छक्का तो नहीं था, लगभग 1 गज आगे गेंद गिर रही थी। सिर्फ फील्डर को दिखाई नहीं दिया, ये बात अलग है, लेकिन अच्छी बात, क्योंकि अगर हाथ से नहीं लगती गेंद तो शायद वो चौका जा सकता था। लेकिन आखिरी गेंद, 8 रन मैदान पर, प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि अगर वाइट हो, नो हो, तो शायद मैच फिर से ऑन रहेगा। ऐसे हालात में बहुत बार ऐसा हो भी जाता है कि कभी कभी मानसिकता बदल जाती है, कंट्रोल छूट जाता है। और अब क्या होगा ये गणेश ने अब तक तो सही किया है, 3 विकेट अभी तक निकाले, नहीं फर्क नहीं पड़ता,
फर्क नहीं पड़ता 1 रन का, क्योंकि यहां से ये मैच समाप्त हो चुका है। गणेश का क्रूशल स्पेल भी समाप्त हो चुका है। गणेश ने सिर्फ 2 रन दिए मैदान पर और 3 विकेट निकाले, जिसमें एक कैच भी छूटा। लेकिन सबसे सराहनाजनक बॉलिंग किसकी होगी, जो दूसरा और जहां पर हैट्रिक भी निकली है और सामने वाली टीम के लिए बहुत बिल्कुल रोक के रखा है। हांव रिक्वेस्ट करता यश प्रभुदेसाय मातसो येवचो, जो आमच्या पयलो मॅचीचो प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड आमी दिवपाक सोदतात. Overlock captain, please come for the toss along with MCC captain. MCC captain, please come for the toss along with overlocked captain. यश प्रभुदेसाय रिक्वेस्ट करता तुका मातसो यो. पयल्या मॅचीचो प्लेयर ऑफ द मॅच साहिल गांवकर. साहिल गांवकर मातसो यो आनी तुजो प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड घेवन वच. आमचो आनी एक जो स्पॉन्सरर आसा यश आनंद प्रभुदेसाय, जाणें आमकां ज्यो हांगा आमी ट्रॅक पॅन्ट्स दितात तशेंच तो एक ओनरूय बी आसात आनी जे गजिबोस घाल्ल्या ते ताणें स्पॉन्सर केल्ले आसात. असो खुबसो हातभार आमकां यशान दिल्लो आसा ह्या टुर्नामेंटाक. हांव रिक्वेस्ट करता यशा कडेन, यश आनंद प्रभुदेसाय मातसो बेगीन यो आनी हो प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दी. साहिल गांवकर, पयल्या मॅचीचो साहिल गांवकर मातसो यो बेगीन. So congratulations to Sahil Gaonkar. ताणें पयली मॅच जिखिल्ली MCC प्लेयर ऑफ द मॅच दिता यश प्रभुदेसाय. आतां फुडले सुवातेर कॅप्टन MCC बेगीन यो. कॅप्टन ऑफ MCC बेगीन यो. तौसू मुल्ला नवार मातसो बेगीन यो. फुडली मॅच MCC आनी ओवरलॉक्ड.
हांव रिक्वेस्ट करता दुसऱ्या मॅचीचो प्लेयर ऑफ द मॅच रुपेशाक रिक्वेस्ट करता मातसो यो प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड घेवपाक रिक्वेस्ट करता आमचो स्पॉन्सर आमचो म्हजो बरो इश्ट गौरीश बेंडे आणि बॅट्समॅन आमकां प्रायज स्पॉन्सर केला हांव रिक्वेस्ट करता गौरीशा लागीं हांगा येवचें आनी प्रायज ताका स्पॉन्सर करचें Team MC umpires are waiting for you and they are urging you to come on the field as fast as possible. Overlocked Sports Club won the toss, deciding to bat first.
So overlocked sports club are virtually out of the race for the semi-final place. As 2 matches have already been won by MCC. Batsmen match begin yet. 1 match won each by Kakoda Boys, 1 match each by Avengers, Agni Avengers. So Agni Avengers and Kakoda Boys are going to play the next match. So at least one of them is definitely going to win. Batters match begin yet. Only the 2 teams qualify for the semi-finals. So let us start with the of the night. Well, I just forgot to mention the previous game's player of the match. The man who has taken the first hat-trick of this competition is none other than Chandresh Desai, and will be awarded later on. Who would have thought that MCC would have defended just a low total against a strong batting order of Kakoda Boys, but they did it. What a game it was, a fabulous game of cricket, turning its head up and down every now and then finally victorious moments for team MCC. They got a very good bowling lineup, and now just after performing a great game and winning that match, they have to perform immediately. In comes Chandresh Desai. That's a wonderful slower ball. What a deception here. He is up against Punaji Kalangudkar, one of the most highly rated cricketers, one of the most batters, prolific batters in tennis ball cricket circles, not only making name and fame in Goa, but also outside Goa. No connection whatsoever. Cho is on fire. Whether it is Punaji Kalangudkar or whether it is Vicky or whether it is Rupesh, he knows how to bowl against the top batters. If you see that he has played a lot of leather ball cricket and he's the one who is going to bowl those 2 overs as a pro bowler, as a prime bowler, and he's ready to bowl one more. That's an outside edge, just going away from the fielder towards the short third, gets a single. The advantage of playing a lot of leather ball cricket is you got to bowl spells of 4 overs. And here that experience will count. Just now in the last game he has bowled 2 overs. Now he has to come and bowl more 2 overs in the last game for MCC. And he has done it many a times in his career. Once again he's ready. Slightly straying down the leg side. Maybe that was a little closer than the batter would have thought. Bharat Harka's very good batsman, top batsman, but just not click today. So again, you can see that timing part is missing from Bharat Harka's. He's a fine player. Both sides of the wicket, likes to play in the covers, long off, long on, and also that paddle shot and left shot that he has in his armory. That's a slow ball, picked up nicely here by Punaji Kalangudkar. Should get a comfortable boundary. These are power play overs. When you get it at the top of the fielders, is a certain boundary. 7 without loss, just the first over in progress. This is the first loose ball that Chandresh Desai has bowled entire day. That happens sometimes even to some of the best players around, best bowlers around in the world. This is once again, this is Punaji Kalangudkar at his best. After a
Boundary. This is a wonderful pull shot and goes for 6 runs. ग्रीन आसा ते दोन्ही जिंकले न्ही दोनांतले हे ना हे भायर पडले बॅटिंग आसा ते बॅटिंग भायर बाकीची 3 टिमी चान्स आसा एक जिंकतो तो पावलो अग्नी विठ्ठलदास आणि तो काकोडा बॉयज रुपेश Mohit Gavkar, very good leg spinner, Australian player who bowls leg spin and also comes at the top of the batting order. Oh, this is good delivery, slow ball, leg cutter. He thought that the pace has been provided, but the ball did not arrive. So the leg spinner, certainly we have not seen many leg spinners nowadays. He is one amongst the few left. That's a good shot here from Punaji. He is taking on Mohit. Once you go for the switch, that becomes an off spinner, and that was the right option chosen here by Punaji Kalangudkar. Gets a boundary. So Punaji Kalangudkar feels that there is no pressure on him whatsoever. Well, he has batted well. It's just that other batters around him did not click. And even if they posted 70 plus runs, the bowlers have leaked runs during the bowling. 18 on the board in just 1.3 overs. So again, full length. This was slightly quicker in the air. Just gets a single down at the long off region. (19) without loss. Second over. Oh, this is way too short. Lucky here that he didn't play a pull shot. So umpire calling it wide. It was going above the head of the batter. That's the reason why it was called. Oh, that's a good ball. Very good ball. This he likes to play Bharatarkas many times. He just gets it over that extra cover region. Sometimes he misses it, just like this one. Oh, this is top class bowling. Top class bowling here. He loves to play in the floodlight tournaments, and he's showcasing why he likes it. The experience of playing in the floodlights is working here for Mohit Gavkar. Bowls a very decent over. Overlock Sports Club 20 without loss at the end of 2. So the batting power play has been chosen when Gandhar is with the ball in his hands. The fine bowler. 3 fielders are allowed to go to be kept outside the 30-yard circle. Let's see where they are kept. Mostly will be on the lakeside region, but Punaji also plays very good shot as a switch hit in the extra cover point region. आमचा हांगा स्टॉल पार्टनर सेनेडुकुल आसो हाजो स्टॉल आसा सो कोणाक खावपाक जाय जाल्यार हांगा अरेंजमेंट आसा. Outside edge, the noise was heard here in the commentary box, and Punaji Kalangudkar has to go, and the young man
This time, once again, well, Gandhar, the experience that he has gained after playing in a lot of tournaments where he goes along with Curchorem municipality team and also with other teams in an open tournament is really working wonders for these young men. He has got the pace, he has got the pace, he has got the variations. He was the emerging player in the season 1.0. And he has grown strength to strength as a bowler. And that is the advantage that MCC has. They have got bowling line covered up. We have seen if you can defend just 45 runs against the strong batting order of Kakora boys, so you should consider yourself as a strong bowling unit. Once again, another dot ball. This has been the story of the day for Bharat Arkas. He is a clean striker of the tennis ball and also of the leather ball, but today is not been the case. The scenario is completely different in CPL 2.0 so far. This is once again leading edge, not going in the hands of the short third man. He's trying hard, Bharat. Maybe he's trying to hit it too hard. He's a good timer. Still struggling to get runs. 22 for 1. What an exceedingly good over bowled by Gandhar at this moment of time. Just 2 runs conceded. Maybe Chandresh Desai may be a little tiring and maybe they have the option of bowling Gandhar as the second option to bowl the 2 overs. That might be the point of discussion between the captain, the icon, Tausum Mullah Nawar, who is marshalling his troops very well as an icon. And an exceedingly good over, very good over from Gandhar Prabhu. Overlock Sports Club 23 for 1 at the end of 3. So the ball has raced for 4 runs. Not a great effort in the field, but this is the 4 that counted here in the kitty for overlocked. Not a bad delivery, tried a slower ball and deceived the batsman. Just that it went in the gap. This boundary takes the score to 27, 3.1 overs. So maybe a call here for the 12th man to come on the field. Injury on the field here for one of the players. The 12th man is coming on the field after the permission from the umpires. Raja Doshi. Raja Doshi comes on to bowl. A little bit of injury problem here for Sahil. He bowled just 1 ball. Now Raja has to finish that over. You can see Raja also plays regularly at Foxstone. Foxstone is his famous ground where he gets everyone along to play the matches on Sundays and Saturdays.
This time play towards the point region. Just a single. .3, 28 for 1. The way it was supposed to go for the betting side is still not happening. They must be looking to get somewhere around 50 runs. This time strikes cleanly. Oh, good piece of fielding effort. Very good in the deep. Jumps in the air. He was in the air when he touched the ball. What an acrobatic effort and an acrobatic save here at the long on region. This is the kind of effort that will lift the spirit up. It's not easy. That's why fitness counts. They just played a game a while ago which was very close and a cliffhanger one. And still have that power within themselves to lift himself up. Going for the switch hit. Dot ball considered. So Raja Doshia turning out to be an economical option here after Sahil was had to go because of the injury scare. Oh, what a lovely shot. This might be 6 runs. Once again, another save. Mohit Gavkar it is. Everyone thought that these are 2 sixes, but I think these are 10 runs saved. That's why he's an Australian player. That's why he's highly rated. In spite of bowling a good over, he is still giving everything, whatever for his franchisee. So, 4 overs gone is 30 for the loss of 1. It could have been 40. 10 runs saved by Mohit Gavkar. That's the standard you want to raise yourself. You want to go to different franchises in different Premier League or other tournaments that are being held or organized in different parts of Goa. Everyone watches. People are still watching CPL 2.0 at this point of the time on Goa Livecast. This is in the air. This should be an easy catch. I told that Gandhar might be the second option to bowl the 2 overs. Chandresh Desai bowled 2 overs in the previous game. Well, Gandhar is also a very, very good option and he gets rid of the batter. Saish going back to the pavilion. In comes Alvino Carvalho. In the previous edition, he was in Rudra Avtas where they were crowned the runners-up. But this time, it is not the case. So, they are already out of the competition. Overlocked Sports Club. It's just some sort of... This is a good shot here from Alvino. This time, Mohit can't do anything. He had to be Superman over there if you need to stop that. This was very well timed. 6 runs straight hit. Alvino, maybe a little bit of anger within himself to show that the way he has been hit around as a bowler by most of the batters. Now this is the time for him to come back and show that he still possesses the strength and tenacity to strike big. It's all in the mind. So again, a helicopter shot straight down the ground. There's a fielder, RJ. He always patrols that region whenever he is playing for Lucky Boys. And once again, he does a very nice job. Restricts the batter to just a single. Score moves on to 37 for the loss of 2. 4.3 overs. 9 balls still left in the innings here for Overlocked Sports Club. This is in the air, but it's in the gap as well. Mohit once again. Another 3 runs saved. 13 runs saved so far by only one man. It's a one-man army at that long on and mid-wicket region. And Cho is thanking him for that effort. Otherwise, he had to run. This is in the air. This should be a catch. Chandresh Desai. Oh, he tried one-handed. He tried one-handed, but this time he could not do anything.
It went away from him and gets 4 runs here. Alvino Carvalho didn't strike it cleanly, but at least it was in the gap. With these 4 runs, the score moves on to 42 for the loss of 2. 1 ball left in this 5th over. Certainly getting a good shape here. It's not that you cannot go into the semi-final. It doesn't mean that you can't win over here. Consolidated victory is always good for the franchise owners and all the players. And that will finish the over well here with the dot ball. The 5 overs gone. 42 for the loss of 2. Overlocked Sports Club. Meanwhile, I request the captain of Agni Avengers and Kakoda Boys, please select your team of players. Vicky Naik and Vipal Naik, please come. That is going to be the next match and the last match of the night. Tomorrow is going to be more encounter, but tomorrow's matches are going to start sharp at 7 o'clock. Reporting time is 6:30. Please take a note, reporting time is 6:30 and the matches are going to start at sharp 7 p.m. Today is obvious, most of the inaugural days happens late, slight changes and slight delay caused for the inaugural function, which was one of its kinds, and some sort of setting in terms of sharpies and lights had to be done, so taken a little bit of time. This is in the air. This has not been timed, and Mohit, it is safe as you get. He doesn't drop many. So Alvino Carvalho, after showing some of his flair and style, departs. One more going back to in the overlocked camp. Vipal Naik. Vipal, please come and select your team and also come for the toss. This is the last over, 43 for 3. This time just scoops it in the air and Chandresh Desai fielding in that short extra cover region. Just gets a single, moves the score to 44. 2 hat-tricks we have seen already in this competition in the same game. Rarely you see 2 hat-tricks in only one game. Both are taken by the bowlers of MCC. This time he strikes, but it might be in the air and is taken at the covers region. So Bharat Arkas, after a lot of struggle out in the middle, missing the timing and giving catch straight to the covers region fielder. One more goes back into the pavilion, and the sad end for Bharat Arkas has nothing much to say and nothing much to speak when you have to leave the field dejected after not doing much for your franchisee. There is always a different tournament, there is always a different game. Not that every tournament will go good for every players. So it's time to bounce back in some other tournament for Bharat Arkas. This time just going to be a single. Ganesh has bowled very well, and he is the player of Lucky Boys. He plays regularly here, and that's the reason why not only hat-trick, but he has been economical as well. Tried to bowl variations, tried to bowl the leg cutters, the slow ones, sometimes the medium paces. This is once again outside edge, and just goes towards the short tournament region fielder for another single. So that will finish 6 overs here for Overlock Sports Club. They managed to get only 46 on the board, 47 required for Team MCC to win their third match and go on the top of the table. Meanwhile, it's time for the toss.
Requesting the fielding side to please come fast, and MCC please send your batters. We have one more game left after this one. Batsmen of MCC, please come on the field fast. Team MCC, please send your openers. नमस्कार। इस वक्त 46 रन की आवश्यकता जिससे पीछे इस मैदान में देखिए, एक बात बिल्कुल अच्छी है कि इस वक्त यहाँ से पुणे जी की पूरी टीम को इस मैच को जीतना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक प्रतियोगिता में उन्होंने कोई जीत दर्ज नहीं की है शायद मेरे से। तो इस मैच में बहुत कुछ कर सकते हैं इस वक्त जीत से, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो पूरी अच्छी टीम है जो बल्लेबाजी कर रही है। ओके, हम रेडी, हम आपके साथ है। शुरुआत का पहला माहौल मैदान पर राइट हैंड ओवर द विकेट से दौड़ते हुए सामने से पावर प्ले के उस ओवर में शॉर्ट कैन ऑन साइड पर स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। और ये लेग स्टंप पर अगेन थोड़ी सी बाहर की तरफ वाइड बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचता हुआ, जो कि 7 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए, अभी तक सामने हम पहले कह चुके कि इस टीम ने कोई मैच नहीं जीती जो गेंदबाजी कर रही है, तो उनको अपनी जीत के साथ ही इस वक्त जाना पड़ेगा घर पर। ये सोच होनी चाहिए मैदान पर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास यहाँ पर, चूके गेंद की लाइन से डॉट गेंद। और इस बार फिर से थोड़ी सी बाहर गेंद और एक वाइट। देखिए, अतिरिक्त रन जो कि 2 हो चुके हैं और टीम का स्कोर पहुंचा जबकि 8 रन पर। इस बार टाइमिंग से बेहतरीन खूबसूरत टाइमिंग। देखिए, शॉट कारपेट के सारे जरूर खेला, लेकिन टाइमिंग के साथ ये गेंद निकली सीमा रेखा से पार। एक बहुत उम्दा शॉट, थोड़ी सी गेंद ऊपर कर दी थी, मौका था, बॉल गेंद थी शायद, तो सिर्फ बल्ले पर आने दिया। एक खूबसूरत टाइमिंग के साथ ही गेंद निकली है मैदान से बाहर। क्लीन बोल्ट। अग्नि चैलेंजर्स टीम ने पहले टॉस जीता और उन्हें का वो शुरुआत करेंगे इस वक्त गेंदबाजी के साथ मैदान पर। गौरेश नए खिलाड़ी के रूप में मैदान पर पहुंचता हुआ और इस बार लेग स्टंप के फिर से बाहर शायद वाइट। अतिरिक्त रन 3, टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन पर मैदान 13 रन पर।
एक छक्का एक चौवा जो कि इस वक्त शामिल उस बल्लेबाजी में, जो कि एक बेहतरीन शॉट सीधा। और फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल से निकली गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। और इस बार पैर पर लगी, 17 पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि एक और समाप्ति के बाद। वापस खेल चलता है इस मैदान पर, जो कि अच्छा माहौल मैदान में, और उतना ही दबाव है मैदान पर सामने से। 17 ऑन साइड पर हवा में खेला शॉट को सीधे हाथ में, और या आउट। इस पर ऑन साइड पर स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, जहां पर रन मिलता हुआ सिंगल, और सिंगल के साथ ही कहानी में तब्दीली, जो कि 18। और इस बार फिर से शायद देखना पड़ेगा, पैर पर पहली लगी गई शायद होगी। देखिए आड़े टिड़े बल्लेबाज हो रही, पता है कि यहां से ये मुश्किल नहीं है बारी। 17 रन हो चुके, 18 बन चुके इस मैदान में। लक्ष्य उतना दूर का नहीं है, क्योंकि पता है कि विकेट हाथों में है इनके। एक और अगर 12-15 का निकले तो मैच फिर से आसान हो जाएगा इस मैदान पर। वापस खेल बलता हूं मैदान पर। ओ इस बार ऑन साइड पर फुल टॉस बनाकर लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। दबाव बढ़ता हुआ फुल टॉस गेंद बनाकर खेला, ऑफ टर्न के बाहर कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन खिलाड़ी को बीट कर रही गेंद, और ये भी गेंद सीमा रेखा से बाहर। 28 यह हालत है मैदान पर। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया जरूर, लेकिन फुल टॉस बनाकर कवर के खिलाड़ी की तरफ जा रही गेंद। पता है कि इक्का दुक्का बनता हुआ, और शायद कहीं ना कहीं मैच में पहले 2 ओवर की कहानी समाप्त, 29 पर पहुंचा टीम का स्कोर।
नया गेंदबाजों की मोर्चे पर सामने से लाइन को बहुत दूर रखा, वाइट बॉल का इशारा। देखिए गेंदबाजों की भी परिभाषा कह रही है, शत फील्डरों की भी कि मानसिक तौर पर ये हार चुके हैं इस मैदान पर। कि देखिए जितना कि शायद सोच रहे थे ये टोटल बड़ा होगा, लेकिन पहले 2 ओवर में 30 एकदम से आसान है ये मुकाबला मैदान में। चलिए और एक हवाई फायर, लेकिन रन तो वहां पर एक ही तो बनेगा नहीं, बिल्कुल गेंद जा रही सीमा रेखा तरफ और ये 4 रन मैदान पर 34। ओ इस बार बीट किया, मनचाही बल्लेबाजी, जहां मारना चाहते वहां पर मार रहे। पता है कि गेंदबाजों के पास अब ज्यादा तो औपचारिकता बची नहीं है, यहाँ से यदि विश्वास भी नहीं बचा है। देखिए आपने जब विश्वास ही गंवाया है तो बाद में मैच में वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। उतनी ठोस बॉलिंग नहीं देखने को मिली मैदान पर। और इस बार स्कोर के ऊपर से ठीक माइक्रोवेव के सामने से 6 रन के लिए मैदान पर। चालीस पर पहुंचा टीम का स्कोर। ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा पर एक ही रन बनेगा। वैसे थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर है कि 5 ही चाहिए, क्योंकि अभी तक इसके बाद 3 ओवर बचे, अब 6 रन चाहिए मैदान पर। 41 हो चुके, 6 ही चाहिए, मतलब एक ही छक्का, एक बड़ा शॉट, मैच समाप्त, फिनिश। और ये इस शॉट के साथ ही ये मुकाबला लगभग समाप्त नहीं हुआ। 2 रन अभी भी शायद जीत से पीछे बचे, 4 रन के लिए मैदान पर। सिर्फ 2 रन क्या, सिर्फ औपचारिकता, यहां से टीम हार चुकी है। ये ओवर समाप्त हुआ तीसरा, 3 ओवर के साथ सिर्फ 2 रन जिससे पीछे मैदान पर। अब कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का, पता है कि यहां से ये मुकाबला एक तरफा हो चुका है। सिर्फ ये खिलवाड़ हो रहा है मैदान पर। देखिए अब उस बात में कोई विश्वास नहीं बचा कि ये मैच यहां से जीत सकते हैं। अब ये सिर्फ औपचारिकता खिलवाड़ बचा है, जहां चाहते हैं ये आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन अब आखिरी समय पर इस वक्त मैदान पर इस खेल में हम लेके चलते हैं। यहां से जगह इस शॉट के साथ ही ये मुकाबला लगभग समाप्त ही हो जाएगा। इसी के साथ ये समाप्त हो चुका है। इसके बाद का मुकाबला बिल्कुल टाइट मुकाबला, सबसे बेहतरीन मुकाबला। हारने वालों को कोई मौका नहीं मिलेगा, जीतेगी टीम जो अगले राउंड तक पहुंचेगी, शायद विश्वास है इस मैच का। इसके बाद का
last game of the night. The night was little too long, but still spectators are here. Those cricket lovers who understand the complexity of the game, they very well know that this is a must-win situation. And good to see Rohan Gauss as a co-sponsor and GCA secretary is still here at this point of time and enjoying the game. Must-win situation for Kakoda boys. Whoever wins this match enters into the semi-finals. What a high-pressure game this is. CPL 2.0 place for semi-finals at stake. One of the teams is definitely going to enter. One of the team is definitely going to bow out. We welcome Kishan Sawant. Meanwhile, extra man of Kakoda boys, please come in the commentary box. Extra man of Kakoda boys. And that was a fiercely struck. It went like a ballistic surface-to-surface missile as a switch hit towards the backward of point region. Great start here from the Super Spartan Rupesh Gaukar. So boundary to get himself going. Viresh starts this power play over. The mandatory power play over here for Agni Avengers. Everyone needs to have their fielding absolutely bang on here. This time a slower ball, change of pace. Rupesh clearly saying no. No was the signal, loud and clear. Still there is something left. This is the moment here for all these 22 players. This is in the air. This is coming straight to me. This might be catch. This is inside. And catch dropped. Oh! Catch dropped off Rupesh Gaukar. And look at the pressure where he's throwing the ball. He's throwing towards the third man. Lucky that he did go for a boundary. This is what pressure does to even the best of the men. Look at it. This is the pressure. The trophy was just behind him. Oh my God. Sapnesh Khandekar. Ghatu as we call him, has he dropped the cup? Harshal Gift had dropped the catch of Steve Waugh in the World Cup 99. And Australia managed to win. Oh, another one, but this was a difficult one. This needed a start at the short middlegate region. A start was not taken and catch dropped. Score moves on to 8 in just the 4 balls. This is once again full toss ball, and this time Gatu was in the right position. 9 runs. And if you see Viresh Ajiam, he's trying to bowl the slower balls, loopy, slow ones. He knows if you provide pace to Rupesh Gaukar, he can butcher you all day long. That's the reason pace was not provided. 9 is a pretty good start. Still 1 ball left. And here is Sanil Sawant. This time in the air, played it nicely over the long off region fielder. Definitely not going to be a catch, but no timing also. It's just a half check shot from Sanil Sawant. And that will finish well here. This over of power play from Viresh Ajiam for Kakoda boys. 11 without loss after 1. One thing good to see that all are obeying the rules and regulations of CPL 2.0 and finishing the overs well in time. Deepak Patil.
Starts off with a shot of good length, a wide outside, due off stump, wide declared by umpire. Starting off with an extra. And you can see there is a deep point placed, not only for the switch out, but also place of the back foot in that region. Goes for the switch hit. Full toss ball. Opportunity was there. Maybe it was bowled slightly down the leg side. Pace is there of this bowler. Deepak just needs to concentrate on a better line and length with some variations. They need to get rid of these openers. These are dangerous openers. Very good pair here for Kakoda boys. Once again going for that slog shot. Did not connect. Another single. Searching for that big shot at the moment, both these batters, but it's not there. Maybe the lack of power at this point of time. It's almost 130. The ball does not fly across. Oh, that was short. That was wide. Something new tried here against Rupesh. Maybe thought that he's going for the switch it. A wide considered. The second wide in this over, bowled by Deepak. Trying to do something extra. This was full toss ball. This is not the ball you bowl to Rupesh when it is full flow. 6 runs in the covers region. As a switch hitter, it's a mid-wicket. Rupesh Gaonkar is in tremendous form. They need to see his back as early as possible. The way he has played in both these innings, he is committed to his franchise. He is of the believer that if I am being taken at 52,000, I need to showcase that why I have been taken for that prize by Bablu Sawant. Oh, once again, has it got enough power? It's been 6 runs. 6 runs. Has he touched the rope? Looks to me he has touched the rope over there, and there were also spectators. He knew exactly that he has touched the rope. And another 6, back-to-back 6s. Rupesh is unstoppable force. Unstoppable force, this man. 27 without loss, 1.4 overs, and the Kakoda boys juggernaut rages on, especially both these openers. This time he goes for the switch hit, doesn't strike. But I think the damage has been done in this over. The runs that were required, especially those 2 6s, has definitely gone in favor of Kakoda boys. Oh, this is wide down the leg side. So many errors committed by Deepak Patil. This is the experience that he is gaining from CPL 2.0. But a pressure situation like this, all the bowlers needs to come their act right, and also the fielders. Is that catch going to hurt Agni Avengers is the question. And then finishes off with the dot ball. So 2 overs gone, 28 without loss, Kakoda boys. Agni Avengers need to see that they cannot allow the game to drift away. If these openers are not taken away out of the context as early, then it might be a big total on the cards. They have got a very good bowling lineup, Kakoda boys. And with Ghungru, Vicky, Rupesh Gaonkar and the company, it might be a difficult chase. So they have to restrict them, take the catches, take the chances. Here is Viresh Ajiam bowling the second over. This time, just an outside part of the bat, not a convincing shot here from Sunil. But the good thing is that Rupesh comes on strike. Even if the ball is not striked cleanly, at least you are getting a single. Single is also valuable, ticks the scoreboard along, and also gets the big striker on the mark. Oh, you can see that. He gave it all. He gave it all. It was in the zone. It was in the slot. Just missed.
This was a slower ball. This is wonderful deception. Deception at its best. And that's the best ball you can bowl against Rupesh Gaonkar. We have seen many a time Chandresh Desai also bowled this delivery and trying to bamboozle Rupesh Gaonkar, because he is the one who has very quick bat speed. If you provide him pace, he can hit you even quicker out of the field. And that's the reason why this was a slower deception. His time in the air. Has he timed it well? It's Rupesh and it's 6 runs. Is went straight down the ground with a straight bat, straight flow, and another maximum. So Rupesh is on a roll here to get his team to a very good total. How many sixes he has hit in this tournament so far in this night, the first night of CPL 2.0? 35 without loss. A very, very good start by the openers. Oh, this is even better. This is humongous. This is a monster hit. A monster hit here from the monster man of Malkane. What a player. It's just that Rupesh Gaonkar was being taken at the right point of time from MCC. Otherwise, if he was there on the wicket, he could have won them the second game as well. This is the third game and he has become unstoppable. Where to bowl to him is the question. He's using the depth of the crease. Another one. This is coming straight to me. This is coming straight to me. He is dealing in sixes at the moment. He is dealing all in sixes. On the leg side, in the mid-wicket region, at the square leg region, on the offside, switch hit. All shots are there in the book of this man from Malkane. 47 without loss at 3 overs. Kakoda boys. This time just a single. So Vipal, the icon, he has to bowl a good over, not by just bowling an economical over, but by taking wickets here. And this is no ball here because this was pitched outside the pitch area that is marked. It's going to be a free hit ball next. He saw the batsman going for the switch. It bowled it too wide. Need to get their act right. Need to get their focus back here, Agni Avengers. This is wide. One no ball, one wide. Adding to the total, and 50 up here for Kakoda boys in the 4th over. Already 50 on the board, and you can imagine just the halfway mark, almost crossed halfway mark, and lots of balls left. Should be a high scoring encounter. Oh, one more strike, and this time he gets one more. No, is saved. 6 runs are declared by the fielder himself. He tried a valiant effort, dived and trying to get the ball back inside the play, but didn't happen. This is a very good straight hit. 56 without loss. What an opening stand. The bulk of the scoring has been done by Rupesh Gaonkar, and he's just one shot away from a 50 in an encounter which is a must win for both the teams. And he gets a single. That's
That was a Yorker length delivery bowled by Whipple, but negated very well here by the batter. And in spite of sometimes not getting the sixes, they are just getting the singles. And important is they are rotating the strike. Scoreboard ticks along. Not too many balls played here by Kakoda boys. Agni Avengers are still searching for that first wicket, which is not coming. This is in the air. This might be the first opportunity. No man's land. Timing has been missed here by Sunil Sawan. The way he has struck 3 sixes of 3 balls at the start of the match, it didn't go for him the same way in the next 2 matches. But at least he's staying on the wicket with his partner, giving him strike every time. This time taken in the deep, and finally Rupesh Gavkar has to go back, not after doing the damage to the bowling of Agni Avengers. This is a magnificent innings in a situation like this when he needed to play, and he played a classy knock for his franchise Kakoda boys. Departs at the score of So big round of applause given by his teammates to Rupesh. And he departs at the score of 46. Departs at the score of 46. Just 4 short of a brilliant 50. In comes Gauresh Nagwekar. Gungru, Vicky has stayed back. Vicky has not got runs as far as batting is concerned so far. Oh, what a strike. This is humongous. This is big strike. He just powered it away towards the wide long on region fence for 6 runs. So the score is, in spite of getting the first wicket, Kakoda boys are not stopping their attacking instincts, is 64 for the loss of 1 wicket after 4 overs. So batting power play has been chosen. Maybe if Rupesh was there in the previous over, they could have taken that advantage. And now Sunil and Gauresh Gungru has decided, if at all you don't take in the 5th over, 5th over becomes automatically a batting power play over, and it will be bowled by Sapnesh Vedip, the Australian player of Agni Avengers. Sapnesh to Sunil. Short ball, swatted away and saved. What a save this is. Saved 5 runs for his side. Gatu had dropped a catch in the same position. This time he saves 5 runs. 65 for 1. A slight fielding change for both the batters. A little fielding change for Sunil, and now Gungri on strike. Going for the switch hit. Pretty good delivery here. Sapnesh plays regularly as an all-rounder for Cowboys Bari, and here is the ability to bowl against top order batters. That experience will definitely count here. Already the score has gone above 65. Projected score showing 80-85. That's a good slower ball. That's a good slower ball. Maybe thinking of a couple there, or just not there. Single so far is good over. 66 for 1. Just 2 runs considered in the first 3 deliveries. And Agni Avengers are hopeful that he picks them a wicket here or bowls quite economical over.
It's all about all 6 deliveries. Even if you bowl one loose delivery and that goes for 6 runs, it's still not good enough for Agni Avengers. Once again, out of the 4 deliveries, it's 1-0-1-0. 2 dot balls, 2 singles. Fantastic over in a context like this when he's bowling in the batting power play over. And this is wide. Slower ball turned wrong. Trying the back of the hand slower ball as a leg spinner. Very well left here. Not trying to fiddle with that. Once again, a slower ball missed. It was there in the zone. You can see the reaction of dejection from Sunil Saman. Nothing to show, but he has given a company. He is playing on 8 of 8 deliveries. He not got most of the strike. Most of the strike had been taken by Rupesh Gaonkar when he was batting along with him as his opening partner. So finishes off well. What a lovely over here from Sapnesh Vedip. Hardly concedes any, and just 4 runs given in this over. 68 in fact, for the loss of 1 wicket in 5 overs. And this is going to be the last over of the first innings. So Amey Gaonkar will be bowling the 6th over. That's a fantastic ball right in the block hole with a good pace. He's been playing on this ground for almost 15-20 years. Knows this surface very well. Got variations, the slower ones, and bowls accurately. Player of Lucky Boys. And that was the reason why he was selected as the 5th bowling option by Agni Avengers. Another good ball. That is a lower full toss ball. Is always a good ball in tennis ball cricket. So far, 2 balls, just concedes a single. Keeping in check. This scoreboard could have been a lot difficult here for Agni Avengers. So far, it has not gone beyond the reach. It might have been 80-85. Previous over fetched just 4 runs. This over considered just a single in the first 2 balls. So missing his bowling marker, and that's the best thing when you miss your bowling marker, run up instead of bowling the delivery, you should back yourself out and be ready for the next one. This was in the start. What a hit this is! This is a monster strike from Gungru, coming all the way from Penne and showing his brilliance in the bat in Curchorem. 75 for 1. 75 expected with a projected score of to get at least 80, and another big hit will take them somewhere close to 85. This was actually the line length that was missed. This was in the slot. This time he bowls a fuller ball. Gungru wants the strike. And Gungru gets the strike, but it will be a run out at the non-striker's end. He was desperate to get the strike and try to get at least one big hit in the next 2 balls.
With this single, the score moves on to 76. 2 balls left. 2 balls left in the first innings. This time, just a single, and this was the last ball. This should have ran for the couple there. Vicky decided against it, or maybe 1 ball left. Vicky wants a strike. It's 77 for 2. 1 ball still left in the innings. This time it's a clean strike. Now you can see Gungru running after the ball and a slight fumble, looking at the blip in the field, and they go for, and there's a run out. So 2 runs taken out on the 3rd run, and a big total. This is a big total here posted by Kakoda boys. They need to bet out of the skin Agni Avengers if they need to enter into the semi-finals to be played on Sunday. It was all the way. Rupesh Gaonkar played a mammoth innings of 46 runs, and then a little cameo here from Gungru, and that's the reason why it's a big total. So we'll see the run chase in a short while. फुडल्या मॅचीचो पयली जो मॅच जाली ताचो प्लेयर ऑफ द मॅच हॅट्रिक काडून चंद्रेश देसाय हाणें प्लेयर ऑफ द मॅच घेतला. आनी हांव रिक्वेस्ट करता किशन सावंत आमचो एक पार्टनर जाणें ट्रॉफी आमकां स्पॉन्सर केल्ल्या विनर्स आनी रनर्स हांव किशन सावंताक रिक्वेस्ट करता ताणें हे प्लेयर ऑफ द मॅच ट्रॉफी आनी जे ट्रॅक पॅन्ट आसा जी गुडी जे आमी दितात एलोंग वीथ द मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड हो दिवचो चंद्रेश देसाय. 80 runs required. Eighty runs required to win and enter into the semi-finals.
So batters have come onto the wicket. It is Bala and Uttam Naikhanekar. Chotu. 80 runs. We have seen 75 was being chased. So it's not that it's not possible. It's very much possible, but they require a good opening stand. Samant is giving the player of the match award to Chandresh Desai. And Kishan Samant, you can see behind the screens as trophy partners. What a hit. This is a good strike, and that's the start they wanted. That's the start that Agni Avengers wanted. But it's not the start. It's the continuation of the start that's more important. They should continue. They keep hitting and keep hitting big ones. They need many more of those, and Bala is the one that can get them. He is a powerful striker. What a big hit. Oh, this is in the air and catch taken. What a catch. What a catch. He needed to lift it over the head of the square leg region fielder. Did not get the elevation, and a catch taken. This was the difference. Catch dropped of Rupesh Gaonkar at the deep square leg region, and now in the short square leg region the catch is taken. So the difference of the fielding might have costed a little bit, around 20 runs for Agni Avengers, but the Kakoda boys have certainly taken their first attempt. So first man departs, in comes Sapnesh Verip. The man from Bali, Kepem, as you know that one of the options was Sange Kepem Dharbandoda, and one was the outstation player. But Sapnesh Verip, although had given his name as Sange Kepe Dharbandoda, but he was opted as an outstation player by Agni Avengers. This time trying to play in that mid-wicket region. Vicky, after conceding the 6 of the first ball, gets the wicket of the second ball and bowls a dot ball, the third one. Oh, what a hit here. Switch it. With 6 runs. Looks to be 6. He likes to play the switch hit, and he has got the power. This is the second 6 in the over. 12 runs already coming. And they should go at around 13 runs per over. That's the equation for them. This time there might be chance of a catch. Rupesh takes the catch. He went after Vicky one more time. The pressure is so much that the asking run rate creeps on in the minds of the batsmen, and that's the reason why they feel that they have to go after each and every ball. The pressure of chasing a big total is hurting with wickets here for Agni Avengers. 12 for the loss of 2. In comes Ghatu. So both brothers are playing together now. Ghatu and Chotu. Uttam Naikhandekar and Sapnesh Naikhandekar. Can brothers rescue them from the clutches of defeat here? Agni Avengers are very hopeful.
An appeal there. An appeal there for behind the wickets. Maybe some noise heard by the keeper, but umpires feel that maybe there is no connection, and that is maybe the discussion among both the umpires to see whether anything was there of the bat or not. So that is the end of the first over. Umpire feels that there was no connection. Maybe there was something else sound. And 1 over gone is 12 for 2. $80 is the target. MCC Kakoda has already entered leading this Group A into the semi-finals. And now we are searching for the second place semi-finalist in Group A. Kakoda boys certainly have their edge up against Agni Avengers. This might have come off the knees and a dot ball. And Rupesh Gaonkar, although they had got Ghungru, maybe Rupesh felt I should bowl over here. There was a discussion, short discussion between the outstation players and the captain. This was a full toss ball, might find a gap. Yes, it is right in between, right in the gap, gets a boundary. This should have been going for 6 runs, but at least he gets a boundary. Find the placement. Placement becomes the key. Uttam Naik Khandekar had played some good powerful shots in the previous game. All the loose balls should be counted. This is a good strike. This is a clean strike. Oh, that's something to cheer here for Agni Avengers. Uttam Naik Khandekar is not giving it away. He has got the fighting spirit in himself. 22 the score moves on to. There is no respite for the batters. The target is so much that they just need to keep going. Keep going for till the 6 overs. Oh, once again, shuffles across, should get a boundary. This is very good batting here, using the depth of the crease and pivoting himself and playing down towards the fine leg region. This is a really smart batting. He knew that Rupesh is going to bowl short after being hit for 6 of the full length delivery. Sensible bits of batting display. If Uttam and Sapnesh can play a little bit of cameo here and get a partnership going, it might add pressure on Kakoda boys. The score moves on to 26. It is game of cricket. Anything can happen. You can't be certain that you are victorious. This time, just gets a single. Wanted to loft it over a long on region, but just did not get the power. It's 27 for the loss of 2. Second over in progress. This time it doesn't strike well. This might be catch, and catch taken in the deep. So Gatu, who was going for 6 of the full toss ball, has missed his sweet part of the bat and taken in the deep in the mid-wicket region. Kakoda boys are taking all their catches. Third wicket going down at the score of 27 after completion of 2 overs.
In comes Viresh Asiam. A very good all-rounder from Sheldon Blasters, coming from Sheldon Panchayat. So here comes Gaurish Nagwekar, the outstation player for Kakoda Boys, coming into bowl. His first over. The previous over from Rupesh was expensive, but he picks up the wicket of Sapnesh Khandekar. Oh, what a delivery. This is fantastic. Right in the block hole. Not giving anything to free his arms. He has got the pace and he's got a good run up. He's one of the top rated, top 3 all-rounders in Goan cricket circle at the moment with the form that he is in. Once again, you can see that that left shot in the fine leg region was tried, but Ghungru saw him early and bowled a slower ball. Both the deliveries were Yorker length deliveries. One was a quicker one was a slower leg cutter. 2 dot balls will definitely having a talk in the middle, both these batters, to think about the prospects and plan about how to go against Ghungru. Once again, you can see all 3 deliveries right on the mark, right on the button. He knows that this is the game that he has to perform. Tomorrow, if they win this match, they are getting rest and he will come back fresh on Sunday. But here, this opportunity for Viresh. Viresh can hit the switch hit, can hit it long. Done it many a times for Sheldon Blasters, done many a time for the franchisees. This is the moment for Viresh here. This time flicks away. Once again a full toss or a Yorker length delivery. Lower full toss are difficult to hit. Just places it in the short mid wicket region. There is nothing that has come in this over, and that will creep up the asking run rate in the last 3. So Ghungru has done a good job because it gives a cushion to his other 2 bowlers. 29 for 3. Oh, look at the pace. Look at the pace. The ball zips in and goes directly in the hands of keeper. This has got this match back in favor of Kakoda Boys. Just 2 runs conceded in the 5 deliveries so far, and this is going to be the last ball of the 3rd over. So the asking run rate has creeped up. It is now 51 runs required in 19 balls. This time, has he struck it nicely? No, there is a man, and it's Vicky Naik. He is not going to drop the bat. Turned turtle when he played that shot, and the hope were resting on Uttam Naik Khandekar, and he goes back to the pavilion. Agni Avengers are losing wickets in trying to get those big hits, in trying to get the big total, chasing down, which is very difficult as the catching has been very good from Kakoda Boys. 29 for the loss of 3 after completion of 3. 51 runs required in 18 balls. In comes the icon player, Vipal Naik. Coming a little bit lower, but he is no mug with the bat. He can hit the ball quite long. It's just that he needs to strike one big one right from the sweet spot of the bat. Nikhil to bowl the next over. This is the over that they are going to target. They know very much that targeting Vicky and Ghungru is always difficult. And Nikhil Naik may be the weak option. Whether it's weak or strong, they have to go after the bowling. It's almost 17 runs per over in the last 3. So at least a couple of 6 in almost every over is required, is a must.
Should be wide down the leg side. This time, just place it for a single. So the momentum shift that was required for Agni Avengers is not happening at the moment. And nothing to cheer at the moment. Nikhil Naik was the target. Actually, this over actually should come for 10 to 12 runs. If at all, some miracle needs to happen in the last two. Yeah, that was the one. That was the one. That was cleanly struck. The power was there and the muscle strength from Viresh gets the 6 runs in the mid-wicket region. Score moves on to 38. More 42 runs required. They need one more in this over to get the equations slightly tilted to be hopeful in the last two. "15 balls, 42 runs. This time, this might be a chance, and Vicky saves the ball, but I think it might be a couple of runs. A good backup here by the fielder from the square leg region. It can't save the two. 40 runs. So halfway mark has been reached by the Avengers. More 40 runs required. And the balls are drying up. Oh, that's a full length delivery. Just going to get a single. Tried hard Viresh in this over, but gets only 1-6. Last ball. Can Whipple, their icon player, can get a 6 over here. It's 41 at the moment. It's still possible. It's quite possible here for Agni Avengers, because both these batters, although coming little lower down the order, have the capacity to come even up the order with the talent they possess. Whipple strikes, might be in the hands, might be a chance, and catch dropped here. Finally a chance. Whipple running for the couple, and 2 runs taken. So one chance given here to the icon of Agni Avengers, and at the end of 4 overs is 43 for the loss of 4. 37 runs required in 2 overs. Who is going to bowl next? It's going to be definitely Vicky Naik. So last 2 overs. Is it the batting power play over? Yes, it's the batting power play over. So miscalculations here from Vicky Naik. The bowler who bowls the first power play over cannot bowl the second power play over. The batting power play over was not chosen here by Viresh and his icon. And that's the reason Vicky cannot bowl this over, as the same bowler cannot bowl in 2 power play overs. So now they have to bowl that 5th option. So now, is it going to be the turnaround? Is it going to be a thing that will change the fortunes here? Maybe Vicky miscalculated that I'll keep my over in the batting power play, certainly thinking that it is going to be the 5th over, but same bowler can't bowl in 2 power play overs. So now Vicky might be the option in the last over, but this over is very important now. This is the 5th bowling option. Digambar.
Digambar Mazgaonkar to Viresh Ajiam. That's a short ball. That might be 4 runs. Yes, it is just short of the boundary. And that will give a good start in this over. They needed boundaries. They needed many more. At least 18 to 20 runs should come of this over. With this boundary, the score rapidly moving on to 47. 33 runs required of 11 balls. Viresh has shown that he is timing the ball well. Now you can see slight fielding changes. They are trying to change the momentum here. And maybe a change in fielding, understanding that Viresh might use that option towards the backward square leg region, just like this previous ball. This is in the air. This might be catch. This might be 6 runs. It's 6 runs. It is 6 runs. 2 balls and 10 runs. 2 balls and 10 runs. 53 for the loss of 4. So Viresh certainly can. Oh, what a lovely shot here, going towards the boundary line for 4 runs. Is it? Yes, it is. Wow, this match is still alive. This has been kept alive by Viresh. First, it was a boundary in the backward square leg region. Then it was a 6 in the mid-wicket region. Now a straight drive at the long off region for 4 runs. So the batting power play over is working in favor of the batting side. 14 coming off the first 3. Now pressure on Kakoda boys. 57. 23 runs required. What an innings being played here by Viresh. Oh, finally a dot ball. Finally a dot ball here. You can see that every boundary on the 6 Agni Avengers camp is rising up, and suddenly a dot ball spirit is rising in the camp of Kakoda boys. It's such a match. It's a place for the semi-finals for CPL 2.0 to be played on Sunday. Oh, what a brilliant shot. What a brilliant shot here from Viresh Ajiam. Gets the 3rd boundary of this over. Takes the score to 61. Now 19 more runs required. 7 balls, 19. If this ball goes for a boundary or a 6, it will be interesting in the last over. It will be certainly interesting. Viresh is keeping them hopeful. Here comes the last ball of the 5th over. This time should be just a single. And I think Viresh will also like to keep the strike, but expensive over, keeping Agni Avengers still in the race of the semi-final place in the last over. 5 overs gone. It's 62 for the loss of 4 wickets. 18 runs required of the last over. Eighteen runs of 6 balls, and Vicky, the icon player, going to bowl. That miscalculation was turning out to be expensive, and that's the reason why the match is alive. Vicky has got the experience, but Viresh has got the power. Viresh has got the skills. What a strike! 6 runs! 6 of the first ball. What a match we are witnessing. What a match. It's almost 2:30. People are still on the ground to witness this epic match. Viresh, certainly the way he is prospering and playing the innings of substance here, playing the innings of class. 12 of 5.
12 of 5. This is in the air. This might be catch, and there's Viresh has jumped the wicket, and Viresh has to depart. What a great innings here from Viresh. Fantastic innings. He has still kept his team hopeful, Agni Avengers. 12 of 4. And now the new batter will come on strike. Well, definitely there will be a big round of applause to the innings played by Viresh Ajiam for Agni Avengers as just 12 runs short. I know it's still difficult, but I think this innings should be applauded the way he has played. And is applauded by even Kakoda boys, players and the supporters, understanding that at a crucial juncture he came right for his team, and the respect that he has gained from the opposition camp. But now is 4 balls, 12 runs. Single that will get Whipple on strike. 3 balls, 11 runs. 3-11. If this becomes a dot ball, it becomes more difficult for Whipple and his team. If this ball goes for a boundary, it will make the match interesting in the last 2 balls. All the equations are possible. And he went for the big one, does not connect. Now 2 balls, 11 runs. That's asking too much here, but it has been done many a times in this tournament. In the first day itself, 2 balls, 2 sixes has been hit. And Whipple, all eyes on him. He can gather his strength and can get a big one here. And that's out. That's out. So Vicky strikes and Whipple Naik goes back to the pavilion. But it was a wonderful, wonderful match where good fight back given by Agni Avengers to Kakoda boys. They were there in the game till the second last ball of the 5 overs. And now I think it is curtains on Agni Avengers. If at all any miracle happens of bowling a no ball or a free hit, else it's going to be Kakoda boys that will enter into the semi-finals at the second place in Group A. But a fantastic effort, great game of cricket we have witnessed. Viresh, a magnificent innings, but could not take the boat, could not take the sail his team through. And he's out. So that's it all over. And congratulations to Kakoda boys being the second team to enter. Meanwhile, I request Ashish Naik Borka to please give away the player of the match award to Gaurish Naik. Gaurish Naik Matsuya. And Vicky Naik in this match. Ashish Vicky Naik is the player of the match in the last game. ताज्या पयली गौरेश आशू माचो player of the match award दी. See you tomorrow sharp at 6:30 p.m. and we'll start sharp on time. तो गेलो ते ओमकारीन सांगता रूम तावे रूम नंबर तसो विकी नायक विकी माचो यो आणि तुझो प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड घे. हांव मागता बबलू सावंत owner of Kakoda boys to give away the player of the match award to Vicky Naik.
बबलू सावंत मातसो यो रोहन देसाय आसा मागता रोहन देसाय हाका आणि प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवचो विकी नायक. रोहन देसाय व्हिडिओ आसतलो पळय व्हिडिओ जाल्यार व्हिडिओ लाय बॅनर लाय. सो रोहन देसाय आमचे बरोबर अजून पर्यंत आसा 2:30 जाल्या पूण सेक्रेटरी गोवा क्रिकेट असोसिएशन आणि क्रिकेट आसा थंय ताका रावपाक पडटा जावं ती लेदर बॉल क्रिकेट आणि टेनिस बॉल क्रिकेट आणि कुडचड्यार तरी रावपाकूच पडटा. So on the screens you can see Rohan Gaus Desai behind and he is going to give away the player of the match award to Vicky Naik. So that's it for tonight. See you tomorrow everyone, all the Kurcharkars and all the players, all the supporters who have come all the way, and it will be sharp at 6:30 PM tomorrow on time. Till then, it's good night, Shubhratri, Shabba Kar Dev tumka saglyank bari raat diu.